भी हमारी स्ट्रेंथ एज बैटिंग अच्छी है तो इंशाल्लाह उस पर जाएंगे। पिछले मैचेस में देखा है कि डिफेंड बेहतर करते आ रहे हो, तो क्या टोटल इस पे पोस्ट करना चाहोगे? ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे 200 अबव जाएं, क्योंकि सामने वाली टीम भी अच्छी है, तो कोशिश यही करेंगे कि उनके पास बैटिंग स्ट्रेंथ है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पे लेके जाएं। और कोई चेंजेस आपकी साइड में? सेम टीम है। ऑल द बेस्ट, थैंक थैंक यू। यू। सिजर बॉलिंग आई है पहले, हैप्पी टू बॉल फर्स्ट? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हम दोनों जगह अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ किया। पहले हमने टॉस जीत के भी बॉलिंग ली है और वैसे भी हमने बैटिंग ली, तो हमने दोनों चूज़ ट्राई किया, इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। ऑन पेपर देखें तो बैटर्स आपके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन उस तरह क्लिक नहीं कर पा रहे, तो फाइनल के लिए क्या प्रिपरेशन? तो आई विश के आज हम सारे बैटर मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं और अच्छा टोटल डिफेंड और करें। कोई चेंजेस आपकी साइड में? हमारी आयमा की जगह आई है सोहा फातिमा। चलें, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Well, the news from the center is that the Conquerors have won the toss and they have decided to bat first. आगे आऊंगा शर्जील यहाँ तक। जी जी ओके। खाली टेम्परेचर बोल दूं 9 डिग्री हाँ ह्यूमिडिटी इस मौसम में ठीक। डायमेंशंस ओके। हाँ मैं गुड लेंथ तक आऊंगा। हाँ जी। It's a big day and it's the finals day here, and we've got very chilly morning here in Rawalpindi. Remember, it's an early start at the moment. It's 9 degrees.
which is quite cold. Talking about the actual surface, it's seen a lot of cricket recently, so it has pretty dry look. Although because the weather is so cold, it's not baking. If I give you a closer look, you see there's plenty of cracks that have opened up, but they won't matter. But the look of the pitch suggests that it still has plenty of moisture in it, because like I said, it stays pretty cold overnight as well, and it's an early start as well. Batting will be difficult to begin with, but I think there are still runs if you're able to grind it out and apply yourself properly. But we're looking for an exciting game of cricket.
Welcome to the main event. It's live from Rawalpindi Cricket Stadium, the final of National Women's One Day Tournament. It's Conquerors taking on the Stars. Teams arrived early in the morning. A very chilly morning it was. Fatma Sana, the international captain, Pakistan side. Lots of stars in that side. They will be taking on the Stars. Tuba Hassan also in that camp. So lots of good cricketers in this both sides. We will witness some quality cricket. Sidra Amin, the captains for Stars. Well, this has happened. As far as the runs are concerned, Ali Riaz topping the list with 382 runs, strike rate of 82.84. Iman Fatma, the big-hearted batter, 327 runs for her. Natalia Perez is on number 3 with 324 runs, strike rate also 77.88. Iram Javed, 261 runs, very impressive strike rate, 109.66. And Sidra Amin, the captain of Stars, 254 runs, 86.69 the strike rate. Let's have a look at the top bowlers of the tournament. Ramin Shamin from Stars topping the list with 18 wickets. And that economy, look at that, 2.11. With Ghulam Fatma, the leg spinner, 8 matches, 18 wickets also, but that economy, 3.98. Nasha Sandhu, the left arm spinner, 17 wickets. And Tuba Hassan, the leg spinner, 16 wickets to her. And Zebunisa Niaz, 16 wickets in her 8 games. Yeah, this is the main event, everything to play for in this big final, and the winner will get that beautiful trophy. The two captains look very determined to win this one, looking very positive, both the captains. Fatma Sana, of course, the national captain, Sidra Amin, the very experienced and a top batter. They will be looking forward to win this game. Absolutely, this is one nation and one passion. Yeah, warm-ups for the team early in the morning. It's 9:30 starts. You need to warm up nicely. This is the big game. There are no second chances after this, so you have to play your best cricket today in this game in order to be the champions of National Women's Championship. Ramin Shamin, the leading wicket taker, also in the list. But how will the pitch behave? Shah Faisal was out there in the middle. It's a big day and it's the finals day here, and we've got very chilly morning here in Rawalpindi. Remember, it's an early start at the moment. It's 9 degrees, which is quite cold. Talking about the actual surface, it's seen a lot of cricket recently, so it has pretty dry look. Although, because the weather is so cold, it's not baking. If I give you a closer look, you see there's plenty of cracks that have opened up, but they won't matter. But the look of the pitch suggests that it still has plenty of moisture in it, because like I said, it stays pretty cold overnight as well, and it's an early start as well. Batting will be difficult to begin with, but I think there are still runs if you're able to grind it out and apply yourself properly. But we're looking for an exciting game of cricket.
Says Shah Faisal, our pitch expert. Looks like a nice pitch, nicely rolled. But it's pretty cold. It's 9 degrees early on, so you would expect this pitch to be compact. Not many cracks opening up, very compact, and a sort of a pitch where you need to stay there, apply yourself as a batter, take your time. This is a one-day game, remember, 45 over game, so you can take your time, spend some time, and then look to play some strokes. It's 9 degrees, you know, it's a foggy morning, and on this beautiful morning, what captains decide is going to be very important. Marina Iqbal is out there with the 2 captains. Well, it all comes down to this, the final of National Women's ODI Championship Cup, and I've got the 2 captains with me. For Conquerors, we've got Fatma Sana, and Sidra Amin will be leading the Stars. We've got Mr. Ghulam Haider, who will be officiating this match. Fatma, flip the coin. Heads is the call. Head is called, head is there. Conquer won the toss. Conquer won the toss. Fatma, क्या करोगे और क्यों? हम बैटिंग चूज़ करेंगे क्योंकि हमें लगता है कि हमारी स्ट्रेंथ एज बैटिंग अच्छी है, तो इंशाल्लाह उस पर जाएंगे। पिछले मैचेस में देखा है कि डिफेंड बेहतर करते आ रहे हो, तो क्या टोटल इस पे पोस्ट करना चाहोगे? ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे 200 अबव जाएं, क्योंकि सामने वाली टीम भी अच्छी है, तो कोशिश यही करेंगे कि उनके पास बैटिंग स्ट्रेंथ है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पे लेके जाएं। और कोई चेंजेस आपकी साइड में? सेम टीम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सिद्रा, बॉलिंग आई है पहले, हैप्पी टू बॉल फर्स्ट? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हम दोनों जगह अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ किया। पहले हमने टॉस जीत के भी बॉलिंग ली है और वैसे भी हमने बैटिंग ली, तो हमने दोनों चूज ट्राई किया, इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। ऑन पेपर देखें तो बैटर्स आपके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन उस तरह क्लिक नहीं कर पा रहे, तो फाइनल के लिए क्या प्रिपरेशन है? अब बस यही है कि लास्ट 2 मैचेस से जो नीचे वाले बैटर्स उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, सो आई विश कि आज हम सारे बैटर मजीद रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं और अच्छा टोटल डिफेंड। और कोई चेंजेस आपकी साइड में? हमारी आयमा की जगह आई है सोहा फातिमा। चलें, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Well, the news from the center is that the Conquerors have won the toss and they have decided to bat first. Right, the big news coming from the centre is that Team Conquerors have won the toss, and in a big match, they've decided they're going to have a bat first. Miss Baulak, the mentors for the Conquerors, and Shoaib Malik, the mentor for Stars. It's a bit of a match up there. Salman Bhatt, the former captain, a very good morning. Thank you, Ali Bhai. Good morning to you and to the viewers. And yes, interesting game. And who knows more about it than yourself, Ali Bhai? You've been following the game, and here is the National Women's One-Day Tournament 2024-25. Conquerors versus the Stars. Captain Fatma Sana currently leading Pakistan, and Captain Sidra Amin for the Stars. Ali, please tell us about the teams. Yeah, very formidable sides. You got to have your eyes on a few of the young talent. Dua Majid also there. Nazia Alvi, the wicket-keeper batter. Saeeda Aruba Shah, the leg spinner. Hamna Bilal also very, very good. Nasha Sandhu, the left-arm spinner, we all know about her. Stars on the other hand, they rely on their batting. Sidra Amin will lead that. Sidra Nawaz, the wicket-keeper batter. Rameen Shamin, the leading bowler of the tournament. Sadaf Shams, another very talented batter. Tuba Hassan, the leg spinner. Kainat Hafiz, another very talented batter. Waida Akhtar, the fast bowler. Anusha Nasir and Neelam Mushtaq, the off-spinner. As the Team Conquerors electing to bat first on a big game. There you have all the info coming in directly from Mr. Ali Yunus. As Samia Afsar, 5 matches and 31 runs. Seems as if it's early days, only 13 years of age. Wow, that is some exposure at this young age. Yeah, very interestingly, she was part of the camp of Pakistan under 19 and she was not included because of her age. She was considered too young to be included in the side. Dua Majid on the other side, 133 runs, 56 her highest. This is the moment, this is the big game, this is where you need to bring your A game and perform. We all know about her, Waida Akhtar, 13 wickets, played for Pakistan side, was there in the England tour. She's got a sling in her action. Yeah, talking about the batter being 13 years of age and getting ready to face the first ball of the Women's National Cup final is a big thing. And I think she just needs to enjoy the occasion rather than think about anything else as the first ball is coming up. Wow. Some swing in the air and a compact defense to start with. Yeah, lots of talent. We've heard a lot about Samia. She's rated really high.
It's a big game for her. Her first final at this level. The two umpires, Nazia Nazir, the on-field umpire. Nicely driven. That's the talent we've been talking about, Salman. A left-hander, 13 years of age. Wow, early signs of somebody filled with talent. Waqar Ahmed, the other on-field umpire, and that ball swinging back in full Asian length and front foot right up to it, and a nice drive, good hands, straight to the fielder, but it shows a lot of promise. Once again, that's wonderful to see at this young age, being compact, right on top of the ball, playing close to the body, and that is good news for Pakistan. Most definitely. It was unfortunate that she couldn't be the part of Pakistan under 19 side. The wicket keeper, Sidra Nawaz Bhatti, scored some runs also in the previous game. And a good leave too. Very smart batter she seems like in the first 4 deliveries that she's faced. It's all about staying there, applying yourself. Yeah, indeed. That is picking up the line very rightly. And it's, remember, it's a 45-over game. So ample of time. And there is the mentor. Mentor Misbah will be transferring a lot of knowledge, a lot of experience to the young ones here. And this one is well bowled. First 3 deliveries coming back into the batter. And then 2 just going on straight, holding the line. This time the youngster went after the ball, and lucky that he didn't edge it. Have a look at this, a tentative push, expecting the ball to come back, but it just carried on straight. Nice and solid by the young Samia. End of the first over. It's none for none. Leg covering. Leg covering ठीक है. एक बॉल यूज हो रहा है या 2 बॉल यूज हो रहा है? ये चेक करें. The leading wicket taker of the tournament, jersey number 6, Ramin Shamin. 18 wickets to her, 3 for 9, the best. And that economy, 2.11. And we spoke about it earlier. Very, very good. Very impressive figures, those 18 wickets, economy of just over 2, and she'll be looking to deliver in this big game. Good start. And bowling to the field, there's a short mid wicket, a square leg, 4 fielders in the ring on the offside, 1 deep mid wicket, 1 long on. I wonder if in these games they need to have a deep long on and a deep mid wicket to start with. We shall see. Well, since it's a 54-meter boundary, so she's coming from, oh no, a bit of a confusion. So maybe early on when the batters are looking to go or are looking to get use of the circle, maybe that is the reason. Usually we see off spinners operating with that long on and mid wicket in place. Stars mentor
Shoaib Malik, we haven't seen him since morning. He will be around. Nice and solid at the moment. Good energy by Sidra Amin and the team. Lots of noises around, lots of voices, not making it easy for the batters. Yep, stars are brighter at night. This is charged down the pitch and driven for a single. Good positive start there. Off the mark is Dua and the Conquerors. Yeah, you've played lots of finals in your life, Mr. Salman, but batting first, they always say is good, just to have that advantage of not getting to any pressure situation batting second. Well, I've always believed that it's more tactical. It's a pressure thing rather than just the mere conditions. Most teams want to bat pressure free. But I remember the first time ever in a World Cup, a captain won the toss and opted to chase was Arjuna Ranatunga in 1996 final, that too against the Aussies, as 2 overs are now complete and Conquerors are 1 for none. Team Conquerors, they have a change in luck since the time the Trophy S tournament has shifted from Karachi to Rawalpindi. They've almost won every game here in Islamabad and Rawalpindi. Remember, this tournament is being played in 2 phases. First one being played in Karachi and now shifted to Rawalpindi and Islamabad. And since the time they've come to Islamabad, Team Conquerors has won everything. Yeah, not from the middle of the bat, but she'll take 1 towards third. Yep, coming back to the same story of the finals, and Ranatunga won the toss and he opted to chase. And he was asked that never a side has chosen to do that in a World Cup final. And he said, we are good at chasing. That's all that he said. And then they went on to chase the 240 something very easily at the Gaddafi Stadium and won the World Cup. So it's basically what you believe and how much you know yourself. It's one thing avoiding pressure, but then if you have a particular strength that you're really good at, then backing yourself is the way to go. And also tactically as well, there was dew expected in the evening, and it did come towards the end, but still not many people have done that. Good straight bat Samia has, and the looks are that she is very compact, plays close to the body, and she's only 13. Keeps on playing and developing. She could be a world-class cricketer. Absolutely. She's got all the ingredients to be a world-class batter already. Oh, now she's picked one straight to the fielder. That's the first wicket for the Stars. Captain Sidra Amin taking it quite comfortably. We've been talking about Samia's quality and she's just played a wrong shot. Was there a need of it? That's the question. As Conquerors lose their first and 2. Well, for a 13-year-old, I'd say I'd like the intent. Wonderful. She just went across and lined up. And the idea was right because the ball was coming back into her. It's just that she couldn't execute. That's fine. You can excuse a 13-year-old to think like that. But she looked wonderful at the crease. Doesn't matter if she got out, but she has what international players require in them. So it's all right. This is not the last game. She would feel disappointed, but she looked great. And
It's 2 for 1. And Conquerors, well, they have the first wicket. वो हम normally ऐसे ही करते हैं, लेकिन मेरे साथ 163 runs for Saira Jabin. 71 her best. A good steady start from Bahida. That's what we expect of her. Being an international player, coming into the domestic and then performing. And the last wicket that fell was the first one. Samia Afsar just going across, wanted to heave it over mid-wicket and long on. The elevation not there. Sidra Amin, that celebration means that they're off to a very good start. Yeah, Ali, the bat turned in her hand as she wanted to hit that hard. Wonderfully bowled. She's attacking the stumps. And on the other hand, Saira just played well. The last 2 deliveries, 3 overs bowled, 2 for 1. Right, just 1 over for Amin Shamin. As we see the change in bowling, Sadaf Shams, 26-year-old, 5 wickets to her name. She's known for her batting skills. She's an opener, played for Pakistan national side too. She's been very useful as far as her medium pace is concerned, especially the time the tournament has moved to Islamabad. There's been some movement for the seamers, for the medium paces. No slip, field well scattered inside the circle. Nicely driven. Good commitment shown by the fielder too. It was more of a floater from Sadaf Shams. Got the swing in the air. Was well dealt by Dua. Great commitment. That's what you want to see in a big final. Commitment level. Sadaf bringing the ball back in to Saira. And, I believe this one-day games are played with 2 new balls, 1 at each end. And in this condition, where the ball is doing a bit, there is no slip. There is no great attack on the bowlers, so they can afford to have a slip. As tries to drive it down the ground hard, but doesn't get any timing. It's early morning start and batters can struggle to get the timing. This has been the story of these pitches. Yeah, by the field setting, Salman, you can tell that she's going to bring the ball into the right-hander. There's a square leg, mid-wicket, mid-on in place and a fine leg in place. So maybe her natural angle is to bring the ball into the right-hander. That's what the field suggests. That's what she's doing. She's bowling those floaters into the right-hander. It's all about all these tactics in the big match, as Salman said earlier. Yeah, maybe have a shot catching somewhere on the leg side just for the one to pop up, because she definitely is looking to hit hard. So maybe have one like a short mid-on right in front and one a bit squarish towards mid-wicket and operate middle and off.
And looking to go hard, that's what she's trying to do, looking to dominate early on. Remember, it's a 45 over game, so you can take a bit of time. Yeah, that's what Dua is suggesting, just relax. You've already lost 1 wicket. You don't want to be in a situation where you've lost too many wickets and then it's a catch-up thing. The mentor for Conquerors, Miss Bahulak, he'll know a thing about cricket. And that's good for these women cricketers, Salman. They've been mentored by inside edge. They've been mentored by all the mentors who are playing the men's domestic too. So huge learning curve. We'll come back to it. 4 done, 3 for 1. Nice and relaxed. Team Conquerors. It's good they're keeping the dugout or the dressing room very cool and calm. And on the other side, that's the Stars camp. They look a bit tense. I wonder why. They've got the wicket, just 3 on board. A slip in for Wahida. Cuts, but there is a fielder placed for just will be 1. So Salman, coming back to the topic, yeah, it's good for Pakistan women cricket, this transformation where mentors are involved in women cricket, and you can already tell the difference is coming. The performances are getting better and better with every game. So that's what you need in women cricket. Yes, very valuable experience being shared with them via Misbah and other mentors. And it's about time women cricket get what they deserve in terms of valuable experience, people mentoring them, telling them the tricks of the trade. And also somewhere along the lines, they need to have their dedicated facilities. That will go a long way in developing this sport among the women of the country who also love this sport and they want to be part of it. So the opportunities will be maximized once they have dedicated facilities. And I'm sure Pakistan Cricket Board must be working on that. Yeah, you make a super point when you say dedicated facilities, and in Pakistan there are literally no facilities dedicated to the women of Pakistan. So yes, it's a great point that you've made. But at least, yeah, well, first things first, they've involved these mentors, somebody like Miss Bahulak. Well, this is a huge step, and this is why I say once these people come into it, they'll know what is required exactly and what needs to be done. As this one is a wild hoik. Wanted to swing it. A very natural swing that you give a bat to a very young child, and this is where he or she swings it towards mid-wicket. A natural stroke. But this ball wasn't there for that, and there are plenty of overs as we have said. But Saira now has played 10 deliveries, so that a bit of frustration has been creeping in, not getting some runs. And yeah, that's one way of keeping the frustration away. That's a boundary, thick outside edge. Saira will get that. Maybe keep her cool now. Definitely, this will be a breather for her and calm the nerves down that were there. This was well played, bowled in the right channel, swinging away, played with soft hands, and the edge, an educated edge as they call it, going in the gap and goes to the boundary. Nice and solid. 5 done, 8 for 1. Four runs each for Dua and Saira. The very talented Samia back in the hut without scoring.
Batters are there. You can see Fatma Sana, the captain, she's been in good touch, scoring some runs in the tournament. This is a big moment. Anybody who does well here in a big moment, she makes a name for herself. Now the Shams, again, she's been very consistent with that line and length. In the previous over, we saw that. Floats the ball in the air, gives the time to swing in the air. And credit to the batters, they've dealt her well. It's very easy that you can make a mistake when the ball is a floater coming into you, trying to go for the drive. You'll easily miss it, but they've been very cautious at the moment. Yeah, Sidra Amin, the captain for Stars, very experienced. She has a very important role to play in this game. Batting second. That's what they like. The Stars team, that's what she said at the toss, that she would prefer chasing. That's what her team has done in the tournament. Because they've got some quality batters. One is bowling, Sadaf Shams. Sidra Amin herself, the wicket keeper Sidra Nawaz Bhatti, she can be very handy with the bat. Definitely one nation, one passion, and passion in women is increasing. It's a very careful and cautious start at the moment for the Conquerors. We're into the 6th over. They've just scored 8 runs for the loss of 1 wicket. But they know more the bat, easier it will get. Nicely driven. Covering the line, the footwork, spot on. Not quite the result she desired, but she looks good. Wonderfully driven, full face of the bat, and fielder coming in, but it was a nice stroke. Yeah, she's now looking a little eager to go after bowling. You can just tell. 6 overs done, 8 for 1. A very happy Miss Bolhak. He's qualified for the finals. Yeah, the reason being a very quiet start. Now both these batters, Saira and Dua, looking to break free, looking for some runs and going after the bowler. And these are the signs. Just have a look at this. The width was there, but no connection at all. Wahida has bowled brilliantly, pitching the ball up, allowing it to swing, bowling the right channels. Once again in the stumps, but this time worked well. Off the middle stump towards the onside, takes a single. And strike rotation might be the right idea at the moment, because the ball is doing a bit. It's not coming onto the bat as the batters would like. 9 for 1. It's a 7th over. Something has got to give here. Yeah, that's one way of releasing the pressure, is
the rotation of the strike. They haven't done that much in the first 6.3 overs. So yeah, maybe look to rotate the strike more. Good to see female umpires involved in this tournament. Salima Imtiaz, we saw earlier, making headlines for Pakistan as far as umpiring is concerned. It's good to see Nazia also being involved and been given the opportunity by PCB too. That's good. So yeah, all good things happening for Pakistan women cricket with all these mentors being involved. Yeah, just this conversation even, Salman. Fatma Sana having a conversation with somebody like Miss Bahula, that helps. That adds to her experience also. She'll have a thing or two to learn from Misbah just by having the conversation. Just a thing or two? She'll have bundles to learn. Misbah is a cricket dictionary, and that always stays open. I wonder if he ever speaks a few words while sleeping. That would also relate to cricket. That is how much cricket fanatic he is. He's a wonderful man to speak to, has loads of knowledge, and he loves conversations on cricket. And this is so important for the young children, young girls, even the boys. So massive opportunity for all of them. Eat cricket, sleep cricket, play cricket. That's Miss Paula. Cuts straight to the fielder. So very careful, cautious start for Team Conquerors. 7 overs done, 10 for 1. आठवें ओवर का खेल अब शुरू हुआ है और बहुत कम स्कोरिंग शॉट्स अब तक देखने में आए हैं। दरअसल दुआ के सामने जिन दो बल्लेबाजों ने बैटिंग की है, सायरा और समिया अफसर ने, वो सिर्फ 2 स्कोरिंग शॉट्स हैं मुखालिफ समत में। यहाँ ये बाल बची, थ्रो जो है स्टंप्स के बहुत करीब से गया, बिल्कुल ना होने के बराबर फासला था, यहाँ पर विकेट मिल सकती थी। अभी तक कॉन्करर्स को पहले बैटिंग करते हुए परेशानी पेश आई है शाह फैसल साहब। जी बिल्कुल तारिक भाई, और अर्ली स्टार्ट था तो विकेट से उस तरह बॉल भी आएगा नहीं। ये तो बहुत बड़ा मौका था, यहाँ पे दूर दूर तक नहीं थी बैटर पिक्चर में और डायरेक्ट हिट से उनकी इनिंग का खात्मा हो सकता था। सदफ शम्स को बॉलिंग दी गई है, बुनियादी तौर पर इंटरनेशनल लेवल पे एज ए बैटर इनकी शोहरत है। इन अच्छा बॉल को स्विंग कराने में कामयाब हुई हैं। पहला ओवर हालांकि रामीन ने किया था लेकिन फिर सदफ को दिया गया। ये बतूल फातिमा जो विमेन सेलेक्टर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता हैं, पाकिस्तान की साबिका विकेट कीपर थी और अच्छी क्रिकेटर्स में इनका शुमार किया जाता था। जोरदार हिट लगाई लेकिन फील्डर को बिल्कुल सीधा पाया। यहाँ पर सायरा जबीन ने पावर प्ले जो है 9 ओवर्स पर मुहित होगा, तो अब उसके खत्म होने में सिर्फ 8 ही गेंदें बाकी रह गई हैं। उस पर भी एक नजर रखने की जरूरत है कॉन्करर्स को। गेंद को आगे पिच करा रही हैं सदफ और थोड़ी सी हवा में स्विंग उन्हें मिल रही है। अच्छे शॉट्स खेले गए हैं इस पावर प्ले में अभी तक, लेकिन ज्यादातर जो है वो प्लेसमेंट
ठीक नहीं थी गेंद, सीधी फील्डर्स के पास गई। इस ओवर में भी आगे गिरी हुई गेंद पे अच्छा ड्राइव मिड ऑफ पे किया सायरा जबीन ने। बस वाइड ऑफ द क्रीज गई। अच्छी विकेट कीपिंग यहाँ पे सिद्रा नवाज की। एक और ओवर का इख्तिताम 8 के बाद कॉन्करर्स 11 पर 1। दुआ मजीद सामना करेंगी वहीदा अख्तर जो अच्छा स्पेल कर रही हैं इस वक्त फार एंड से। लेट कट किया, ये अच्छा शॉट है, यहाँ स्मैश कर दिया। डीप थर्ड पर फील्डर वाइड थी लेकिन इतना नहीं कि वो गेंद का रास्ता काट सकती। थोड़ा सा रूम दिया अपने आप को और गेंद को लेट खेला, रफ्तार का इस्तेमाल किया वहीदा अख्तर की। ये गेंद बिहाइंड स्क्वायर गई। ज़्यादातर ये प्रोडक्टिव एरिया है रन स्कोरिंग के लिए ज़्यादातर विमेन की खिलाड़ियों का, और इस मरतबा गेंद के आने का इंतज़ार किया। थर्ड की फील्डर कोशिश के बावजूद इसे रोक ना पाई। एतमाद मिलेगा इस शॉट से दुआ को। फिर से वो शॉट दोहराना चाहती थी, गेंद आगे गिरी। 1 रन का इजाफा अब तक अच्छी लगी हैं दुआ। 22 गेंदों में उन्होंने 11 रन स्कोर किए हैं। कॉन्करर्स ने फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया सना फातिमा की कप्तानी में, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी कप्तान है और इस वक्त दुनिया की तेज़ तरीन बॉलर्स में से एक हैं। ये दूसरी जानिब यहाँ पर सिद्रा हैं, सिद्रा अमीन जो क़यादत कर रही हैं। बड़ा अच्छा कैच लिया था इन्होंने मिड ऑफ पोजीशन पर समिया अफसर का। सिद्रा अमीन पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है। काफ़ी अरसे से वो पाकिस्तान के लिए खेल रही हैं, बहुत प्रोलिफिक रन स्कोरर हैं। इसके अलावा फील्डर बहुत अच्छी हैं। पाकिस्तान की चंद सुपर फिट जो खिलाड़ी हैं उनमें उनका शुमार होता है। लेकिन आपने बात की समिया अफसर की, 13 साला, अच्छा लगा उन्हें खेलते देखकर, और जिस तरह उन्होंने पहले ओवर में अच्छी बड़ी स्ट्राइड के साथ फ्रंट फुट डिफेंस दिखाई, ड्राइव दिखाई, अच्छा उन्होंने शगुन दिखाया मुस्तकबिल के लिए। जी उनके बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना है। किनेट कॉलेज से आई हैं, उस कॉलेज की जो विमेन क्रिकेट की रिवायत है उसको बरकरार रखा है। उनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स हैं, कम उम्र में ही इसलिए इतने बड़े मकाम पर मौका मिला। कोई स्लिप नहीं है दुआ के लिए। पॉइंट है कवर, एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ दायरे में। शॉट को चेक किया पॉइंट की जानिब। कॉन्करर्स की कप्तान फातिमा सना, दुनिया क्रिकेट में विमेंस क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है इनका, और पाकिस्तान की कप्तानी इस वक्त कर रही हैं। बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, बॉलर तो हैं ही हैं, बैटिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, बहुत अच्छी एथलीट भी हैं। कल्चरल चेंज आपको होता नज़र आ रहा है इनकी कप्तानी में। पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट को एक नए रुख पर ले जाने के सफ़र की तैयारी है। 9 के बाद कॉन्करर्स 17 पर 1। टीम कॉन्करर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग में पहल की। यहाँ पर जल्दी आउट हुई समिया अफसर, अच्छा कैच लिया सिद्रा ने। उसके बाद रन्स जो हैं इधर उधर से आने लगे।
ये कट शॉट खेला था दुआ माजिद ने। 2 चौके लगे इस पावर प्ले में और 1 विकेट गिरी। तो बड़ी हद तक जो दोनों टीमें हैं उनको इत्मीनान होगा, खासतौर पर फील्डिंग टीम को। इस पे आप डिबेट कर सकते हैं कि फील्डिंग टीम को या बैटिंग टीम को, क्योंकि 1 ही विकेट गिरी। ये बल्ले का किनारा लगती हुई बॉल निकल गई बाउंड्री के बाहर। सदफ शम्स थोड़ी सी विकेटों से उन्होंने बाहर बॉल की, जिसको सारा जबीन बैकफुट पर खेलना चाहती थी, बिल्कुल बल्ले के नीचे गेंद लगती हुई विकेट कीपर के बराबर से निकल गई। यहाँ डीप थर्ड पर फील्डर हालांकि ज्यादा बाहर खड़ी हुई नहीं थी, लेकिन गेंद ज्यादा फाइन चली गई 4 रन के लिए। खुशनसीबी शुरू में चाहिए है बैटर्स को, वही सायरा जबीम को भी हासिल हुई। अभी भी स्लिप में कोई फील्डर नहीं। इन स्विंग करने की कोशिश की, शानदार स्ट्रेट ड्राइव और गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री के बाहर गई। ये बेहतरीन शॉट है आज के दिन का सायरा कम। जी बिलाशुबा, पिछले ओवर में इस तरह की एक ड्राइव उन्होंने खेली थी जो सीधी मिड ऑफ के फील्डर के पास चली गई। इस मर्तबा थोड़ा गेंद के ज्यादा करीब आई और बिल्कुल बॉलर के बराबर से खेला। मिड ऑफ के लिए भी कोई मौका नहीं, अच्छे से जज किया जो स्विंग थी बॉल पे। ये देखिए, ये कदमों का अच्छा इस्तेमाल है और जोरदार ड्राइव। उसके बाद अच्छी टेक्निक, अपना बल्ला पैड्स के बहुत करीब रखती हैं और जो पिछला जो इन्होंने स्ट्रेट ड्राइव किया था वो शॉट एग्जीक्यूट करने के बाद इनका जो तवाजुन था वो काबिल दीद था। अच्छा लगा देखकर। एक बार फिर अच्छी टेक्निक, इनसाइड द लाइन आई, सीधे बल्ले का इस्तेमाल किया। बाउंड्री के बाद भी दोनों शॉट्स बहुत ही लाजवाब थे। फ्रंट फुट डिफेंस, ये देखिए बिल्कुल कदमों का अच्छा इस्तेमाल और जो घुटने को बेंड करके लेफ्ट शोल्डर को ऊपर लेकर आए तो वो एक अच्छी टेक्निक होती है। बल्ला सीध नीचे आता है। इस मरतबा थोड़ा रूम मिला और फ्लैट बैट करने की कोशिश की, थोड़ी यहाँ पे शेप लूज कर गई अपनी। आपने अगले कदम पर जो दिफाई टेक्निक है उसकी बात की। वीमेन क्रिकेट में क्योंकि जो ज्यादातर बॉलर्स हैं वो स्विंग करने के लिए वो फुल लेंथ बॉलिंग ज्यादा होती है, इसलिए आपकी जो फ्रंट फुट टेक्निक है वो ज्यादा बेहतर होना जरूरी है। आप वीमेन क्रिकेट में जब बैटिंग करते हैं तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है, ज्यादा अगले कदम पर खेलने का मौका मिलता है। वही सायरा ने इस बार भी किया, लेकिन 1 से ज्यादा उनको नहीं मिल सकेगा। 10वें ओवर के खात्मे पर 26 पर 1। रामीन शमीन 1 ओवर इनने पवेलियन किया था शुरू में, दाएं हाथ से ऑफ स्पिन करती हैं, उसके बाद हटा लिया गया और अब ये आई हैं वहीदा अख्तर की जगह, जिन्हें पावर प्ले में 5 ओवर्स किए फार एंड से। देखना ये है कि एंड की तब्दीली इनको कितना रास आती है। ये पुरानी डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं रामीन, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी। जी हाँ, पहला ओवर इन्होंने कराया, फिर उसके बाद उन्हें हटा लिया गया। शायद ये रियलाइज किया सिद्रा अमीन ने इस अर्ली मॉर्निंग कंडीशंस में
तेज़ बॉलर से बॉलिंग करवाई जाए। अच्छा फैसला साबित हुआ क्योंकि अच्छा स्पेल किया 4 ओवर्स का सदफ शम्स ने। और शानदार शॉट, बैकफुट पंच किया दुआ ने दिलकश अंदाज में और 4 रन्स उनने पाए। बड़ी उम्दा प्लेसमेंट थी और एक बार फिर आला टाइमिंग। बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक था और इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट पिच बॉल नहीं था, तो स्क्वायर या हॉरिजॉन्टल बैट से खेलने की ऑप्शन भी थी उनके पास, लेकिन उन्होंने सीधे बल्ले से इसको खेलना मुनासिब समझा। ज़्यादा रेंज मिल जाती है अगर आप सीधा बल्ला यूज़ करें। आपने बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि गेंद को स्ट्रोक किया। अभी तक दुआ जो हैं ये शॉट्स नहीं, ये स्ट्रोक्स लगाती हुई नजर आई हैं और यही अच्छी महारत भी है स्विंग बॉलिंग के सामने इस तर्ज की क्रिकेट में। सायरा ने तो मुसलसल अपनी फ्रंट फुट की जो ताकत है वो दिखाई है कि फ्रंट फुट पे वो कितनी कंफर्टेबल हैं, लंबा स्ट्राइड निकालती हैं, सीधे बल्ले से खेलती हैं। अगेंस्ट स्पिन देखना होगा कि वो बैक फुट पे कैसे कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि दरअसल जब बॉलर की तरफ से आपको पेस ना मिल रही हो तो आपको अपनी पेस बनानी पड़ती है। उसके लिए आप थोड़े से बैक ऑफ अ लेंथ गेंद को भी पीछे जाकर खेल सकती हैं। अगर आप वो सलाहियत वो स्किल हो तो आप अपने लिए रन स्कोरिंग के काफ़ी सारे मौके हासिल कर सकती हैं। अगला कदम आगे निकाला और गेंद को नरम हाथों के साथ खेला। यहाँ पर सायरा जबीन ने 11 ओवर्स के बाद कॉन्करर्स से बनाए 32, 1 विकेट। अनुषा आपको नजर आई थी और यहाँ पर बॉलिंग में तब्दीली हुआ चाहती है और गेंद करने के लिए इस वक्त लाया जा रहा है सिद्रा अमीन की जानिब से। यहाँ अनुषा नासिर को 9 मैचेस में उन्होंने 10 विकेटें हासिल की हैं। ये बाएं हाथ से ये स्पिन बॉलिंग करते हैं। ये विमेन क्रिकेट का खासा कोई भी क्रिकेट मैच जो है खवातीन का वो लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन के बगैर मुकम्मल होता नहीं, खास तौर पर दुनिया के इस खित्ते में। जी हाँ, और पाकिस्तान के पास भी काफ़ी बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। सादिया इकबाल, नशरा संधू जो कि नेशनल टीम में इस वक्त मुस्तकिल अपनी जगह रखती हैं। सादिया तो दुनिया की बेहतरीन बॉलर हैं। खूबसूरत स्ट्रोक, एक मरतबा फिर कदमों का अच्छा इस्तेमाल, थोड़ी सी विड्थ उन्हें दस्तयाब थी जिसका फ़ायदा उठा लिया। यहाँ इन दिनों क्योंकि बैरिया टाउन चैंपियंस कप T20 के मैचेस हो रहे हैं तो मैच जो है ज़ाहिर है ज़्यादा जल्दी शुरू हुआ है। इसमें भी जो लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर हैं उनके खेल में आने का इम्कान है क्योंकि उस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि गेंद जो ग्रिप होती है, अच्छी पकड़ मिलती है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को पिच से। इस सुबह के सेशन में इसे ये महसूस होंगी अनुषे। कंडीशंस जिस तरह की पिच है और जो इस वक्त साल का जो वक्त है उसमें स्पिनर्स हमने देखा है अच्छी बॉलिंग की। थोड़ा सा लेग स्टंप की जानिब ड्रिफ्ट हुई, हल्का सा टर्न हुआ बॉल वापस की जानिब, लेकिन इतना नहीं कि अंपायर को मुतासिर कर सकें। विकेट कीपर सिद्रा नवाज पाकिस्तान की बहुत ही ज़बरदस्त विकेट कीपर हैं। हालिया दिनों में अपनी जगह बरकरार नहीं रख सकी पाकिस्तान की टीम में, लेकिन इसमें उनकी विकेट कीपिंग की सलाहियत से कोई इनकार नहीं।
सिर्फ पाकिस्तान ऑलराउंड एबिलिटी की जो खिलाड़ी हैं जो ज़्यादा बेहतर बैटिंग कर सकती हैं उनको प्लेइंग 11 में खिला रहे हैं इस वक्त 20 ओवर और 50 ओवर के फॉर्मेट में। मुनीबा जो हैं वो पाकिस्तान की टीम में इन दिनों ज़्यादा जो है मुसलसल खेल रही हैं, बाएं हाथ से अच्छी बैटिंग करती हैं, इब्तिदा में आकर नई गेंद के खिलाफ जारहाना अंदाज अपनाती हैं। यही बॉल कर, यही वाला अनुषा, यही वाला। अच्छी पार्टनरशिप, ये 31 रन की टीम कॉन्करर्स के लिए सायरा और दुआ पेस से उन्हें अच्छा निगोशिएट किया। अब स्पिन का चैलेंज उनको दरपेश है। विकेट कीपर्स की बात की, लेकिन अगर प्योरली विकेट कीपिंग स्किल्स की बात करें तो सिद्रा नवाज से बेहतर विकेट कीपर इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। बहुत ही हाई क्वालिटी की इनकी स्किल्स हैं विकेटों के पीछे, और आप थ्रू आउट द डे आप देखेंगे, आप इंजॉय करेंगे इनकी विकेट कीपिंग को। बहुत ज़्यादा वोकल भी हैं विकेटों के पीछे से, अपने टीममेट्स को काफ़ी बकअप करती हैं। फ्लाइटेड गेंद थी और वहाँ पर अच्छी फील्डिंग, फौरन ही हमलावर हुई, थ्रो किया बॉलिंग एंड पर, लेकिन दुआ का बल्ला क्रीज में ही था। 12 ओवर्स के बाद 33 पर 1। टीम कॉन्करर्स के खिलाड़ी, उनके ऑफिशियल्स इस वक्त बाहर आकर बैठ गए हुए हैं डग आउट में। अच्छी तेज धूप निकली हुई है, खासा निखार है रावलपिंडी की धूप में, और ये सुबह की धुंध थी, अब किसी हद तक वो छटने लगी है। उसके बाद बैटिंग जो है उम्मीद यही कर रहे होंगे कि ये आसान होती चली जाएगी। ठीक है, ठीक है। एक्सीलेंट नीलम, एक्सीलेंट नीलम। जो धूप में तमाज़त आएगी, बैटिंग कंडीशंस बेहतर होंगी। सिरा नवाज हैं, लंबा कर, लंबा। अच्छा यहाँ पे मुकाबला है स्पिन के खिलाफ। एक और अच्छा बैकफुट पे स्ट्रोक, लेकिन सीधा फील्डर के पास। 31 गेंदों पे 17 रन बनाए हैं दुआ ने, तो कुछ मुश्किल मरहला आप कह सकते हैं कि वो गुजार लिया है इन्होंने। अब यहाँ से दूसरा चैलेंज शुरू होगा कि इस इनिंग्स को कैसे रवां दवां करें। अच्छा फुटवर्क, तेज कदमी का मुजाहरा किया यहाँ पर दुआ ने, और गेंद को साइड स्क्रीन के सामने पहुंचाया। एक और उम्दा क्रिकेट शॉट। बहुत जबरदस्त फुटवर्क था, और फुटवर्क की वजह से ही ये शॉट मुमकिन हुआ। थोड़ा सा फॉरवर्ड प्रेस और इसके बाद 2 कदम क्रीज से बाहर निकाले, लेकिन अपनी शेप को मेंटेन किया, और जो अच्छी चीज थी गेंद को सीधा हिट करने की कोशिश की, ज्यादा ड्रैग करने की कोशिश नहीं की ऑन साइड पर। ये बहुत अच्छा बैलेंस, अच्छी शेप, अच्छा नतीजा। हवा में थी, इस बार रति भर बॉलर के ऊपर से गई, गेंद जो है रुक कर आ सकती है, इसलिए जो बल्ले का फेस है उसको क्लोज करते हुए आपको मोहतात रहना पड़ता है। लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर जाके उन्होंने प्रैक्टिस की, जो शॉट उन्हें खेलनी चाहिए थी। फौरन ही उन्हें गलती का एहसास हुआ कि बल्ले का फेस जो है मोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन वही गलती सायरा ने कर दी। इस मरतबा लीडिंग एज फील्डर्स की पहुंच से दूर, फ्लाइटेड डिलीवरी थी, बल्ले का फेस मोड़ा, जिसकी वजह से लीडिंग एज लगा। अभी भी इस विकेट पर बॉल उस तरह बल्ले पर नहीं आ रहा, अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट है, लेकिन अपनी इस गलती का ज्यादा नुकसान हुआ नहीं। 13 के बाद कॉन्करर्स 38 पर 1।
अभी तक 4 बॉलर्स को आजमाया गया है, वहीदा ने इकलौती विकेट हासिल की। अनुषा लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग जारी रखेंगे, विकेट टू विकेट गेम करना चाह रही हैं। विकेटों के अंदर बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग जो है, जहां फ्रंट स्ट्राइड के जरिए आप नहीं पहुंच सकती, ये एक अच्छी हिकमत अमली हो सकती है बॉलर्स की जानिब से। अच्छी फील्डिंग यहां पर, डाइव लगाते हुए गेंद की रफ्तार को आहिस्ता किया। अभी तक जो गेंद है इस पे अच्छी खासी चमक है, ज्यादा बिगड़ी नहीं है। इसकी हालत वैसे भी कुछ अंश कम होती है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रोक्स नहीं लगे हैं, इसलिए गेंद अच्छी हालत में है। और वैसे भी रावलपिंडी जैसे मैदान में ऐसी सर्द सुबह में जो फील्डर्स हैं वो गेंद को टिप्पे पर पहुंचाना पसंद नहीं करते, ताकि ज्यादा देर तक उसकी जो चमक है वो बरकरार रहे। साल के इस हिस्से में, और जैसा आपने मेंशन किया पहले भी कि इस ग्राउंड पे क्योंकि काफ़ी क्रिकेट हो गई है, तो जो स्क्वायर है वो काफ़ी खुरदरा है, लेकिन जिस तरह की आप ड्रिफ्ट देख रहे हैं, जिस तरह अनुषा को मिल रही है, कोशिश करेंगी कि इस बॉल की चमक बरकरार रहे, क्योंकि जो ऑफ द विकेट टर्न है वो भी है। तो अगर इसके साथ आप दोनों वेरिएशंस आपकी मिक्स हो रही हैं, तो बैटर के लिए उसको जज करना मुश्किल है। ज़्यादा रफ्तार के तेज़ बॉलर्स विमेंस क्रिकेट में पाकिस्तान में है नहीं इस वक्त, तो रिवर्स स्विंग का इतना ज़्यादा अमल दखल अभी इस क्रिकेट में नहीं है। डॉट बॉल के साथ ओवर का इख्तिताम, पार्टनरशिप 38 रन 68 गेंदों पर, कॉन्करर्स 40 पर 1। Bit of misfield, but no run taken. After 14, 40 for 1, Conquerors. Cyrus Jabeen, Dua Majid. They both can play some shots, but are not implementing themselves in the middle. A bit of communication going on between the batters. Ramin Shamim has represented Pakistan. She's a good off spinner, can bat as well, and a brilliant fielder. Tossed up. Haven't used any feet against Ramin. She has the control to change the pace, but as a batter you need to have some sort of set skill to play against spinners. Again, no use of the feet, no sweep. These are the basics, Salman Butt. Indeed they are, but there has been progress. First 7 overs there was just 9 runs, and now the next 7 overs they've scored 31. So they're on track, and I believe they're just going to take their time. And there is the sweep shot. Now you might think you should have asked for something else. Straight away it's there, and it's well executed for a single. 23 for Dua, and Saira moves on to 18 with that single. Yeah, Saira, she started off as a batter
as a bowler actually, and then converted herself into a batting all-rounder. Has played county cricket in England as well. Use of the crease, tries to take on Ramin, but I think it dropped short. That's quite an interesting field placement. That is a bit straightish, short mid wicket, and at the moment she's struggling. I think she got hit with the ball. Yeah, maybe just on top of the palm, maybe just underneath the thumb, and that can be very painful as she runs out for some help. Or maybe a change in the area of fielding, and while on the boundary she'll get some magic spray. It's interesting where the short mid wicket is standing. In men's game it is quite squarish, but it's quite straight here. End of 15, 41 for 1. Anusha Nasser to continue. Another prospect coming from under 19. She has an arm ball, she can turn the ball as well, and a really good fielder, a smart operator. Nice action as well, a very repeatable one, simple one. 3 runs she's given away, and this is her 3rd over. Once again, this is hit over mid-wicket in the gap this time. Wonderful shot that. It was pitched up, half volley, and it has been taken advantage of. 4 more to Saira, who moves to 22 with this boundary, and it's 45 the total. Yes, Saira is one of the batters amongst the runs. It was bowled with the angle, picked it up nicely. Just needed to beat the mid-wicket fielder, and she did. Straying down the leg. Maybe a stumping opportunity has gone by over there, as if the back foot of the batter came up either in the air or just outside the line, as this is the shot that was played of the previous delivery over mid-wicket. Head on the top of the stroke while execution, and she got good timing. So far 4 coming off this over, the only boundary that was hit by Saira Jabin. Haven't seen much of a strike rotation. There is quite vacant areas in the field. It's widespread. Always an option for a single. Outside off stump, picked up. Again a half chance there. I don't think it carried. Trying to beat the infield, Saira Jabin. Wahida Akhtar, the fast bowler. It was dying on her. Again tossed up string, leg side-ish. She's a better fielder than that, Wahida Akhtar. Slight late to react. Another chance gone begging. Some medical attention needed. Well, as she's getting the medical attention, we'll take some break for the drinks.
Conquerors. Samya said a lot was expected from her. A good prospect, couldn't really get on going, gone on not. This partnership, 43 of 79. Dua Majid on 23 and Saira Jabin on 22. They've got plenty of batting to follow. Hafsa, Fatma, Sana, the captain, Larib Malik can bat. This is the one trying to accelerate, shuffling towards the offside. Straight up in the air. Nudged around, looking for the second one, and this is going to be very tight. Sidra Nawaz, I think, did not collect it. There was a definite chance of run out. "16 gone, 47 for 1. There's the run out chance. Sidra Nawaz in front of the stumps. Throw. It was a decent throw, but she was in no position to collect that. Definite chance missed out. Sidra has represented Pakistan for a long time. You would expect a better effort. There was Neelam Mushtaq now. They've got plenty of options in terms of spin. Half tracker. Opted to play it straight down the ground. 'Outside off stump wide. They've got the sweeper. Fumble. Couldn't really capitalize on it. Four matches, picked up 7 wickets. She's a decent bowler, just for these 2 deliveries couldn't really hit the right length.
better this time. Googly. Some turn on the pitch, and the strike is being rotated regularly now. Runs coming. It's once again an easy single, and the batters are now looking to be more positive. Once again punched off the back foot, straight to mid-off. There have been a few opportunities which should have been accepted at this level. A couple of catches, a run-out opportunity, and in a big game, these things can be very impactful. This is cut straight to the third. So the bowlers have been doing their job, keeping the batters quiet, but the fielders, they need to back up some good bowling. And this is something where the team that's bowling has faltered. A decent over to start off with. Neela Mushtaq. 49 for 1. Anusha Nasir. Just waited for it, nudged around, and a direct hit, but she's safe. Anusha Nasir has represented Pakistan in Under-19 World Cup, was quite decent. 50 up for Team Conquerors. So off the back foot. Have to be careful because Anusha has that arm ball that comes with the angle, and she likes to pitch it up. So coming back to this women's cricket and talking about it in a bigger perspective, Marina, where do you think that Pakistan needs to do the required work in order to meet the demands of modern cricket, and where the big cricketing nations are when you talk about women's game? What exactly needs to be done? Picked up. They've got a fielder there. And there's a misfield. Sadaf Shams. She's an experienced player. You don't expect that from her. Easy boundary. Yeah, it was once again in our zone, and this is a strong shot. Good swing of the bat, a complete one. Did get decent timing on the ball, but this really should have been stopped. And the long barrier, it has been crossed by the ball. That too pretty easily. Wheels are coming off, it seems, for the fielding side. His fields letting the run out go. 2 catches, which could have been 2 possible wickets, just allowing this partnership to prosper, to get to a point where things will get to a point of no return. And this is why the fielding needs to tighten up. You hardly see any fielder talking in the circle, making some noise, encouraging the bowler, as the batter, naturally she'll gain freedom because she'll know that the fielders, they're not responding to their bowlers. Have a look at this. How casual is that? Just the eye wasn't there. Eye on the ball is the key. That long barrier is not part of the modern cricket anymore. It's an old-fashioned thing. You want to be attacking. And it wasn't hit with some force that you needed it. Overdone. 18 gone, 56 for 1.
Coming back to your point, where the work is needed, I think it's altogether the whole women cricket structure that needs to be revamped, starting from grassroots level. We don't have any more club cricket. University cricket isn't there anymore. We had district, and that was the structure from where the seniors, including me, came, and we had a total exposure to competitive cricket. And with that, there comes a wake-up call where you can analyze yourself as a cricketer in what areas you need to improve. Now with under 19 getting regular exposures, we've got the World Cup lined up in January. No run there. So by the answer that I've got from you, what I make out is that there is the selector for the women's cricket, Batul Fatma. She's there watching the game in person, ball by ball. This is trying to go big, and she will evade mid-off. Will run after the ball, and the batters likely to get an easy couple. So coming back to your answer, what I get from you is that the work is required in the pathways, and the pathways, like they used to be, they're not like that at the moment. So this means that things have deteriorated instead of progressing. So where exactly things went wrong? I think to start off with, there has been a lot of changes on the top with different people coming on different positions. There have been different mindsets to go about things. And I think it's better to keep things simpler, especially for women cricket, because there's not much exposure being provided. You need a certain environment for women cricketers to come in and learn, asking for the stumping on that occasion. Yeah, this was well bowled, going on with the arm, and the keeper doing a good job. Yeah, it makes sense, keeping things simpler and getting the best out of the greats of the game. Talk about these mentors. I think it's a brilliant initiative for these young girls to have them around. They have lots and lots of knowledge to transfer. And talking about mentors, young girls would love to have people like yourself, Sana Mir or Arooj Mumtaz around to help them, because you guys had a lot of exposure. This is hit straight. The fielder is coming and the catch is held. This is wonderful. A much needed wicket is right here for the team stars. Saira Jabin, the one who was looking quite threatening, has to take the walk. Just again wanting to accelerate. It was there in her zone. Just couldn't find the distance or the placement to evade that fielder. A good running catch from Huraina Sajjad. And this is a good breakthrough for stars to have. Yeah, a flighted delivery, enticing the batter, and the field was set a bit straighter, and she ran in and completed the catch. And an important set player, Saira Jabin, has to leave. 32 she scored of 56, and second wicket falls at the score of 58 for the Conquerors. Hafza Khalid now walks in. She's got some runs against her name in this tournament. And spinners have been tightening things around the stars' batting lineup. Fatma Nasil to follow, Lare Malik and bat Najiha and Aroop Shah, Hamna Bilal. They've got plenty left. Full toss, respectfully put away for single. 19 overs gone, 59 for 2.
this wicket just might bring the required energy back in the field. Something in terms of encouragement. Just look at that shot. The ball was there to play the stroke, but she didn't get enough power in the stroke, couldn't clear the fielder who came in running and took that catch at a very decent height. Full marks to the fielder there. Horana, she did well, running to her left side, and could have been a possible 6. Not to be in the end a wicket for the Stars. This is wide and will be an extra run as well. The keeper failed to collect this one. Anusha needs to keep the pressure on. Now that you've taken a wicket, the team needs to bowl and build up pressure via dot balls. And coming back to your point, it's a great initiative for these women cricketers to have mentors and someone to learn and look up to from. But again, when you look at the bigger picture, this is the best domestic tournament. From here onwards, you will get players selected for probably Pakistan A and Pakistan teams or under 19s. But the work that should have been done at the grassroots level. And again, when I come and I talk about women cricket, they don't have more opportunities in terms of having club facilities like boys. They don't have many camps as well. That's a 4. Just slight deflection. Anusha just staying on the leg and Hafsa getting out of it. Once again on the legs, and Hafsa very clear with a mindset, sweeping this in the gap. Just have a look at this. Opportunity was there and this is well swept. Wrists rolled on top of the ball. Perfect sweep shot this. Good execution. And talk about the Pakistan Cricket Board currently. I think they're making a move on this, because we've heard that they're asking the departments to have women's sides, and that might be a great help for the women's, turning them into professionals in early ages and taking their worries, financial worries off them and allowing them to play freely. That would be a great move if it is executed. So I think the Cricket Board currently is trying to get that sorted, and once that happens, like in the men game, I think it will benefit greatly to the women's game as well. Yes, I totally agree with you, because we had 3 departments that TBL. I played myself from there, State Bank and Saga Sports. These were the 3 major departments, and with that happening, they also allowed a different tournament, a whole different tournament of the departments that gave more exposure, more match practice to the women cricketers, and that was a better competitive in terms of having tournaments. That competition was right on the top. Once again swept, and again in the gap, again the same result, a boundary, this time even timed better. Hafsa, she is on it from the word go, very positive, and she isn't letting any opportunity go by. 70 for 2 and 2 sweeps, consecutive ones. The bowler not learning, the batter taking advantage. So you can see Sidra Amin walking up to Anusha. Hafsa Khalid, she's a good sweeper. It's one of her strengths, that area. She can slog as well. So there are 2 wrongs. One, that she doesn't have a fielder to protect that stroke, and then she's bowling in that zone. And this is much better. Bowling outside the off. Compensating. As over number 20 ends, it's 70 for 2. Neelam to continue, and I believe it would be great for the women's game if the change is brought about in terms of pathway cricket, bringing upon 5 tiers of cricket for women. And I'll come back to it after this delivery, as this one is played in the gap for a single.
talk about school cricket for women, college cricket for women, and then you come to a point where there's potentially club cricket for women, and then grade 2 and grade 1 in departments and regions. So having more opportunities, paid opportunities, taking the financial worries away, putting them into the professional zone from the early years would do great good to the Pakistan cricket. What it did to the men's game from the time it started. And I think women's cricket does deserve that, and PCB is currently trying their best to make out these possibilities with the departments, which is indeed a great initiative if it comes about. And I also believe the need to run two parallel plans. One for your cream, that is the current slot of Pakistan A, under-19s and Pakistan team. There you need to accelerate. They have the foundation, you need to accelerate and transform them into the demands of the modern cricket. And I think if you look around, every country now has its own T20 leagues. And there, I think year before, previous year, there was 3 matches that being held within 3 teams. And that, within the PSL, gave enough exposure to the cricketers. It was a great attraction for all of the women and girls following cricket. And that actually helped. Oh, they're asking for it. Nazia Nazir says no. Sharp turn, loud appeal, and the umpire not impressed. As over number 21 is just about to end, and lot of pressure on the umpire. The whole team was appealing. Just have a look at this sharp turn. Yeah, there was height. It was going down the leg side. So the umpire getting it right. And in the stints to come, we'll talk about what else is required in the women's cricket. Meanwhile, I think we've had enough of talking about the tires and the pathways, and they are very much required. And currently, things are moving. Another tossed up delivery has beaten everything. I think it would be off the bat. Yes, it is. Another good over from Neelam comes to an end. 72 for 2. प्लेइंग 11 होगी मैडम अच्छा वो ओके ओके 5 बॉलर्स का इस्तेमाल किया गया है। नीलम और वहीदा ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। लेग स्पिनर तोबा ये अब एक्शन में आ रही हैं, जिनसे बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि उनका बड़ा तजुर्बा है। अब तक टीम कॉन्करर्स ने अच्छी पेशकदमी की है, ये हम कह सकते हैं। वो कि औसत अभी 4 से कम है, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ खेल रही हैं दुआ। 28 रन पर उनके साथ हफ्सा हैं, जिन्होंने स्पिनर के सामने अभी तक अपनी धाक बिठाई है 2 अच्छे स्वीप शॉट खेलकर। अली यूनुस कमेंट्री बॉक्स में है। अली, अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है आज की सुबह। जी, अच्छा चैलेंज किया है टीम कॉन्करर्स ने। टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया, पार्टनरशिप्स डेवलप की हैं दूसरी और तीसरी विकेट की। समय अफसर जल्दी आउट हो गई थी, उसके बाद अच्छी बैटिंग हमें देखने को मिली दुआ और सायरा की जानिब से, और अब हफ्सा भी कंट्रीब्यूट कर रही है अपने बैट से। ज्यादा लंबा रन अप नहीं है तोबा का, और यहाँ पर मुश्किल हो सकती थी अगर डायरेक्ट थ्रो आती। आज कोई मौके जाया किए हैं यहाँ पर स्टार्स ने। एक कैच का मौका गंवाया गया, वहाँ पर वहीदा अख्तर थी, फिर विकेट कीपर ने एक रन आउट जाया किया। और ये भी
बहुत आसपास की बात थी। लेकिन अच्छी कोशिश की क्रीज में पहुंचने के लिए। दुआ ने अपनी विकेट की उन्होंने कीमत लगाई हुई है। या अच्छा लगा देख के कि वैल्यू कर रही हैं अपने विकेट को, गिव अप नहीं कर रही हैं। और अच्छा मौका है तारिक भाई, बड़ा मौका है दुआ जैसे प्लेयर के लिए, या सायरा जमीन जैसे खेल के गई, हफ्जा खालिद अभी खेल रही हैं, कप्तान फातिमा सना को भी आना है, बड़ा मौका है, फाइनल है। और इस कॉन्वर्सेशन की हम पहले भी बात कर रहे थे कि बहुत ज़रूरी है ये कप्तान फातिमा सना के लिए भी कि मिसबाह के साथ बात करते रहे, सीखते रहे हर वक्त। इस टूर्नामेंट की खूबी यही है। विद द स्पिन इसे कट किया 1 रन के लिए। जहाँ ये आज बड़ा दिन है इन सभी क्रिकेटर्स के लिए कि एक तो मिसबाह हक जैसा जो क्रिकेट का शायद दिमाग है वो यहाँ मौजूद है। आप फिर ये मैच जो है ये स्ट्रीमिंग पर बराह रास्त पेश किया जा रहा है, तो इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, इसके अलावा इनके क्लासमेट्स, स्कूलमेट्स वो देख रहे होंगे, असातिज़ा देख रहे होंगे, तो ये याद रह जाने वाला दिन है। बिल्कुल, बहुत सारे यंगस्टर्स हमें देखने को मिले क्योंकि 5 टीमें हैं इस टूर्नामेंट में, तो ज़्यादा टैलेंट देखने को मिला है। और 5 में से 2 बेहतरीन टीमें फाइनल में पहुंची हैं। मज़ीद बात करेंगे 22 ओवर्स के बाद 75 पर 2। स्टार्स के बेंच पर मंसूर अमजद थे जो अच्छे प्रोफेशनल कोचेस में से एक माने जाते हैं। यहाँ अली क्या समझते हैं किस हदफ की जानिब इनको पेशकदमी करनी चाहिए? टीम कॉन्करर्स को अभी 8 विकेटें हैं, तकरीबन ये अपनी इनिंग्स के निस्फ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो दुआ हैं उनको तो बाज़ाहिर ऐसा ही लगता है एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो पूरे 45 ओवर खेल कर आए। जहाँ तारिक भाई जैसे ये चल रहे हैं तो 153 तक पहुंचेंगे, लेकिन ये चाहेंगे कि कहीं ना कहीं 190 और 220 के दरमियान कहीं स्कोर किया जाए, क्योंकि टीम कॉन्करर्स की बॉलिंग में डेप्थ है, उनकी बॉलिंग अच्छी है। नाशरा संधू हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर, पाकिस्तान की नेशनल लेफ्ट आर्म स्पिनर। सईद अरूब शाह है लेग स्पिनर, हमना बिलाल है, कप्तान फातिमा सना खुद हैं। तो बॉलिंग साइड उनकी अच्छी है, इसलिए वो चाहेंगे कि इतना क्वेश्चन मिल जाए उनको कि वो डिफेंड कर सकें। तो अगर 210 215 तक पहुंचते हैं तो एक अच्छा मैच हमारे नजर होगा हाथ में। 2 विकेट जैसे गिरी, समय अफसर थोड़ा ऊपर से खेलना चाहती थी, शफल किया, हवा में खेल बैठी और अगली भी बड़ी शॉट की तलाश में और एक अच्छा कैच यहाँ पे फिनिश किया। 2 विकेट्स गिरे हैं लेकिन अच्छी रिकवरी भी हुई है, 75 रन 2 विकेट गवा के। और दुआ का रोल अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 29 रन पर खेल रही है 52 बॉलों पे। अब यहाँ पे लंबा जाना होगा थोड़ा, अब शायद रन रेट में भी बेहतरी लानी होगी यहाँ से ऑनवर्ड्स। ऑल्दो फातिमा सना को भी आना है, जो कि हम जानते हैं कैसी बैटिंग करती हैं, धुआंधार बैटिंग करने में जानी जाती हैं वो। तो अगर यहाँ से पेस को थोड़ा बढ़ाएंगे रन स्कोर की तो वो 210 215 तक पहुंच सकती है, जो कि अच्छा टोटल होगा। अच्छा डिसिप्लिन दिखाया है बॉलिंग में स्टार्स ने। अभी तक सिर्फ 2 फाजिल रन्स उनने कंसीड किए हैं। नीलम गेंद को टर्न करने के लिए कोशां हैं और बार बार वो फ्लाइट दे रही हैं। लॉन्ग ऑन पीछे है, डीप मिड विकेट,
और डीप स्क्वायर लेग भी। ऑफ साइड में एक भी फील्डर इस वक्त बाउंड्री पर नहीं है। क्या हफ्सा जो हैं ये शॉट खेलेंगी अगेंस्ट द लाइन, खतरा मोल लेंगी कि ऑफ साइड को ओपन अप किया जाए। यही लालच उनको दिया जा रहा है और बॉलिंग भी आउटसाइड द ऑफ स्टंप कर रही है नीलम। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई थी पिछले मैच में, 5 विकेट हासिल की, तो हाई ऑन कॉन्फिडेंस तो जरूर है और उनकी बॉलिंग में झलक भी रहा है। जिस पेस से बॉल कर रहे हैं, जिस एरियाज में बॉलिंग कर रही हैं, वो भी शायद इतना मूड लग नहीं रहा है। हफ्सा चाह रही है कि वो लंबी इनिंग खेलें, बड़ी इनिंग खेलें टीम के लिए। हफ्सा स्पिन पर अच्छा स्वीप करती हुई नजर आई थी। इनिंग्स के आगाज में 2 चौके लगाए थे, लेकिन अभी तक कदमों का इस्तेमाल जो है वो करती हुई नजर नहीं आई। ज्यादातर क्रीज से ही खेल रही हैं। हाँ, यही ऐसी चीजें हैं जिन पे काम आई एम श्योर जितने भी कोचेस हैं वो कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वुमेन्स क्रिकेट में। जिस तरीके से लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे कोचेस इन्वॉल्व हैं, मेंटर्स इन्वॉल्व हैं, ये इससे और ज्यादा शय मिल रही है क्योंकि ज्यादातर क्रीज से खेल रही थी हफ्सा। तो नीलम जो हैं वो 12 गेंद को ज्यादा हवा दे रही हैं, ऑफ स्टंप के बाहर से भी आ रही थी। अच्छी बॉलिंग यहाँ पर। ये अब फाइनल आज आखिरी मार्का है इस कौमी चैंपियनशिप का, कौमी खवातीन वनडे टूर्नामेंट का, जिसका आगाज कराची से हुआ था। पहला मरहला वहां तय हुआ, फिर टीमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद आई। यहाँ 3 मुख्तलिफ मैदानों पर खेल कर आई हैं। टेस्ट सेंटर में अच्छा ओवर सिर्फ 1 रन के साथ खत्म किया। यहाँ पर नीलम ने 76 पर 2। मैडम प्लेइंग 11 होगी। स्टार्स के कप्तान सिद्रा अमीन, इनका बहुत अहम रोल होने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं जब ये बैटिंग करती है तो ये लंबी इनिंग खेलती है, बड़ी इनिंग खेलने की आदत है इनको, बिग मैच प्लेयर जिसे बोलते हैं। और आज शायद उनको ऐसा ही करना होगा। इस टूर्नामेंट में थोड़ा खामोश रही हैं, ज्यादा रन्स बना नहीं सके, लेकिन आज बहुत बड़ा मौका है। तोबा अपनी बॉलिंग जारी रखेंगी, लेकिन अभी ऑफिशियली उनका ओवर जो है ये शुरू नहीं होगा। 1 रन का इजाफा वाइड में। सिद्रा अमीन ने अच्छा रोका विकेटों के पीछे। सिद्रा नवाज ने राधा। तोबा हाल ही में T20 आलमी कप खेल कर आई हैं दुबई और शारजा में, और इस बार ड्रिफ्ट, अच्छा लूप और टर्न भी। बेहतरीन लेग स्पिन बॉलिंग, राइट एरिया और टर्न भी मिला है। बड़ा अच्छा स्मूथ एक्शन है। तोबा का सर के ऊपर से बाजू आता है, जिसे उस टर्न मिलने में मदद मिलती है। अच्छा प्रोस्पेक्ट है, स्टिल बहुत यंग है, बहुत क्रिकेट बाकी है अभी। बैटिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। 61 रन की इनिंग खेली थी पिछले मैच में इन्होंने, तो एक ऑलराउंड क्रिकेटर होने की पूरे गुण मौजूद हैं इनमें। यहाँ रफ्स आ रहे हैं, इन पर अच्छा बॉलिंग एक्शन है। देख सकते हैं खासी बुलंदी से गेंद को रिलीज करती हैं। और एक बार फिर शानदार डिलीवरी। इस बार भी गेंद पर वो बराबर गर्दिश देखने को मिली, कोई जवाब नहीं था हफ्सा के पास। जहाँ बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग, टर्न अच्छी पेस के साथ टर्न कर रही है और अच्छे एरिया से टर्न कर रही है। लाइन बहुत बेहतरीन है, और जैसा कि लेग स्पिनर अक्सर करते हैं, एक बॉल पीछे कर दी। थोड़ा कंसिस्टेंट है, और जहां बॉल कर रही थी वहीं करते रहना होगा।
आखिरी गेंद अब आने को है इस 24वें ओवर की। पिछले ओवर में 1 रन बना है, इस ओवर में ये बल्ले से पहले रन्स और ये 4 हो जाएंगे। हफ्सा को ज्यादातर शॉट स्वीप पे ही उनको रन्स मिले हैं और इस ओवर का इख्तिताम भी उन्होंने इसी महारत से किया। उम्दा बैटिंग 81 पर 2। चार अच्छे बॉल करने के बाद 2 खराब बॉल कर दिए। इनकंसिस्टेंसी यहाँ पे भी लाइन खराब हो गई, बिल्कुल ही टांग पे बॉल कर दिए जिससे आसानी से खेल दिया है अच्छे तरीके से 4 रन के लिए हफ्सा ने। जब आप लेग स्पिनर इस तरह इस लाइन पे बॉल करेंगे तो वो आसानी से बैटर खेल सकते हैं। नीलम अपनी बॉलिंग जारी रखेंगी। अभी तक उन्होंने 4 ओवर्स किए हैं। इस मैच में ज्यादा से ज्यादा 9 ओवर्स करने की इजाजत है एक बॉलर को। पैड पर लगी, यहाँ 1 रन का इजाफा हुआ। दिलचस्प बात यह कि ये जो मरहला है ये नाज़िया नज़ीर हैं अंपायर। यह गेंद स्टंप्स मिस कर रही थी। अच्छा फैसला नाज़िया की जानिब से कि हालांकि पावर प्ले का दौर जो है वो गुजर चुका है लेकिन सिर्फ 3 बाउंड्री राइडर्स हैं, तो ये अच्छी कप्तानी आसानी के साथ 1 रन नहीं दे रही हैं कप्तान सिद्रा। जहाँ वो चाह रही हैं कि कुछ अलग करें बैटर्स, कुछ रिस्क लें। आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉलिंग भी अपनी फील्ड के मुताबिक कर रही है। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है और आसान हो जाती है कैप्टनसी जब आपका बॉलर सपोर्ट कर रहा हो आपकी फील्ड सेटिंग को। यहाँ पे नीलम भी वही कर रही हैं। आउटसाइड द ऑफ स्टंप स्लो बॉल कर रही हैं, हवा दे रही हैं बॉल को। वो चाह रही है कि कुछ अलग किया जाए और चांस लिया जाए, विकेट हासिल की जाए। इस पार्टनरशिप को जो कि 24 रन की है उसको तोड़ा जाए। जी हाँ, बिल्कुल भी वो रफ्तार देने पर आमादा नहीं है। इस मैच के जो अंपायर्स हैं नाज़िया नज़ीर और वकार अहमद हैं। स्क्वायर लेग पर वकार हैं, नाज़िया इस वक्त बॉलिंग एंड पर हैं, फार एंड पे। अच्छी अंपायरिंग की है। 1-2 बहुत क्लोज डिसीजन जरूर आए थे और अच्छा लगा देख के कि विमेन अंपायर्स भी अब बड़े मौकों पे अंपायरिंग करते हुए दिखाई दे रही हैं। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि आसान नहीं है यहाँ तक पहुंचना। स्क्वायर लेग पर वकार अहमद हैं, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। इनका ये पहला बड़ा मैच है, पहला टेलीवाइज मैच। वैसे भी जब आप किसी टेस्ट सेंटर में आकर इतने बड़े मुकाबले में आपको असाइनमेंट मिलती है तो जाहिर है आपका जो करियर है फिर वो आगे बढ़ता है, उसमें पेशरफ्त होती है। एक बार फिर फ्लाइटेड गेंद थी नीलम की जानिब से, बिल्कुल खामोश रखा 19 ओवर में भी और पिछली 12 गेंदों में सिर्फ 2 रन ऑफ स्पिनर ने दिए। 82 पर 2। जगह से तुझे खेला नहीं जा रहा। तोबा वो अपनी बॉलिंग जारी रखे हुए हैं। 26वें ओवर का आगाज हुआ है। ज्यादा रफ्तार हमने नहीं देखी है इस ये जो बॉलिंग टीम थी, बॉलिंग अटैक इसमें वहीदा अख्तर ने 5 ओवर्स किए, मीडियम पेस करती रही। उसके बाद सदफ शम्स जो हैं 4 ओवर्स, उनने
मिलिट्री मीडियम बॉलिंग की, और शायद ये भी एक वजह थी कि दी कॉन्करर्स ने टॉस जीतकर उनको कोई हिचकिचाहट नहीं हुई पहले बैटिंग करते हुए। हालांकि बहुत जल्दी आगाज था मुकाबले का अली, और बेहतरीन बॉलिंग है ये। जहाँ एक ये वजह भी हो सकती है, दूसरा पहले बैटिंग करके रन्स ऑन द बोर्ड, एक वो प्रेशर है लेदा, और तीसरा उनकी बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग लाइनअप है। तो 2 से 3 फैक्टर्स हैं जिन्होंने आसान कर दिया होगा डिसीजंस टीम कॉन्करर्स के लिए। अच्छा स्वीप शॉट, ये इनका फेवरेट शॉट है और बेहद बारावर साबित हो रहा है। बड़ी अच्छी पोजीशन में आकर सिर्फ एक ही फील्डर थी दायरे में फाइन लेग पर और बासानी उन्हें बाईपास किया। जहाँ इनकंसिस्टेंट बॉलिंग कर रही हैं, 2 से 3 अच्छे बॉल करते हैं, फिर एक बाउंड्री बॉल कर देती हैं, जैसा कि ये वाला बॉल किया। अपने पिछले ओवर में भी एक बॉल लेग स्टंप पे कर दिया था जो 4 रन्स के लिए गया था। जब आपने प्रेशर बना के रखा है तो फिर आप प्रॉपर बना के रखिए, फिर वो आपको एक आधा बॉल गलत देने का भी मौका नहीं है। बड़ा मैच है, फाइनल है ये। और ये जो आखिरी स्वीप शॉट था ये इन्होंने लाइन पर खेला था, सर बिल्कुल झुका हुआ साकिन रहता है, यही कामयाबी का राज है स्वीप शॉट पर इनके। लेकिन यहाँ पर आगे लाने की जरूरत है। अच्छा ड्रॉ किया इन्हें आगे की तरफ तूबा ने। ये बेहतर है, यहाँ पे ज्यादा बॉल करने होंगे कंसिस्टेंटली, लेकिन अगर इनको खतरा है कि ये लेग स्टंप पे जाती हैं तो एक फील्डर पीछे लिया जा सकता है, क्योंकि वहां पे जब भी बैटर बॉल खेलेगा तो वो रन आसानी से मिल जाएंगे एक बार फिर। लेकिन क्या इसी लाइन और इसी लेंथ पे बार बार बॉल कर सकती हैं, ये क्वेश्चन है। 5 रन हैं, एक बाउंड्री दी है, फिनिश अच्छा करना होगा यहाँ पे तूबा को। ये जितनी अच्छी लेग स्पिन बॉलिंग कर रही हैं, कोई वजह नहीं कि यहाँ स्लिप ना हो इनके अगले ओवर में। अच्छा इख्तिताम किया तूबा ने इस ओवर का, ये देखिए खेलने पे मजबूर किया, स्टंप्स की लाइन से गेंद को टर्न करने में कामयाब हुई। 87 पर 2। असद शफीक, हनीफ मलिक हैं जो अच्छे बैटिंग और हार्ड हिटिंग कोच हैं, उनके साथ ये बतूल मौजूद हैं। अली बहुत अरसे के बाद मैं डोमेस्टिक क्रिकेट कवर कर रहा हूँ यहाँ विमन की। कोयटा में हमने एक टूर्नामेंट किया था कुछ साल पहले, लेकिन उसके बाद से इनकी टेक्निक बहुत बेहतर हो गई है खिलाड़ियों की, और ज़्यादा बेहतर बैलेंस नज़र आ रहा है। बल्लेबाजों की अगर बात करें, देखिए बेहतरी तो आ रही है, अभी गुंजाइश काफ़ी बाकी है, लेकिन काफ़ी बेहतरी आई है। पीसीबी बहुत काम कर रहा है, बहुत सीरियसली ले रहे हैं चीज़ों को, और जैसे जैसे एक्सेप्टेंस आती चली जाएगी, नया टैलेंट जैसा आ रहा है, शौक जैसे डेवलप हो रहा है, जैसे काम किया जा रहा है, जैसे लोग अटैच किए गए हैं, आई थिंक यहाँ से बेहतरी ही बेहतरी होगी पाकिस्तान क्रिकेट की। जैसे जैसे मिसबाह उल हक के इन्वॉल्व हैं, दूसरी जानिब शोएब मलिक इन्वॉल्व हैं, बाकी 4-3 मेंटर्स भी मौजूद हैं, चीफ सेलेक्टर खुद ग्राउंड में मौजूद हैं। तो ये सब आप कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान विमेन क्रिकेट को भी मजीद बेहतर किया जाए। कलाइयों की मदद से खेल के 1 रन हासिल करेंगे। उस टूर्नामेंट में भी अगर आपको याद हो, क्वेटा वाले में भी तो काफी टैलेंट नजर आया था हमें, और अब अगर उस टैलेंट को देखें तो वो अब एक प्रोडक्ट बन चुका है। बहुत सारा टैलेंट यहाँ से आइडेंटिफाई होगा जो आने वाले सालों में प्रोडक्ट बनेगा पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के लिए। उनमें बेशक एक हमारे स्क्रीन पे सामने है नीलम मुश्ताक, 5 विकेट्स हासिल की पिछले मैच में। यहाँ 5 टीमें इस चैंपियनशिप में शरीक हुई जो मुख्तलिफ मैदानों पर खेली हैं।
कराची में, उसके बाद यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में। रावलपिंडी में शोएब अख्तर स्टेडियम में मैचेस हुए। डायमंड ग्राउंड इस्लामाबाद ने भी मेज़बानी की चैम्पियनशिप की। उसके बाद ये पिंडी स्टेडियम। तो इस तरह जब ये मुख्तलिफ कंडीशंस और मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर आकर खेलेंगी तो और ज़्यादा इनका जो खेल है वो फिर बढ़ता है, उसमें ज़्यादा ऑलराउंड खेल के काबिल हो जाते हैं। बहुत ही कंट्रोल के साथ बॉलिंग कर रही है नीलम मुश्ताक। 6 ओवर्स में सिर्फ 13 रन देकर 1 विकेट हासिल किए। 27 के बाद 90 पे 2। टीम स्टार्स में एक टेंशन सी है सुबह से। टॉस जरूर हार गए लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन बनी नहीं अभी तक किसी भी टाइम पे कि इनको परेशान होना पड़े। 90 पे 2, 27 ओवर्स के बाद कंट्रोल में है चीजें। बैटिंग इनकी तगड़ी है लेकिन उस तरह जो हमने कॉन्करर्स के कैंप में देखी है वो स्टार्स के कैंप में नजर नहीं आई है। क्या वजह लगती है आपको? शायद हम कह सकते हैं उतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन ये जो स्पिनर्स इस वक्त बॉलिंग कर रही हैं, नीलम और तूबा हसन, इन्होंने रन्स के सामने एक खासी आकर रुकावटें खड़ी की हैं। रन रेट अब गिरने लगी है, जो एक मौके पर 4 को छूने लगी थी अब 3.3 हो गई है। वैसे में जो विकेट है वो कई बार लगता है कि वो आसपास है अब आपके। वैसे भी लेग स्पिनर जब अच्छी बॉलिंग कर रही हूँ तो और ज़्यादा फील्डर्स को चौकस हो जाना चाहिए होता है कि विकेट आ सकती। हफ्सा को परेशान किया हुआ है यहाँ पर। गूगली का इस्तेमाल नहीं कर रही तोबा हसन, लेकिन इनके लिए लेग ब्रेक मौसर है। एक बार फिर लेग ब्रेक थी लेकिन ये स्वीप शॉट बेसूद रहा। क्योंकि इस बार उन्होंने वहां पे फील्डर रख लिया है, क्योंकि 2 बाउंड्रीज इससे पहले लेग साइड पे दे चुकी हैं दुबा, और अगर बॉल उस तरफ करना है तो बेहतर है। ये बेहतर कप्तानी है कि आप वहां पे थोड़ा प्रोटेक्शन दे दीजिए, फील्डर खड़ा कर दीजिए ताकि वो चौके से रुक सके। ये अच्छा कमबैक, अच्छे एरिया है। या सादिया इकबाल और नशरा सिंधु वो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं पाकिस्तान की वीमेन टीम में, जिसके हेड कोच है मोहम्मद वसीम। लेकिन इस वक्त सबसे अच्छी लेग स्पिनर कौन है पाकिस्तान की वीमेन सेटअप में? देखिए, एक तो तुबा बॉलिंग कर रही है, सईदा अरूप शाह है जो भी बहुत अच्छे बॉल करते हैं, अच्छे लाइन और लेंथ में बॉल करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान वीमेन टीम में है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का राज रहा है हमेशा से, या ऑफ स्पिनर का है निदा डार रही है। और इसे खेल दिया गैप के अंदर 4 रन के लिए। आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल किया था, डिसअपॉइंटेड होंगी, लेकिन अच्छी प्लेसमेंट की यहाँ पे अफजा ने और 4 रन हासिल किए। 28 के बाद 95 पर 2। चलो 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 यार, शाबाश। आजो 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 आजो, तीसरे विकेट पे आ जाओ जरा। Solid platform has been built.
short and put away nicely. Tuba has bowled in different lengths today and lines as well. Earlier she conceded 2 boundaries through sweep shot, and this was shorter. But Neelam, on the other hand, she's bowled a good spell, 1 for 13 of her 6. Excellent. 95 for 2, Marina Iqbal. 17 overs remaining. What do you think should be a good score? What Conquerors will be aiming for? I think they've got plenty of batting left. Fatma Sana, the skipper, she can come in and she can go big. Nareb, Malik, Najiha, they both can hit. Even Arup Shah can be handy. So these are the options for quick runs. But I think these two, the second is not available. And Dua and Hafza, they both can push themselves a little bit more, because the run rate is just 3.39. Should be looking to build. They've got a partnership of 38, but they need to accelerate from now onwards, because the batters in the hut, they can come and they can quickly post some total on the board. I think they should be looking for something around 180, 190. They've got plenty of bowling options. That should be a safe total for them. Another 90 or 90 odd runs in the remaining overs would be a good result. Move right across to open up that onside, where there's just a one fielder in the ring. There are 5 fielders in the ring on the offside, saving 1. I don't know if Sidra Amin would want to change that. Doesn't look likely at the moment. Offside is very well packed. So the batters, both Dua and Hafsa, are looking to come right across and knock the ball into the gaps on the onside. Juicy full toss, just knocked it down straight to the fielder. You're talking about that acceleration. Probably that was the opportunity. Mid-on, which is quite straight. There's a huge gap between mid-on and the sweeper at mid-wicket. There was opportunity for more than one on that previous delivery. Yeah, Dua and Hafsa, they both have some shots that they can rely on. A decent over. 99 for 2, Conquerors. आ जाएं गर्ल्स, आ जाएं, इस ओवर बॉल वाटर करेंगे. Done for 18 in 4 overs from Tuba. For memory, I can recall she's conceded 3 boundaries. That's once again down the leg side and will be punished. That's where she's faltered in line and length, and not enough protection there. It's very well put away by Hafsa. That's not the right line to bowl, especially to Hafsa. Tuba relies more on bowling quite straight. That has been her strength till now. But as a leg spinner, I think you need to understand the strengths of the batter as well. Hafsa is very comfortable putting those away into the leg side. She can also play those extra cover drives as well. But Tuba, she's been too straight and has conceded more runs than she normally does. Has represented Pakistan. She's a better bowler than this. Pushing for the second one, and that's good running. The fielder's not cutting the angles. Both are quick enough to pick the second one up. Just to give you a hint, the last time Conquerors and Stars faced each other, Conquerors defended 166
And Stars on the other occasion, they did beat Conquerors. They won by 4 wickets, so has been an even Steven sort of a competition for them when they face each other. Plenty of experienced coaches around. Just looking at the field that Tuba's got on the onside. 45 is up in the ring. That fielder for sweep, she's adjusted that a couple of times. This is solid blow down the ground. It'll just be a single. Tuba is a big spinner of the ball, so she's trying to start from outside the leg stump. But then it also allows the batters to have a free hit, and especially the way the field is set. She's gone for far too many, I think, for the liking of her skipper. This is better though. At this level, you can't just bowl 1 or 2 good deliveries per over. Tuba is much better than that. But still, I feel as a leg spinner, you should probably be pitching it up. We'll come back to that point. 30 overs gone. Team Conquerors 107 for 2. And it's time for drinks. girls. Time's up. Come on. ये ले नाजिया आप क्या नहीं वो हो जाएगी वो सुन लिया Fall of early wicket
But then two very good partnerships. 58 for the second wicket between Dua and Saira. Saira looked particularly good. Dua is still here. She's forged another partnership with Hafsa. 49 now. She's also looked good. This is Hafsa. Particular liking to the sweep shot. Freebies down the leg side, you have to say. Hafsa is particularly strong on the sweep shot. Partnership of 49 between Hafsa and Dua. Well, they had many resources but couldn't really capitalize on the chances given by the Conquerors. One for Wahida, one for Neelam so far. The rest still searching for some breakthroughs. Only managed to bag 2 wickets. Hafsa Khalid has impressed. She came at this level after a while. She's got a daughter now. So that is another incentive and inspiration as well. Generously flighted delivery from Neelam. 108 with slightly less than 15 overs to go. That 180, 190 you were talking about are well on the cards. It's generally been the problem over the years, covering the senior team as well. It's been lack of pace from the bowlers. Fewer options that the batters have shown that they're well equipped with. Neelam has bowled with good flight. Her lengths have been immaculate. With her pace, she can't afford to be too short, and she hasn't been, to her credit. Yeah, just inviting the batters to go aerial against her. Down the track, played with a straighter bat. That was an option. But again, the power has to be generated from the batter because Neelam is not giving much to maneuver with. Just got mid-off in the circle, inviting Hafsa to take her on. 50-run partnership of 71. Again, just probably yorked herself. The air was there. Yeah, she's got the onside field well protected, but the kind of flight that has been given. So trying to get to the pitch and open up the offside, but like you correctly said, she got too close to the ball. That invitation is still there. It must be very tempting with mid-off in the ring and such flight offered. Slightly wider, but won't be able to pierce that field. Good finish to the over from Neelam. 31 gone, 108 for 2. वहीदा अख्तर कंटिन्यू करेंगे 108 पे 2 टीम कॉन्करर्स. यहाँ से थोड़ा एक्सेलरेट ज़रूर कर सकते हैं. वहीदा नॉर्मली विद इन स्टंप्स बॉलिंग करती हैं. ज़्यादा बाउंस नहीं मिलता. स्किड ज़रूर करता है इनका बॉल. वेरिएशंस भी इनके पास मौजूद हैं. अच्छी पार्टनरशिप 50 रन्स की दुआ और हफ्सा के दरमियान. अच्छा सिंगल सॉफ्ट हैंड से खेला. और मेरे साथ मौजूद हैं बतूल फातिमा, फॉर्मर पाकिस्तान प्लेयर, विकेट कीपर जिनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है एंड वन ऑफ द ग्रेट्स
of this game और अब as a national selector इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं. वेलकम बतूल. अस्सलाम वालेकुम मरीना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक. आप सुनाएं कैसी हैं? यहाँ की ठंड कैसे एंजॉय कर रही हैं आप? नहीं, काफ़ी ठंड है. लेकिन कराची के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा है. ऑब्वियसली कराची में सारी लाइफ गुजारी है, तो कराची के लिहाज से बहुत ठंड है यहाँ पे. प्रोटेक्शन काफ़ी मौजूद है. डीप थर्ड डीप कवर भी, लेकिन लाइन यही रहेगी. बतूल, पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस एज अ सिलेक्टर. आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं. थोड़ा सा बताएं क्योंकि आगे काफ़ी आईसीसी के इवेंट्स भी लाइंड अप. अंडर 19 वर्ल्ड कप है जनवरी में, क्वालिफायर्स भी हैं. जब आपने वापस ज्वाइन किया इस सारे सिनेरियो को, एक तो कैसी फीलिंग थी, उसके बाद किन चीज़ों पे काम होता रहा? नहीं जी, बड़ा ज़बरदस्त है. थैंक यू सो मच. और अच्छा रहा है जब से मैंने ज्वाइन किया है. तो तकरीबन जो है वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़, उसके बाद इन्होंने खेली साउथ अफ्रीका, एशिया का, फिर इन्होंने वर्ल्ड कप खेला अपनी सीनियर टीम ने. अब हमने अंडर 19 का हमने जो है वो पूरे ओपन ट्रायल्स किए थे. अगस्त में सारे ट्रायल्स किए थे. वहाँ से हमने तकरीबन काफ़ी सारी लड़कियों को पिक किया था. उसके बाद हमने इनका एक टूर्नामेंट कराया था अक्टूबर में अंडर 19 का, जिससे हमने 32 प्लेयर्स को जो है सेलेक्ट किया था, जिसमें ऑलराउंडर्स ही थे, हमारे बैटर्स भी थे, टॉप बॉलर्स. उनको सिलेक्शन करने के बाद हम कराची कैंप में इनको लेकर आए थे. अच्छा कदमों का इस्तेमाल था हफ्जा की जानिब से और चैलेंज को कंटिन्यू किया. 4 रन हासिल किए. और कैंप क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा हमारा लेट हो गया था. एशिया कप अच्छा हुआ कि एक अच्छा टूर्नामेंट हमारी लड़कियों को वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस के लिए मिल गया था. और उसमें हमारी टीम ने, आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऑब्वियसली मैचेस की मुझे कमी नज़र आई है. पोटेंशियल बहुत अच्छे है हमारी जो अंडर 19 की लड़कियाँ हैं, बहुत टैलेंटेड हैं. इसमें हमारी ट्राइल्स की भी लड़कियाँ हैं, मर्दान की भी हैं. आपने देखा होगा महानूर ज़ेब मर्दान की हैं. उसके अलावा एबटाबाद से हैं. तो काफ़ी ऐसे एरियाज से हैं जो हमें लगता है कि आगे जाके हमें पाकिस्तान को अच्छा एक फ्यूचर में प्लेयर्स मिल सकते हैं. तो हमें थोड़ा सा जो है कि इनको थोड़ा सा है कि इनको हमें ग्रूम करने की ज़रूरत है. हमें अब इनको ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस देने की ज़रूरत है. ट्रायल्स की आपने बात की और ये अच्छा है कि रन आउट का चांस था. अगर डायरेक्ट हिट होती तो शायद मुश्किल में हो सकती थी हफ्जा, लेकिन लकी रही इस मर्तबा. ट्रायल्स की आपने बात की. एक अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि पहले क्रिकेट जो है वो महदूद होती थी वुमेन्स क्रिकेट की, जब बात करें कुछ शहरों तक. इस बार जब आपने ट्रायल्स लिए तो किन किन एरियाज़ को आपने हिट किया? हमने सबसे पहले जो हमारा पहला फेज़ था उसमें हमने गिलगित में गए, हमने सुस्त में लिए, हमने हुंजा में लिए. तो वहाँ पे भी हमें अच्छा टैलेंट देखने को मिला. ऑब्वियसली वहाँ जितनी लड़कियों को फैसिलिटीज़ हैं, जितनी उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसी में रह के वो जितना बेहतर अपने आप को प्रैक्टिस कर सकती हैं वो करती हैं. लेकिन ये कि अच्छा टैलेंट है फिर भी पूरे पाकिस्तान में. उसके बाद हमने सियालकोट, पेशावर, गुजरांवाला, सब जगह लिए, फैसलाबाद में लिए. तकरीबन काफ़ी सारे शहरों में हमने ट्रायल्स दिए. और उसके बाद इन सारी लड़कियों को हमने जो है मर्ज किया टूर्नामेंट करा के. अभी भी अगर आप देखें तो अंडर 19 को हमने 32 प्लेयर्स उसमें से सेलेक्ट किए. वो हमारा अंडर 19 का जो टूर्नामेंट था 5 मेंटोर्स के साथ था. ये अच्छी चीज़ है कि हमारे मेंटोर्स जो हैं वो पीसीबी की तरफ से उसमें इन्वॉल्व हुए हैं. बहुत फ़र्क आया हमारी लड़कियों की अप्रोच में. तो उसके अंडर 19 के टूर्नामेंट के बाद जो अंडर 19 की हमारी सिलेक्शन थी ट्रायल्स की, हमने उनको उसमें ऐड किया. और कुछ अब इस टूर्नामेंट में आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमारे ट्रायल्स से सिलेक्ट होकर इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं. यहाँ पे चांस हो सकता है आउट का. थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ था. हफ्जा ने बहुत ही सीधी शॉट खेली थी और वहीदा अख्तर एक अच्छी एथलीट हैं, उनकी उंगलियों को लगता हुआ गेंद विकेटों पे गया. दुआ माजिद जो कि नॉन स्ट्राइकर पे थी, उनको वापस जाना होगा और एक अच्छा ब्रेक थ्रू हासिल किया ये पार्टनरशिप तोड़ने के लिए. दुआ माजिद 40 रन बना के वापस. एक अच्छा ब्रेक थ्रू और बहुत ही अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई वहीदा ने. हल्का सा डिफ्लेक्शन था और क्रीज से बाहर थी दुआ. आसान डिसीजन अंपायर के लिए नकार अहमद. और एक अच्छा ब्रेक थ्रू भी. अच्छी इनिंग्स थी दुआ माजिद की. 40 बना के ये वापस 116 पे 3 टीम कॉन्करर्स. बत्तीस ओवरों के बाद 116 पे 3. पहली विकेट 2 पे गिरी थी. सामने अफसर आज ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाई बगैर किसी स्कोर के गए. उसके बाद पार्टनरशिप, 2 अच्छी पार्टनरशिप्स देखने में नजर आई. और अब फातिमा सना जो कि कप्तान है टीम कॉन्करर्स की, वो मिडिल में आई हैं. वेल सेटल्ड है. अफजा दूसरे एंड पे.
यहाँ से एक्सेलरेशन देखने को मिल सकती है क्योंकि अभी भी लारेब मलिक, नजिया, रूप शाह, हमना बिलाल ये ऐसे बैटर्स हैं जो कि बड़ी हिट्स लगा सकते हैं और क्विक रन हासिल कर सकते हैं। फील्ड काफ़ी स्प्रेड है अभी भी फातिमा सना के लिए। नीलम कंटिन्यू करेंगी। अच्छा बॉल। उसके बाद हम लोगों ने जी ये हमारा सीनियर का एक टूर्नामेंट था, अंडर 19 की जब हमने कर दी तो उनका एक कैंप था, फिर सीनियर का टूर्नामेंट था हमारा जो कि बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये लोग अक्टूबर में वर्ल्ड कप खेल कर आए थे, उसके बाद कुछ नहीं था। तो 5 मेंटोर्स के साथ 5 टीमें बन के इनका टूर्नामेंट हुआ। इसमें हमने ड्राफ्टिंग का सिस्टम किया था और इसमें जो पाकिस्तान की सीनियर प्लेयर्स हैं उनको ऐड किया था। उसके बाद हमने इसमें कुछ ऐसी प्लेयर्स ऐड की जिन्होंने काफ़ी टाइम से डोमेस्टिक खेला हुआ है लेकिन वो अभी तक पाकिस्तान नहीं खेल सकी हैं, उनकी हमने कैटेगरी बनाई थी, उनको ऐड किया था। और लास्ट में हमने जो ट्रायल्स दिए थे इमर्जिंग के, उनको हमने इसमें ऐड किया था। तो एक अच्छा मिक्सअप हो गया था। फिर ड्राफ्टिंग थी तो हर मेंटोर्स के पास तकरीबन टीम्स हैं अपनी है और ज़बरदस्त जा रहा है अभी तक एक कंपटीशन। एंड तक हमें नहीं पता था कि कौन सी टीम जो है वो फाइनल में पहुँचेगी। फातिमा सना मानी जाती जहराना बैटिंग के लिए और स्ट्रेट अवे उन्हें मौका मिला चौका हासिल करने का। मिड ऑफ सर्कल में मौजूद था, 4 रन हासिल किए। यहाँ से ज़रूर एक्सेलरेट करना चाहेंगी। अगर यहाँ से 180 190 का भी टारगेट हासिल कर लेते हैं तो ये एक अच्छा टोटल होगा। बिल्कुल फातिमा में ये क्वालिटी है कि वो इस टाइम पे आके अपनी टीम का स्कोर जो है वो आगे लेके जा सकती है। हमने बहुत सारी उसकी इनिंग इंटरनेशनल में भी देखी है। अभी लास्ट मैच में भी ये फातिमा ने नीचे से आके 50 रन किए थे। तो ये बहुत अच्छा होता है कि आपके पास नीचे ऐसे बैटर हों जो एंड में आके इस तरह की इनिंग्स खेल जाएं। आपने मेंटोर्स की बात की है, बहुत ही अच्छा स्टेप है पीसीबी की तरफ से और ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि जो बड़े नाम है मेंस क्रिकेट में भी वो आके इंटरैक्ट करें। तो इनके कैंप्स लाइनअप हैं और किस तरह का इनपुट जो है वो मेंटोर्स की तरफ से देखने को मिला? बहुत अच्छा इनपुट है। जाहिर सी बात है हर मेंटोर्स की तरफ से उनको है कि हमारे ऑब्वियसली टैलेंट की कमी नहीं है, पोटेंशियल वाइज हमारी लड़कियां कम नहीं है। जहां हम लैक करते हैं वो हमारी प्रैक्टिस होती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स मिलने चाहिए। रन आउट का चांस, लेकिन मेरा ख्याल है एक बार फिर कलेक्ट करने में नाकाम रही हैं सिद्रा नवाज। देखना होगा कि थ्रो भी विकेट थी या नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर एक और विकेट गिर जाती फातिमा या हफ्जा की तो बड़ा झटका लग सकता था कॉन्कर्स को। सिद्रा अमीन फील्डर, उनके हाथों से सिंगल लेना इतना आसान नहीं होता, बहुत क्विक आती हैं बॉल पे और रिलीज भी क्विकली करती हैं। फुल टॉस और जिसको डिस्पैच करने में कामयाब हुई फातिमा सना। नीलम को सोचना पड़ेगा कि ये एक ऐसी बैटर हैं जो गंदी बॉल को बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगी। ये अभी हम बात कर रहे थे, मेरे ख्याल है फातिमा सना को अगर नहीं रोका गया तो इनका स्कोर एक अच्छा टारगेट ये लोग सेट कर सकते हैं जो कि सिद्रा अमीन की टीम को मुश्किलात में डाल सकता है। वो फुल टॉस बआसानी खेलने में कामयाब हुई। बड़ा गैप था, गैप भी पिक किया इन्होंने। 124 पे 3। अंडर 19 की आपने बात की, अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी नेक्स्ट मंथ है और उनके लिहाज से क्या प्रेपरेशंस रही हैं और वर्ल्ड कप के लिए क्या तैयारियां होंगी? अभी आपको पता है कि ये एशिया कप से ये लोग आए हैं तो अभी एक ही दिन हुआ है इन लोगों को यहाँ पे पाकिस्तान आए हुए। तो अब इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जितना जल्द से जल्द इनका कैंप लगाया जाए वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि हमारी टीम को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं मिल सकी एज अ टीम। लेकिन एज अ टीम प्रैक्टिस करना एक अलग चीज़ होती है और सिलेक्शन के मैचेस और दूसरे टूर्नामेंट्स खेलना वो एक अलग चीज़ होती है। जब आप एज अ टीम प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आपको सारी चीज़ों का, प्लेयर्स को अपना पता चलता है, कोचेस को प्लेयर्स का पता चलता है और इस तरह आपका टीम का कॉम्बिनेशन एक बन के आता है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह जल्दी जो है इनका एक कैंप लगाया जाए ताकि इन्होंने 10 जनवरी तक मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप के लिए निकलना है। तो उससे पहले जितनी जल्दी जितना टाइम इनको एज ए टीम प्रैक्टिस करने के लिए मिले, उसमें इनके मैचेस भी हों, इनके काम भी हो, इनके सारा सेशंस हो इनके साथ कोचेस के साथ, तो फिर इंशाल्लाह इनका वर्ल्ड कप है उसमें फिर इनके कुछ वार्म अप मैचेस हैं, उसके बाद मैचेस हैं, तो देखते हैं। और ये वो एज होती है जहाँ पे आपको ऑब्वियसली परफॉर्मेंस से ज़्यादा आपको डेवलपमेंट पे काम करना पड़ता है। तो आपने जाहिर अभी टाइम कम हुआ है, कोचेस को भी मेंटोर्स को भी ज्वाइन किए हुए, लेकिन इंटरनेशनल अगर कंपैरिजन करें तो किन चीज़ों पे आपको लगता है कि अंडर 19 के लेवल पे हम मिसिंग आउट कर रहे हैं? अंडर 19 लेवल पे अगर आप देखें ना तो हमारी लड़कियां पोटेंशियल वाइज बहुत अच्छी हैं, स्किल्स बहुत अच्छा है।
हमारा जो अगर लैक करता है तो वो इनको सीरीज़ करती हैं। चाहे हमारा डोमेस्टिक में इनको टूर्नामेंट्स मिलने चाहिए, डोमेस्टिक हमारा स्ट्रॉन्ग इतना होना चाहिए कि हमारे पास सीनियर्स के साथ साथ बैकअप में हमारी ये टीम्स तैयार हों। ए टीम से हमारा काम होना चाहिए। हमारी अंडर 19 की टीम्स को अलग से टूर्नामेंट्स इनके होने चाहिए, ताकि जितना ज़्यादा डोमेस्टिक खेलेंगी, जितनी ज़्यादा इनको प्रैक्टिस मिलेगी, फिर इसके अलावा इनकी इंटरनेशनल मैचेस होने चाहिए। अगर आप वर्ल्ड कप में देखेंगे, जो अपनी एशिया कप में टीम्स थी जितनी भी थी, एसोसिएट नेपाल की टीम थी, वो तक जो है वो 2-2 टूर्नामेंट्स खेल कर आ रही थी। श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब पहले से वहाँ पे मैचेस खेल रहे थे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा फ़र्क डालती हैं, आपकी परफॉर्मेंस पे जो इन्हांस करती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल मिले, ताकि जल्दी उस लेवल तक आ जाएँ। तो लेग साइड पे बॉल गया था, वहीदा नेचुरली विद इन स्टंप्स बॉल करती हैं। ये इंटरेस्टिंग होगा कि फातिमा सना को ये किस तरह का बॉल करेंगी, क्योंकि रेंज बहुत है फातिमा सना के पास एज अ बैटर भी, और पावर भी जनरेट कर लेती हैं, और बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेती हैं। अच्छी ऑलराउंडर है, मतलब आपको बॉलिंग में भी सारा करके देती हैं, बैटिंग में भी। फातिमा सना ज़बरदस्त। स्लो वन था। कैंप्स की आपने बात की, और ऑब्वियसली ये बात की कि काम होना चाहिए स्पेशली अंडर 19 के हवाले से। तो एक इशू जो हमें जनरली नज़र आता है वो ये है कि एक एनवायरनमेंट चाहिए होती है लड़कियों को, स्पेशली ग्राउंड्स उस तरह अवेलेबल नहीं है। तो इस पाथ में कोई बेहतरी होती हुई नज़र आएगी? नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह बेहतरी होती हुई नज़र आएगी। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि पहले मतलब बैक टू बैक इस तरह के टूर्नामेंट्स नहीं थे, तो अब लड़कियों का ये जो है मेंटोर्स के साथ एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और इसी तरह का जो है लड़कियों का मेंटोर्स के साथ T20 का होगा। और उसके अलावा 2 डे भी हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी लड़कियों के लिए 2 डे का जो है वो टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाए, ताकि लड़कियों को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा विकेट पे खड़े होने की और टेम्परामेंट इनका बेहतर हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं प्लान में। तो इंशाल्लाह बेहतर है कि फ्यूचर में हमें बहुत सारा कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नेशनल साइड की बात करते हैं, क्योंकि आपने टाइम निकाला है और हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि हर चीज़ को हम टच करें, क्योंकि ये वो इश्यूज हैं या वो एरियाज हैं। डाउन द ट्रैक थोड़ा सा यॉक कर लिया था, और अच्छा फुटवर्क इस बार वहीदा की जानिब से, क्योंकि वो एरियाज और वो चीज़ें हैं जिन पे ज़्यादा डिस्कशन होती नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। 34 ओवर्स के बाद टीम कॉन्करर्स 127 फॉर 3। नेशनल साइड में चेंजेस भी नज़र आई, ऑन एंड ऑफ अच्छी परफॉर्मेंसेस भी आई हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ा सा एक इशू रहा है। और प्रॉबेबली अगर मैं बात करूं तो फिटनेस और पावर हिटिंग, ये वो एरियाज हैं जिनको आप कंपेयर कर सकते हो बाकी टीम से। तो ओवरऑल इस चीज़ को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल, अभी हमारा यही प्लान है कि जो हम जाहिर सी बात है हम लोग अगर लैग करते हैं तो हमारी जो है वो फिटनेस लेवल हमारा काफ़ी नीचे है। अगर हम दूसरी टीम्स को देखें इंटरनेशनली, तो वो लोग इस चीज़ में बहुत आगे हैं। जितनी भी टीम है, अगर आपकी फ़िटनेस आप अच्छी है तो ही आप जो है ना, मतलब आपके अंदर आप 50 ओवर्स खेल सकते हैं, आप पावर हिटिंग अपनी कर सकते हैं, अगर आप मुकम्मल एक फिट हैं। तो ये चीज़ है कि हमें अपनी फ़िटनेस पे बहुत काम करना है। इंशाल्लाह है प्लान कि अब जो क्वालिफायर्स से आपको पता है मेन इवेंट है, हमें क्वालिफायर्स खेलने हैं, तो उससे पहले कोशिश है कि इनको एक अच्छा जो है वो फिटनेस कैंप दिया जाए, जिसमें इनकी स्किल्स पे भी काम हो, इनकी फिटनेस पे भी, जो पावर हिटिंग की आप बात कर रही हैं उस पर भी इनके साथ काम हो। फिर मैचेस भी हो तो एक अच्छा लंबा कैंप इनको दिया जाए कोचेस के साथ, ताकि उस एनवायरनमेंट में खेलें और अपने आप को बेहतर कर सकें। रामीम शमीम ये भी डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करती हैं, काफ़ी टाइट लाइन और लेंथ होती है। इस बार थोड़ा सा इनवाइट ज़रूर किया था हफ्जा को, मिड ऑफ सर्कल में मौजूद है, वो इनविटेशन रखा हुआ है हफ्जा के लिए, मिड ऑफ को अगर चैलेंज करना चाहें। रामीन चेंज ऑफ पेस भी बहुत अच्छा करती हैं, लेग साइड पूरा पैक्ड है। अब तक टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट्स भी रामीन की हैं। देखना होगा आज कितनी विकेट्स देती हैं। थोड़ा सा खिंचा हुआ बॉल था इस बार। पूल हमें नज़र आ रहा है इंक्रीज हो रहा है, अंडर 19 की भी इंडक्शन है, वो भी एक एरिया है। ओवरऑल कुछ अगर आपसे मैं कहूँ जो कि मुश्किल है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स आने वाले उभरते वाले प्लेयर्स अगर आप पॉइंट आउट कर सकती हैं जो आपको अभी तक नज़र आए। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है हमारे लिए हर प्लेयर टैलेंटेड है, सब में स्किल्स हैं, लेकिन मुझे अंडर 19 का जो जितना भी अपना टैलेंट है ना, वो देख के बड़ी खुशी हुई है। और जितने भी लोगों ने देखा, इवन मेंटोर्स ने उनको पहली दफ़ा देखा, और जितने भी कोचेज़ ने जो आउटसाइडर्स से उन्होंने देखा, तो सबको उनके अंदर बहुत पोटेंशियल नज़र आया है।
उसमें हमारे आपने देखा होगा अगर अंडर 19 के एशिया कप के मैचेस तो उसमें एक बुमराह स्टाइल से हमारी बॉलिंग करती है, मर्दान की है, महानूर ज़ेब है, वो बड़ी अच्छी है। और लास्ट उसने मैच में भी मलेशिया के अगेंस्ट 2 विकेट्स ली थी, वो हैं। उसके अलावा वहाँ पे कोमल है विकेट कीपर जो है, वो अच्छी आपको ऊपर से अच्छा हिटिंग कर देती है, एज ए विकेट कीपर भी वो बहुत अच्छी हैं। और फातिमा खान है वहाँ पे फास्ट बॉलर, वो मुझे तो ऐसा लगता है फ्यूचर में फातिमा दूसरी फातिमा सना होगी, बिल्कुल इसी तरह की बैटिंग अप्रोच है उसकी बॉलिंग में भी। सामिया अफजल भी एक ऐसा नाम है जो बिल्कुल बिल्कुल बहुत इम्प्रेस सामिया किया। अनफॉर्चुनेटली आईसीसी के रूल्स के हिसाब से वो जो है वो उस एज को एलिजिबल नहीं थी, वरना हमारी पूरी कोशिश थी कि सामिया जिस तरह का टैलेंट है तो हमें इस चीज़ का बहुत वो था, अफसोस था कि वो जो है वो एलिजिबल नहीं हुई और एशिया कप और वर्ल्ड कप से हमें उनको ड्रॉप करना पड़ा। बहुत ही टैलेंटेड बैटर हैं सामिया अफसर। और सबसे बड़ी बात ये कि ये हैं तो उम्र में छोटी, लेकिन ये कि अभी जितने भी हमारे सीनियर्स के भी टूर्नामेंट होते आए हैं तो ये उसमें भी जो है वो पार्ट लेती रही हैं और खेलती रही हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देती रही हैं। एज हुआ इस बार, रुकना चाहिए, 2 रन हासिल होंगे। तो आप खुद एक वर्ल्ड क्लास कीपर रह चुकी हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके पास है, तो विकेट कीपिंग में आपके इंटरेक्शंस हुए हैं और कोई ऐसा टैलेंट जो इन 3 विकेट कीपर्स के अलावा नजर आए? मैंने बिल्कुल जाहिर सिद्रा पहले से कीपिंग करती हुई आ रही हैं, इसके साथ नजिया अच्छी करती आ रही हैं, उसके अलावा जो है अंडर 19 में कोमल है। मैं चाहती हूँ कि अंडर 19 के कुछ ऐसे बच्चे जो अब अंडर 19 क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब उन्हें हम अपने सीनियर्स के साथ मिक्स करें, उनमें इतना टैलेंट है कि वो हमारे सीनियर्स को कम्पीट कर सकते हैं। फातिमा सना जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो वही कर रही हैं, कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया, थोड़ा सा यॉर्क जरूर कर लिया था लेकिन फिर भी बॉटम हैंड की मदद से 4 रन हासिल किए मिड विकेट में। और इसी के साथ टीम कॉन्करर्स का 134 फॉर 3। बतूल बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला और काफ़ी एरियाज को टच किया हमने विमेन क्रिकेट के ऊपर, और उम्मीद करते हैं और हमारी नेक ख्वाहिशें भी आपके साथ हैं कि आपकी सरपरस्ती में बेहतर होती जाए टीम्स। थैंक यू मरीना, थैंक यू सो मच। पहुंचे गर्ल्स, पहुंचे, आ जाए। बॉलर चेंज। हफ्सा अपनी निस्फ सेंचुरी से सिर्फ 2 स्ट्रोक के फासले पर हैं। उनके साथ कप्तान फातिमा सना इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं और स्पिनर्स के सामने खुलकर रन्स बनाना इतना आसान रहा नहीं। इस इनिंग्स में 137 डॉट बॉल्स हैं, वही परेशानी का सबब रही हैं दी कॉन्करर्स के लिए, टीम कॉन्करर्स के लिए। डैप करके रन बनाने की कोशिश की लेकिन वो मयसर नहीं था। तुबा हसन इन्होंने अच्छा स्पेल किया है, इनका 6ठा ओवर है, अभी भी विकेट नहीं मिल सकी लेकिन काफी नपी तुली बॉलिंग की है, परेशान किया है, इनने गेम को टर्न करने में कामयाब हुई। कॉन्करर्स के लिए अब 10 ओवर से भी कम बाकी रह गए, इसलिए ये पाँव है यहाँ से जरा दबाने की जरूरत है बाकी मांदा ओवर्स में। अच्छा एशिया से मिड ऑफ के ऊपर से निहायत शानदार शॉट हफ्सा का 4 रन के लिए। अब अपनी सेंचुरी से सिर्फ 1 स्ट्रोक के फासले पे। सलमान भट्ट कमेंट्री बॉक्स में है, उनका खैर मकदम। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, एक खूबसूरत शॉट, बड़ा अच्छा इस्तेमाल कदमों का और बहुत ही स्टेबल इस शॉट को मारते वक्त हफ्सा मिड ऑफ दायरे के अंदर थी और पूरा फायदा उठाया उन्होंने इस फ्लैट हिट बॉल के ऊपर पहुंचकर। बड़ी इंप्रेसिव इनिंग खेली है इन्होंने अभी तक।
138 रन बन गए हैं और अगर ये पूरे ओवर्स खेलते हैं, जो कि लग रहा है कि ये दोनों खेलेंगे, फातिमा जो कि कैप्टन है इस टीम की वो भी इनके साथ हैं, खासा अच्छे रन हो जाएंगे एक फाइनल के हवाले से अगर टोटल देखा जाए। 36 ओवर के अख्ताम पर 138 पे 3। हफ्सा और फातिमा एक नई पार्टनरशिप कर रही हैं। यहाँ पर आज पार्टनरशिप्स नजर आई हैं। दूसरी विकेट के लिए 56 रन बने थे दुआ माजिद और सायरा जबीन के दरमियान, जिससे अच्छी बुनियाद पड़ी इस इनिंग्स की। उसके बाद हफ्सा खालिद ने भी अच्छी बैटिंग की है और यहाँ पर स्टंप का मौका गंवा दिया। आज जिससे पहले एक रन आउट वहाँ सिद्रा नवाज ने जाया किया था और ये एक और मौका उनके हाथ से निकल गया। जी हाँ, ये आज फील्डिंग में इश्यूज रहे हैं फील्डर्स के भी, और इससे पहले एक रन आउट भी सिद्रा नवाज के हाथ से निकला है। तो एक बड़े मैच में ये वाले जो मौके हैं ये बड़े महंगे साबित हो सकते हैं। एक बार फिर गैप में पुश किया फातिमा ने, आसान एक रन बनाया और स्ट्राइक दी वापस सेट हफ्सा को। ये इस मैच का टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है, क्योंकि फातिमा सना जितनी बड़ी स्ट्राइकर हैं, इस बड़े अहम और नाजुक मौके पर ये 15 से 20 रन का फर्क हो सकता है, शायद इससे भी ज्यादा कम, क्योंकि जिस पाए की वो खिलाड़ी हैं, जितनी तेज रफ्तारी के साथ खेल सकती हैं। अब उम्मीद करेंगे यहाँ पर स्टार्स के उनको पछताना ना पड़े। दायरे में कवर भी है और मिड ऑफ भी है और हफ्सा की मुसलसल ये कोशिश है कि वो कदमों का इस्तेमाल करें और इस चैनल को एक्सप्लॉइट करें, इस गैप को इस्तेमाल करें। ये देखिए एक बार फिर वहीं से खेलना चाहती थी, शॉट ऑन है, टाइमिंग मिलने की बात है। मिसबाह हक आज सुबह से ही बड़े एक्टिव, बड़े मुतहरिक नजर आए हैं इस कैंप के अंदर, बातचीत करते हुए, अपने प्लान्स को अपने प्लेयर्स तक पहुंचाते हुए। इस बार सिंगल लेना चाहती थी लेकिन मना कर दिया फातिमा ने। 37 ओवर्स का इख्तिताम 139 पे 3। नेक्स्ट टूर्नामेंट में मैंने आपको सेंटर से क्रॉस करते देखा, वार्निंग दी। धूप अब कुछ देर के लिए रावलपिंडी स्टेडियम से गायब हो गई है, लेकिन अच्छी पोजीशन है टीम कॉन्करर्स की। यहाँ हेड लगाने में कामयाब हुई एक्स्ट्रा कवर की जानिब। दूसरा रन लेना चाहती थी, वापस मुड़ने की ख्वाह थी हफ्सा, लेकिन उन्हें मना किया गया। यकीनन यहाँ पे दूसरा रन था लेकिन नॉन स्ट्राइकर से बैटर ने मना किया। काफी वक्त था उनके पास और ये थ्रो भी लंबी थी, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से ये थ्रो आनी थी। तो बॉल लेग स्पिन को जारी रखेंगी और 38वें ओवर का खेल जारी है इस वक्त। एक और बड़ा शॉट इस बार फील्डर जो है वो नीचे हैं कैच के और ले लिया इसको, और ये 50 रन मुकम्मल नहीं हो सके। आखिरकार एक छक्के के साथ 50 का इंसाबूर करना चाहा लेकिन उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। यहाँ ला रहा है मलिक ने ये अच्छा कैच लिया है, हाई कैच था और बहुत देर से एक लड़ाई चल रही थी हफ्सा और तूबा के दरमियान। वो इन्हें उम्दा स्वीप शॉट्स लगा रही थी, यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल किया,
अगेंस्ट द टर्न गई खेलने के लिए और आखिर में फील्डर को क्लियर नहीं कर सकी। हफ्सा ने अच्छी इनिंग्स खेली, 47 रन की 140 पर 4। लेग स्पिनर का सामना करने के लिए लेग स्पिनर ही अब उतरी है मैदान में, सैयदा अरूब शाह। ये हाल ही में आलमी कप खेल कर आई हैं मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तान के लिए। अच्छी बैटिंग कर सकती हैं, 36 इनका बेहतरीन स्कोर है। मिड ऑफ को दायरे में खड़ा किया गया है। जो डीप कवर है वो नई बल्लेबाज के लिए भी वो वहीं पर मौजूद है। फील्डिंग में खातिर खा तब्दीली नहीं की गई, मां सिवाय इसके कि अब डीप कवर का पॉइंट के फील्डर के साथ तबादला किया गया। पोजीशन का ये तबादला नहीं है, सिर्फ खिलाड़ियों का है। तुबा हसन विकेट जो है वो बैटिंग के लिए और ज्यादा बेहतर होती चली गई है। यहाँ पर फुल टॉस बनाया और आखिर में ये सीधी हाथों में गई। आज अच्छे कैचेस हमने देखे हैं, हाई कैचेस। यहाँ आउटफील्ड में कैचिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रही है। सिर्फ इनर रिंग के अंदर मसाइल हुए हैं फील्डिंग को लेकर। 2 कैचेस और 1 रन आउट, 1 स्टंपिंग। तो बड़ा ज़रूरी है कॉन्करर्स की टीम के लिए कि उनकी जो कप्तान है, जो कि पाकिस्तान की भी कप्तान है, फातिमा सना, वो पूरे ओवर्स तक अगर खेलती हैं तो उनमें ये एबिलिटी है कि वो इस स्कोर को 200 रन तक ले जाएं। खासा वक्त ले रही हैं। आज साल का ये सबसे मुख्तसर दिन है पाकिस्तान में, 22 दिसंबर। आज सबसे बड़ी तवील दौरानिये की रात होगी, लेकिन यहाँ खासा वक्त लिया जा रहा है। इस बार कट करके दूसरा रन हासिल किया फातिमा सना ने। एक बार फिर फील्डिंग में बेहतरी की गुंजाइश थी। यहाँ इस बार कट किया था और बॉल जो है ठप्पा खाने के बाद थोड़ा सा स्पिन हुआ और इसी वजह से फील्डर जो है बहुत अच्छा गेंद दिए। फील्डर उसको रोकने में नाकाम रहे। 2 आसान रन्स बने। अठतीस ओवर का अख्ताम और 144 पे 4। समिया अफसर बगैर रन बनाए आउट हुई। दुआ माजिद और साहिरा जबीन के दरमियान उसके बाद अच्छी पार्टनरशिप हुई। हफ्सा ने भी 47 रन की उम्दा इनिंग्स खेली, टॉप स्कोरर हैं अब तक। और यहाँ जो स्पिनर्स हैं वही जारी रहेंगी। रामीन को गेंद करने के लिए लाया गया, ऑफ स्पिनर को। ज्यादा पेस बॉलिंग हमने नहीं देखी है इस बॉलिंग इनिंग्स में। सलमान, ये भी एक वजह थी आप समझते हैं टीम कॉन्करर्स के टॉस जीतकर पहले खेलने की? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने बड़ा मैच है, फाइनल गेम है
और ऐसे में अगर एक टोटल डिसेंट टोटल बोर्ड पे आ जाए तो खासा प्रेशर होता है अपोजिशन के ऊपर। और सुबह जब टॉस से पहले इनके मेंटोर से हमारी गपशप हो रही थी तो उनकी गुफ्तगू से ये आइडिया हो रहा था कि अगर टॉस जीतते हैं तो ये लोग पहले बैटिंग ही करेंगे ताकि प्रेशर डाला जा सके, क्योंकि यहाँ इस टूर्नामेंट में चेसेस कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई नहीं अंडर प्रेशर। तो शायद उसी पैटर्न के तहत वो गए हैं और जाहिर है उसमें टीम स्ट्रेंथ भी होगी। लेकिन ये एक और कैच है और इस बार ये कैच भी पकड़ा जाएगा। आउटफील्ड कैचिंग आज शानदार रही है और अरूप को जाना होगा सिर्फ एक ही रन बनाकर। यहाँ पुल करने के लिए गई अरूप और वहाँ बाउंड्री पर सिर्फ एक ही खिलाड़ी मौजूद था, सीधा उन्हीं को खेल दिया और ये बड़ी उम्दा डीप कैचिंग, काबिले तारीफ, पूरी तरह कंट्रोल में नजर आई। इस तरह ये बैक टू बैक 2 विकेटें गई हैं 5 रन के इजाफे में। अरूप सिर्फ 1 रन बना सकी 145 पे 5। बाउंड्री से 2 की कह रहे हैं, बाउंड्री से 2 के लिए कह रहे हैं। लेग प्लीज मिडिल। नजीहा अलवी ये विकेट कीपिंग भी किया करती हैं और पहली गेंद को खेलने में कामयाब हुई। अच्छा टच किया, लेट टच, और 2 रन के साथ उन्होंने अपनी इनिंग्स का आगाज किया। अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट लिया और ये वो गेंद थी जिसको पुल किया, ज्यादा जगह नहीं थी कि फुल आर्म्स को अपने स्विंग करती हैं। और ये एक अच्छा कैच, कायनात हफीज ने एक अच्छा वेल जज्ड कैच लिया बाउंड्री पर। और ये बैटिंग है हफीजुर रहमान साहब की, जो कि नेशनल बैंक के ऑफ स्पिनर हुआ करते थे और एलसीसी के कोच रहे। और अंडर 19 लाहौर के लिए जब मैं खेला हूं तो तब वो हमारे भी कोच रहे। जहां एलसीसी के साथ उनकी खासी तवील वापसगी थी, जिस जमाने में आमिर हयात रोकड़ी मरहूम वो प्रेसिडेंट थे एलसीसी के। तो 39वां ओवर जो कामयाब रहा 3 रन और 1 विकेट के साथ 147 पे 5। आप नॉकआउट मैचेस की बात कर रहे थे कि इसमें पहले बैटिंग करने का फायदा हो सकता है। कल से बैरिया टाउन चैंपियंस T20 कप के नॉकआउट मरहले की इब्तिदा हो रही है और यहाँ पर प्लेऑफ खेला जाएगा यूएमटी मार्कोर्स और नूरपुर लायंस, 2 बड़ी मजबूत और इनफॉर्म टीमों के दरमियान। और इसे आप बराह रास्त देख सकते हैं 3:30 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से। टिकट्स जो हैं दस्तयाब हैं इस मैच के। हवा में खेली, फिर मौका है डीप फील्डर के पास और एक और अच्छा कैच। और इस बार कप्तान गेंद के नीचे आई और कोई गलती नहीं की सिद्रा अमीन ने। तूबा हसन जिनको पहली कामयाबी के लिए 7वें ओवर तक इंतजार करना पड़ा, अब 2 विकेटें उनकी हुई। जी हाँ, बड़ी ही एक कह लीजिए जरूरी विकेट थी जो इन्होंने ली। फातिमा सना एक डेंजरस खिलाड़ी हैं जो बड़ी हिटें मारने में सलाहियत रखती हैं, लेकिन एक बहुत ही आला कैच। और सिद्रा अमीन जो कि बड़ी एक बेहतरीन एथलीट हैं, एक रनिंग कैच जो कि पीछे की तरफ भागते हुए उन्होंने लिया। कभी भी ये कैचेस आसान नहीं होते। और फातिमा सना 20 रन बनाने के बाद इन्हें वापस जाना होगा। 6ठी विकेट गिरी और अब लगता है कि वो जो चांसेस थे 170 से ऊपर जाने के वो कम होते जा रहे हैं, कुछ गैर ज़रूरी जल्दी के नतीजे में। 147 पे 6।
ये 36वें से शुरू हुआ है। तो फिर अगले को 5 के लिए बुला लो ना, कौन है नेक्स्ट? 5-5 हो जाएंगे। पीछे रहने दे। हाँ तो बुला ले उनको, वैसे भी दोनों को ज्यादा पता है इन लोगों का। ला रहा है मलिक, नई बल्लेबाज हैं और अब ये रन खतरे से खाली नहीं था, लेकिन उतनी तेजी और उतनी फुर्ती नजर आई नहीं सिद्रा अमीन की जानिब से जैसी कैच के वक्त थी पिछली गेंद पे। देखिए काफी डीप खड़ी थी वो और शायद एक्सपेक्ट कर रही थी एक और बड़ा हिट। ये देखिए फातिमा सना ने जब बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, टॉप एज हुआ और पीछे आते हुए अपने आप को बैलेंस रखा और एक प्रेशर कैच, क्योंकि बेहतरीन प्लेयर का कैच था। इस बार मिडल किया है लेकिन सीधा फील्डर की तरफ, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। एक ही रन बना। जरूरी है कि ये अपने पूरे ओवर्स बैटिंग करें। जी अभी तक हमने देखा है कि इनकी जो दिफाई टेक्निक है, इनके जो टॉप ऑर्डर बैटर्स थी वो खासी बेहतर लगी पहले बरसों के मुकाबले में, लेकिन आप समझते हैं जो हिटिंग टेक्निक है वो अभी और बेहतर हो सकती है। जी हाँ, हिटिंग टेक्निक के साथ साथ फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें शायद बहुत सारा काम होने वाला है और उसके बाद फिर हिटिंग टेक्निक जो है वो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती है। एक रन और 150 रन मुकम्मल हो गए हैं कॉन्करर्स के इस सिंगल के साथ। 150 रन के लिए इन्हें तकरीबन 40 ओवर्स बैटिंग करना पड़ी। स्वीप शॉट खेला लेकिन बाउंड्री पर निगरानी है, इससे एक ही रन बन सकेगा। तूबा हसन का एक और कामयाब ओवर, पिछले दोनों ओवर्स में उनने विकेटें उड़ाई और इस बार तो कप्तान फातिमा सना को भी चलता किया। 151 पर 6। बच्ची बेचारी का पहला टूर्नामेंट है ना, फिटनेस इश्यू से आने ने बच्चे आने। The projected score still 170. They'd like to get to that at least from here on. All right, big match coming up tomorrow. Barrier Town Champions Cup, the qualifier. It's UMT Marcos taking on Nurpur Lions. 3:30 tomorrow. Remember, everyone, it's going to be a one cracker of a game. Two very good sides up against each other. But now, at the moment, 151 for 6, Team Conquerors. Just lost away a bit. And then a good partnership in between. 40 for Dua Majid, Sara Jabin, Afza Khalid, Fatma Sana scoring 20 runs, the captain. Sweeps it, runs at least, yeah, just one. Right, I have got somebody with me who's just so eager to get in and bat herself. The former vice captain, the former selector, and a very smiling, who wants to go out there and bat, Marina Iqbal. She was showing us the videos of her days, her batting. Shows that how badly she wants to go out there and play, Marina. Yeah, that's true. I mean, I can understand that these all are quite young. Probably some of them don't have the exposure, but again, back in our days, I think we've worked enough on the foundation and then the extension of the games. So probably you do feel a bit of pain when you're in the comm box and there is a ball which you could have hit and the player on the surface doesn't do it.
So, yeah, good old memories. You still kept your fitness. You still can be there playing in the middle. There's no worries about that. Still good at it. I wish I could tell you a few. I could show you the few videos that she was showing us in the car. Look at this. Perfect cover drive, if you can see, guys. Nice balance. It's good. No wonder she's missing it. Oh, that's out. Yes, given out also. So they're losing quick wickets and losing the way Conquerors. 6th wicket now. 7th rather. Larib Malik just trying to accelerate. Moves outside off stump, forcing the shot into the leg side. Ramin is a wise bowler. Picked up her second. And the change of pace is immaculate. Sidra Nawaz hasn't missed on that occasion. Swift hands and Larib Malik gone on 2. Team Conquerors just faltering now on 154 for 7. Right, known for her brilliant left arm spin, Nasha Sandhu has got a job to do with the bat. 57 runs in her career, highest of 20. If she can have 20 runs in this total, that will be very handy. Interesting thing. Oh, down the track. Lucky for Najiha. She was left stranded by Nashra in the middle. 41 gone, 154 for 7. Nashra Sandhu started as an all-rounder and she used to open the innings with me. So, yeah, she could bat, but then she converted her all concentration on her left arm spin. But I can tell you that she has all sorts of batting talent in her. Yeah, we're yet to see it. 20 runs are highest. Yeah, they're smiling. But I tell you, they would know that they've lost away a bit. They played well in between, but just as the inning is about to end, they're losing too many wickets. No wonder Marina Iqbal wants to go out there and bat. Yeah, I think they just overdid it. Fatma Sana was there, Hafza was playing a superb innings out in the middle. Roob just came out and had no plan as to which bowler to attack and what areas to pick. Yeah, on the other hand, the bowling of stars, I think the spinners have done well. Neelam Mushtaq in particular, 9 overs, 1 for 26 her figures. Tuba Hassan, a touch expensive I would say. 40 runs she's given away. She's bowled those boundary deliveries. Good running between the wickets. Where she's bowled well, she's given away easy boundary deliveries too. That's been the trouble as far as Tuba is concerned. Yeah, she prefers to bowl in a straighter line. The problem with that is it was tossed up. Nashra straight away calling for the single. Good running there. The problem with it, if someone who can sweep you well, who can hit you into the leg side. Oh, leading edge. Lucky there. Najiha Alvi. That straighter length can be expensive if someone can sweep you, someone can hit you into the leg side, and Hafza was one of them. And she made sure, but on the counter, Tuba did not change her line at all. She's bowling well if she's consistently in this area. Middle hand off and then look to turn it away from the right hander. But the problem has been the consistency. If she's not been able to consistently bowl in that area. The mentor is in the ground now, Mr. Shoaib Malik for stars. And again towards the leg side, which has been worked towards on for 1.
We'll talk more about it. 42 done, 157 for 7. Mr. Shoaib Malik and Adnan Rasool in the house, just watching the game, watching the team play in the final. As we see the change in bowling, Waida Akhtar been brought back, 24 runs for 1 wicket in her 7 overs. Yeah, she's got some variations, change in pace. Usually very disciplined, would bowl within the stumps. But Najiha is someone who likes to use the crease. She's got those ram shots, reverse sweeps as well. She's very proactive batter whenever she's out. And with 8 overs remaining, they would like to push it. Sorry, correction. 3 overs. It doesn't matter. I know you're thinking about the game. You want to be there yourself. Add 8 more. It's going to be a long day then. That's okay. She wants to pad up and go there out there in the middle. So please don't mind. That's the pride, the star they play for. Such an honor, Marina. You've done that. It's amazing once you represent country against all odds, facing all those difficulties, flaked away just for one. You just got to give it to the girls who make it to this level. It's just not easy. Those obstacles, cultural obstacles, you know, societal obstacles, and still they just go past it and come to this level and represent country. Well done, amazing. I totally agree with you. It's not easy. It's not just the internal factors, it's also the external factors that you have to counter as a girl. Slow one within the stumps, just nudging it around. I remember the first time I opted to play it at a professional level. I went to the LCCA ground. At that time there was no cover. It was just iron railings. And I used to bat at probably the most, it was just near the road, and it was the extreme right surface, a cemented surface. And when I used to bat, people would gather around and would comment on each and every shot. And that could have done 2 things to me. That either could have discouraged me, but it gave me more mental strength. That, okay, I need to cut that outer sound, the noise detection has to be there, and focus on what I am doing. And with time, what happened, all those people started to appreciate my game. And that's probably how all these girls have started off. So shout out to all the girls and to Nadia for just finding the gap and getting the boundary which was needed to get the momentum back. It was a good effort by the fielder. She's hurt herself in the way. Huraina Sajad, who took a beautiful catch early on. Yeah, that's one thing you would expect from Huraina. She's a very committed player. Full stretch drive. Slightly on a shorter length. It wasn't a better length to bowl. I could have done it. But good effort in the end. Wasn't able to contain the boundary though. This one keeping Loi. That's what you expect. Vaida with that sling in her action. 43 done, 163 for 7.
12 deliveries left, 163. How many more they can add? At least 20. They would like to do that. Get the score to 180. That will definitely challenge the Stars. Although Stars are a good batting side. Sidra Amin will lead their batting lineup. There's Sadaf Shams in the camp. Bhatti, Sidra Nawaz Bhatti. She can bat too. Few youngsters that we're looking forward to see. But yeah, shout out to all you girls. Done so well to get to this level. One by one, take one run at a time. Get yourself, just aim yourself to get to 180. Yeah, I think it's better to give Najiha a strike. Nashra, she can hit down the ground. Also extra cover is her option, but Najiha is more proactive. She can sweep. She can use the crease as we saw earlier as well. Got 45 in the circle. She would be looking to clear it. Just shuffling across towards the offside. Sweeps it for one. Again, that's probably where they need more improvement. Playing it towards offside. I know we've seen batters drag it from outside the offside towards leg side, where they could have easily played it over cover or extra cover. I think that's where work is needed. It's also just the general game awareness. With the field, you can sense which line and length would the bowler be bowling. You need to have a counter plan for it. Again into the leg side, as you say. Nashra is one of the players who has that extra cover shot, but she's not applying it. The ring on the offside is then you can explore that vacant area over the cover. Where are the numbers? Yeah, she swings that one. Has it gone all the way? No, 4 runs signaled by the umpire, but that was a good swing. Came down the track, Najia Alvi. Yeah, she's expected to do that. Just a forward press, giving herself a little bit of a room. Tossed up, asking to be hit. And Najiha has played a lot of cricket. They play together, so she knows what Ramin is doing. This time she cuts, and cuts beautifully. Like a trace of bullet for 4. That's great batting. Overcorrection from Ramin on this occasion. Wasn't a wise delivery given the field. And Najiha, again, the game sense was there on that occasion. Just waited for it. Outside off stump. Knew exactly where the gap was. Slammed it through it. Exactly what you said. Game awareness. Ramin Shameen been predictable with a line. This is good cricket from Naji Alvi. Keeping the strike. Taking a single of the last over. 12 runs coming off this over. 44 done. 175 for 7. Good to have the mentors around. You'll learn a lot as a player from them. It's going to be a good contest because I think Stars, they do have the batting power, but not many of them have clicked. Whereas Conquerors, they're a very strong bowling side. You've got Aroop Shah in it. You've got Hamna Bilal, who's a good in-swing bowler. Nashra Sandhu, starting with Fatma Sana. Hafza Khalid can bring that leg spin out of her as well. Yeah, I've just been told by the scorer on my right, all these spectators coming from Bajwa Cricket Academy, there's a chance at the striker. So I'm going to ask him again about Bajwa Cricket Academy. Is it just for women only? Has it been dedicated to women only? Yeah, as he tells, it's a
co-ed academy for men and women. It's good they've come to the ground just to witness this final. It's in the air, fielder under, and takes it. It's nice and comfortable. Hurena Sajjad one more time. It wasn't a bad option, just the area Najiha picked wasn't good. They had mid-off inside the circle. Probably that was the area she was targeting, but couldn't really execute it. An easy catch. Hurena Sajjad has been tremendous guiding that area, and another wicket for Wahida. The option was there, but all she had to do was to go over mid-off. Gone on 23, 8 down on 175. Hamna Bilal walks in. She can also go big down the ground. That's her strength. Opted not to though. It was a good ball from Wahida. Nice and solid. She's here because Najia Alvi wanted to gain maximum runs. She went after it. The idea was right, but could not quite execute it. The power not quite behind that shot. But I think she's done well, really well, Najia Alvi. Just towards the end of the inning, she's given that momentum. Oh, again in the air. But not quite carrying to the third fielder. Because they lost a way in the middle a bit. So a cameo was required. Najia Alvi did play that, 23 runs. Yeah, probably those were the important runs to just push Conquerors probably over the line. I'm not writing off the batting lineup of Stars, but they've got something to bowl at with the bowling options provided. Up and over, almost got to it. Marina says Nashra could bat. She's showing her talent with the bat. She's good. Soha Fatma, the fielder, was in business for a little while. The captain likes the effort. Yeah, Nashra, the idea was right, just couldn't really get the middle of the bat, sliced it and got a hand to it. Soha Fatma, usually with the gloves behind the stumps. Down the track, Hurena Sajjad sets herself and another catch taken. No one can evade her. And Wahida gets her third as Nashra has to take the walk. Yeah, she doesn't drop anything. She's such a good outfielder. Few great efforts in the field and excellent catches. 3 of them on the boundary line as Nashra Sandhu's inning ends with the Conquerors also playing out their 45 overs, scoring 178 runs for the loss of 9 wickets. I think there will be a happier side choosing to bat first after winning the toss. And this is how things unfolded last delivery. Nashra, that batter, had to go big. And a good smart catch by Hurena Sajjad to end the inning for the Conquerors. Right, 178 for 9, Marina Iqbal. How do you see this inning as? Yeah, I think with the bowling attack they still need to bowl well because they've got plenty of batting options when it comes to Stars. Sidra Amin starting off down the order. We've seen Tuba scoring some runs. Sidra Nawaz is also a factor there. Kainat Hafiz, Sadaf Shams. The names are there. All they need to do is just click. That's where the problem has been so far in this tournament for them. But it's going to be a good contest. Yeah, it will have to be the captain herself, Sidra Amin, stepping up to the occasion and play a good inning here. She has the capability, she has the potential to do it, and the experience also to do it. This is a big stage, the big final. Has she saved the best for the last? That's the question. There are a few good runs in the middle. Dua with her 40 runs, 32 for Saira. Hafza scoring 47. Fatma Sana, the captain, scoring 20, and it was Najia Alvi, a bit of a cameo in the end. 23 runs of 23 deliveries.
as they took the score to 178 for 9 in their allotted 45 overs. And Stars, they used all their resources. Wahida picking up 3, some exceptional death bowling from her. Ramin with 2 for Tuba and 1 for Neelam, who in the middle overs provided some breaks for the Conquerors. Managed to pick 9 wickets. Right, Shah Faisal has been a very busy man since morning. He's out there with an interview. Thank you very much, Ali Yunus. तुबा हसन हमारे साथ हैं, पाकिस्तान की राइट आर्म लेग स्पिनर. आज भी उन्होंने 42 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए. तुबा, बॉल कैसा हो रहा था? विकेट और कंडीशंस को देख के अपने स्पेल के बारे में बताइए. विकेट एज अ बैटिंग बहुत अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा स्पिन मुझे मिल रहा था, तो मेरा सिंपल था कि मैं सिर्फ विद इन स्टम्प्स रहूँ और टीम के लिए अच्छा करूँ. और जिस तरह आपका ये टूर्नामेंट चल रहा है, पहले कराची में, फिर यहाँ पे थ्रू द टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट में आपकी टीम का एनवायरनमेंट कैसा रहा? क्या कुछ सीखने को मिला? ओवरऑल टीम हमारी बहुत अच्छी रही है और जो हमने स्टार्टिंग कराची से मोमेंटम पकड़ा था उसी को हमने कैरी किया है और उम्मीद है कि आज हम उसी मोमेंटम को कैरी करके अच्छा फिनिश करेंगे. और आपकी बैटिंग, ज़ाहिर है बैटिंग में भी आपका एक रोल होता है, तो ये टारगेट हाफ वे स्टेज पे 179 का लग गया है. कंडीशंस को देखते हुए क्या फील कर रही हैं? कंडीशन बहुत अच्छी हैं और मेरे ख्याल से मेरे ऊपर के बैटर्स ही अच्छा खेल जाएंगे और उम्मीद करती हूँ कि मेरे तक वो छोड़े भी ना. अच्छा, चलें, ऑल द बेस्ट. बहुत अच्छी आपने बॉलिंग की और होप इट गोज वेल फॉर यू इन द सेकंड इनिंग्स. Thank you so much. And back to you guys in the com box. Right, the leg spinner Tuba Hassan, 2 for 42 in her 9 overs. Yeah, let's have a look at what happened in the first inning. That was Samia Afsar, so much promise, and that against the run of play, she played one in the air and got a wicket. Few edgy boundaries in the beginning. Then Dua Majid and Saira Jabin settled down, started hitting some boundaries, some glorious hits we saw through covers. And coming down the track also, hitting it straight, some quality shots. So that shows that Pakistan has got good future as far as batting is concerned. Some sloppy work in the field, also helping them to gain some momentum and get few runs. And then Hurrena Sajjad took blinders of catches, 3 of them. Yeah, with Hafsa Khalid coming out to play, she started off well. Anything on the leg side was put away, anything shorter. She had that shot in her zone. Tuba Hassan probably too straight for her. Wahida Akhtar, that was a bit of a smart work from her. Just a deflection to spend and send Dua Majid. Runs kept on flowing. Fatma Sana came in straight away. She took the charge with Hafsa Khalid. Slow full toss there, and Hurrena was on the receiving end yet again. Ramin Shamim, whenever she dropped, she managed to get a wicket off of it. And at the feet on that occasion, she couldn't really accelerate, and in a short term, they lost a couple of wickets, which put momentum back towards Conquerors. There was a good stumping from Sidra Nawaz and a smart bowling from Ramin. In the end, what was needed was Najia's cameo, and she came in and targeted the bowlers. Ramin outside off them, and that was the end of it. Again, Hurrena Sajjad with a good, easy catch. Wahida Akhtar bagging 3 wickets. This was it, as Nashra started. Wanted to go big, but couldn't really. That was the end of the innings, and they managed to post 178. That's it. Well, 179 is the target for Stars to defend and Conquerors to chase it down. It's going to be a good contest. We'll take a short break and then we'll be here for the chase with you.
Very warm welcome back to the Rawalpindi Cricket Stadium. We're in for the run chase now of this grand final between Team Conquerors and Team Stars. Conquerors batted first. They put up a very good looking total on the board. 178 for 9 in their 45 overs. Dua scoring 40, Saira Jabin 32, Hafsa 47 the top scorer. Contribution from Fatma Sana as well. Najia Alvi 23. All chipped in. Not a single half century, but overall a very solid looking batting card. And they've got runs on the board in this final. That is what they normally say is the good thing. There's plenty of boundaries. Sweep shot in liking, and so was the cut shot. Solid low down the ground. Fatma Sana also came in and shown briefly. Just a good display of all-round strokes. Talking about the bowling, Wahida Akhtar 3 for 33. She was the leading wicket taker. 2 for 38 for Ramin. Neelam bowled a good spell of 9 overs, 1 for 26, and the leg spinner Tuba Hassan 2 for 42 also chipped in with decent performances. Sun is shining here at the Pindi Cricket Stadium. It's been a bit hazy, but now it's brightening up and we're in for an exciting run chase. Very formidable bowling lineup for the Conquerors. And the Stars, they will depend heavily on their skipper Sidra Amin and Sadaf Shams, both Pakistan internationals. Sadaf will take first strike at average of 20 and strike rate of 60. The highest score is 38, and it'll be exciting to see that how Fatma Sana and her charges come on and defend that target. This is Soha Fatma, the youngster. This level in terms of experience, just 38 runs, so big opportunity for her. No introduction needed for this girl on your screen, Fatma Sana. Her tournament, she's got 8 wickets, just 23 years of age, incredible. Alongside me in the com box, settling in is former Pakistan skipper Salman Butt. Very good afternoon, Salman. Thank you, Shaji. Good afternoon to yourself and to the viewers. As the first ball is a full toss and it's been driven through the gap. A bit of a mess there by the fielders, but only 2 conceded. So good positive start for the Stars. We have seen earlier on in the first innings, fielders in the ring making a few errors, and straight away we start with 1 replicated. Low full toss. Actually, there were 2 fielders. And a little knockdown from the fielder at cover took the ball away. Fatma didn't like that. 2 runs for Sadaf. That in drift again from Fatma Sana. Wrong line on that occasion. Generally, she likes to bring the ball into the right-handers. Fatma Sana at good pace. Just need to get her lines right. The Pakistan skipper will be really depending to make some early breakthroughs. Just the change-up delivery on that occasion, holding its line. It's a great initiative, this tournament, because the 5 mentors that are leading the teams in the Champions Cup, they've been assigned duties to look after the women's teams as well. Conquerors been mentored by Miss Paul Haq, and the Stars by Shoaib Malik. Wealth of experience from these mentors to be transferred to these young girls. Absolutely, and there in your pictures, it's Shoaib Malik now sitting among his team, the players.
and obviously listening to them, speaking to them, transferring his experience, his knowledge of the game, and how to deal with situations. And on the other hand, we have seen Misbah since morning sit around his players and talk to them. This is well bowled by the captain, Sana Fatma. There pitching up, allowing the ball to see if there's a bit of swing available or not. Beats the outside edge. Have a look at that. Once again, this holding its line, looking for the drive was Sadaf Shams. Fatma is probably the quickest bowler in the country. Talking about the role of mentors, just had a word with Misbah ul Haq during the lunch break. He was absolutely excited with the kind of talent he's seen. This one was sliding down. Especially he had high praise for his girl Fatma Sana. Said she's an exceptional cricketer, generally known as a bowling all-rounder, but he was all praised for her batting skills too. This one once again the in-swinger, the change-up delivery. Slightly wrong line. Dot to finish off the first over. Stars 3 for none after 1. She is okay type. Hamna Bilal, 4 wickets in the tournament. Just 22 years of age. Pretty good economy rate. Yeah, the inner ring fielding suggests that the ball will come back in to the batter, and probably the line of attack would be stump to stump. Yep, it's an in-swinger straight away. As the field suggested, no slip, an extra fielder on the leg side. Good start, getting some swing early on. Remember, it's 2 new balls, and these conditions, this time of the year, there is a movement available for the seamers. Close look at her grip. Slightly wide of the crease, just falls away in her action. Make you think of any particular new ball bowlers with prodigious in-swing for the right-hander, so that'll be an outswinger for you. Yeah, there's Lance Klusner was one, and was a few others as well. I'll just going down the memory lane, we'll find a few and let you know. Meanwhile, it's a wide ball down the leg side. So the opening bowlers already both have delivered a wide. Fatma Sana in her previous over, the first one, and Hamna this time around. An easy approach. The action is decent, but as she gets to the bowling crease, she just steps outside the line of a run-up, which definitely breaks the momentum and does not allow full pace to go into the delivery. And that is where the momentum is required to be kept up. So I'm sure the coaches would have noticed that, because you run in a straight line. Just have a look at Hamna come in. She runs straight and up till this point, and then she starts to move away, and that is where the head also falls,
and the line of the force changes. And that breakage does not allow her to bowl to her full potential in terms of pace. And also that drag down in terms of length, and just dropping down that line also down the leg side. Few things, plenty of scope for the coaches to work, because generally these girls, we know that in Pakistan we don't have proper club cricketing infrastructure for the girls, so yeah, that is where the pathway becomes so very important. It is the core to any successful cricketing nation, and these things are hardly found at this level. Once again, there's a lot of in-swing, but going down the leg side. So this is the work to be done in the pathways in the early years. So when a player develops his or her body, then they are already through all these movements and they are biomechanically clear, and that makes lesser chances of injury and more progression as you grow up. You don't need to change much then. straying down the leg side again, helped it on its way. Sadaf Shams had a couple of sighters on that occasion. She was quick to pounce on that. That angle has been coming throughout the over. This time she was able to put bat to ball, Sadaf, and get herself the first boundary. Yeah, having said that though, Salman, we know that how big an achievement for all these girls are to come even up to this stage and reach this level with the kind of hindrances and obstacles they have. Yeah, it's fine, and they deserve their dedicated outlets where they can go and be themselves and play their cricket. And as we speak through with different things, it's 2 overs bowled, it's 10 for none. Talk about Fatma Sana being the quickest of the Pakistan women's bowlers. Just have a look at her. Run in straight lines and continue in straight line and then deliver and then even keep on going straighter. So compare both of these opening bowlers, and the action is the hindrance for the other bowler, why she isn't bowling at a greater pace. Come the delivery stride, the hip and the shoulder should be aligned. The back foot and the front foot should be aligned to give that momentum the necessary pathway to continue towards the batter. And put all the effort in the ball like she does. And these are the simple basics that need to be done at early years, so that once an athlete has put his or her time into a sport, then they do not require a major change come the international level. Just have a look at this action. Nice, easy, and everything in rhythm. And certainly far easier for her to carry on bowling for longer spells and to the right channels because of the better alignment. Easily repeatable action as well from Fatima. Women's cricket in the world has grown no ends in the last 10 years or so. And it's actually very, very good for the game worldwide, and in Pakistan no different. Over the years, PCB has tried to uplift the standard, increase and enhance the number of competitions, try to increase the pool of players. A lot has been done in that time by PCB. Short pitch delivery, hurried Soha. This is why Fatma is different. She's aggressive as well. The attitude is more like a quick bowler. The pace is there,
And then you see this tendency of every now and then pushing the batter on the back foot by bowling the shorter length. And this is great to see. Smart operator she is. Just the third and the fine are back on the boundary. The rest all are up in the circle. As once again she beats the outside edge. Batter looking to play fine. She's quick through the air and off the wicket as well. Clearly surprising Soha. No footwork there on that occasion. Having done a little bit of wicket keeping myself, I have a feeling Najiha, who fluffed that ball, was doing that in the practice session as well. Probably she's carrying an eagle like most wicket keepers do most of the times. Come back and have a look again. Is 3 overs done? 10 for none. Hamna for her second over. Corrects her line. She's got more protection in the ring on the offside. Tempting that cover drive, trying to create that gap, the kind of movement she's getting. That was the right line to start. In the last over, have a look how Najiha fluffed that ball. Probably she's carrying a little bit of injury to her left hand. Shot and thumped away. Work to do in the deep. Won't be enough to stop the boundary. Second for Sadaf Shams. Shot and asking to be hit. And accepted by Sadaf, smashing it over mid-wicket. Not the ideal timing that she would have liked, but the bat swing was wonderful. Just have a look at this. Playing with the angle. And there is a deep square leg. So she knew where the vacant space was. And the placement was perfect. Corrects her line immediately. You're talking about the growth of women's cricket and how Pakistan has also tried to improve or increase the pool of players. Now under 19 cricket is also being played quite regularly. The international under 19, Pakistan under 19 was just in Malaysia last week participating in the under 19 Asia Cup. Shaji, the schools have to step up. Unfortunately, in Pakistan, schools till this date are calling sport extracurricular. And that is where the mindset and the issue lies. They do not think that sport is an important activity. It is part of the curriculum. Sport is an introduction of many nations around the world. And this is what they've got to realize. As this one is turned away on the leg side, just helped on with the angle. And wonderful placement, that another boundary to Sadaf. As the score moves on nicely, it goes to 18 now, and we're still in the fourth over. So somebody has to bring some sort of sanity to the educational institutes where they avoid sport. They get paid heavily in terms of fees, but the sport still remains extracurricular. Without grounds, without facilities, one sports day in a year does not justify a sporting nation that is as good as Pakistan. You will pick up on that when we do come back. 4 overs done.
Stars 18 for none. $18 for none after 4. You made a wonderful point, Salman. Sports in schools has to be part of the curriculum, and especially in terms of we're talking about girls sports or girls cricket in Pakistan's culture, schools can be the safest place for girls to start their sport at a very early age. This is what is the requirement of professional athletes, men or women. They need to be identified and start early. So schools can play that part. And since Pakistan women are now representing the nation at every platform, every big ICC global event, so they're on the spotlight. We have to do something for these girls to give them that opportunity, the right atmosphere to make us proud. Absolutely. Schools and institutions need to realize that sport creates leaders. It injects self-discipline and also decision-making. And it builds resilience. You lose one day, you strategize, you come back, and you learn how to strike back and win a game. And in life, that relates much more than any classroom does. And that is where they can contribute hugely, as this one is played through square leg and gets closer to the boundary, and it's a wonderful save. What an acrobatic attempt over there by the fielder, and in that she's successful to save the boundary. Well, she's Pakistan's best fielder, Sayyid Aroop Shah. She's very, very athletic, very quick across the turf. Thick inside half of the bat, but Pindi Stadium, the outfield is very, very fast. But look at Aroop go. Look at the sprint and the athleticism. That is world class. This is beautifully timed. This is a wonderful cricketing stroke. Soha now gets in on the act. High-class cricket action this in the previous two deliveries. One shot played off the toes, wonderfully flicked away. Great fielding effort there. And the next one is timed absolutely perfectly. Waiting on the back foot, just using the wrist in the very end and getting the timing perfectly. Great placement, great shot. 24 for no loss for the Stars. We are in the 5th over as the opening batters start to look comfortable. Full pitch, another solid, firm drive. I'm talking about the conditions, Salman. I think the pitch will be at its best now. Sun probably at its warmest. 1:30 local time. We had a 9:30 start. So with these two new balls, ball probably coming on better than it has all day. Stars need to capitalize on this good start. Fatma Sana still proceeding with the same field. 5-4. Change of delivery slightly wider, but still well inside that tram lines. I wonder what sort of a bowling lineup Fatma has in her team, because she's definitely one of the very best. And she's got Nashra Sandhu, left arm spinner. Then there is Mahnur Aftab, right arm off spin. And Saida Aroop can bowl leg spin. So plenty of spin options. But at the moment, it's seam bowling from both the ends, as the 5th over is now complete and it's 24 for no loss.
24 for none. Plenty of batting to come. Probably not in the order that you're seeing at the moment. Sidra Amin may still come at number 3. Sidra Nawaz is there. Tuba. Yeah, one fielder will have to come up, and now she is, because it's still the power play. Only 2 can go outside the circle. So the sweeper from deep square has now come up at short fine. It's mid wicket that's deep and a bit straightish, and a long on that is on the boundary. Rest in the circle. And interestingly, lots of space behind square leg, empty one. That is a good start. Right in the line of stumps. Yeah, Nashra Sandhu is a prolific performer. Probably at this level, she's a banker. As a skipper, you can trust and bet for her 9 overs. And she will be spot on. And look at that start. 2 deliveries. Just drifting in, cramping the batter. Sadaf Shams, who's been there for a while. 17 deliveries. But break free against Nashra Sandhu, they will have to take chances, because Nashra wouldn't give you any freebies. Landing it on a dime. 3 out of 3. She, along with Sadia Iqbal, probably the 2 best left-arm spinners in Pakistan. Sadia probably will be edging a little. But Nashra not far behind. Consistency for you. 4 out of 4. In absolutely the same spot. As a batter, Sadaf will have to come up with a plan. Probably early days still. Can't allow Nashra to bowl like that, because then she'll bowl all day long. Same spot. Oh, that came in. Did it get an edge? End of a wonderful over. Made in to start off online everything, as 6 are now complete, and it's 24 for no loss. Goes past the outside edge. And an awkward looking take from Najiha. Last ball, last over, Salman. Yes, have a look at this ball coming and drifting in, and just the inside edge, which was pretty evident. And the umpire, she knows this is not out. But lots of praise coming in the way of the umpire. Obviously, it's great to see women coming up, doing this thing, and at international level as well, representing Pakistan at the very top. Great to see, as this is another one that misses the outside edge. Yes, the women's game grow. Definitely, we need the officials. We already have international representation from Pakistan, which is absolutely great. Similar goes for other roles in cricket industry. We got our commentator, Marina. The likes of Arooj also have made name for themselves. Talk about coaching, talk about management. You see women's coming through in all departments. Yeah, they've been great on the mic, in the field. As Fatma Sana now gaining her line and length, bowling to a particular line and length, and not allowing anything for the batters to take advantage from. As now a cluster of dot balls has been built, 9 dot balls on the trot, and the batters, well,
plenty of overs to come, but this can be annoying for any set of players to have continuous dot balls. Yeah, you feel pressures building. Be interesting to see how the batters react to that. Fatma Sana realizing now that Nashra is bowling at the other end. She don't need to do anything as well. Put the ball there in the right areas. She's done that 4 times in this over, and then that is on the back of what Nashra did in the previous over. You can see the fielders in the ring also charging in, closing in on the batters, not allowing for any quick singles. You build pressure as a team. The role of these fielders, look at how keenly they're walking in. This is beautifully played. A little wide on that occasion, and timing was sublime. This is Soha. Once again, wonderfully played, caressed behind point. And she was looking to do that earlier in the over. She's done it once in the previous over, and now she repeats it. Just the width that she was looking for. The length was there too, and that's all she required. And then the hands came in and did a wonderful job. Another boundary. So that will take some pressure off this pair. After 10 deliveries, the first scoring shot is a boundary. Have you got as good a handwriting as this scorer has, Salman? Look at that. That is amazing maintenance of a scoring book. Our scorers do a wonderful job with the colored pens. They do different stuff, and it's really wonderful to see the neatness that they keep. 7 overs complete. It's 29 for no loss. नशरा संधू को जल्दी लाना पड़ा है क्योंकि हमना बिलाल का जो स्पेल था वो महंगा रहा, उन्हें 2 ही ओवर से बाद हटाना पड़ा। अच्छी इब्तिदा यहाँ पर मैसर आ गई है स्टार्स को। पहले से ही पावर प्ले को उन्होंने तकरीबन जीता है। अभी हालांकि 10 गेंदें बाकी हैं और इसका सारा जो शुमार है ये शकील अहमद, बहुत पुराने स्कोरर्स हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के, इसका कर रहे हैं। अली यूनुस कमेंट्री बॉक्स में आ गए हैं। यहाँ पर जल्दी विकेट हासिल करना होगी कॉन्करर्स को, वरना वो खेल में पीछे रह जाएंगे। जहाँ बहुत ही अच्छा आगाज है यहाँ पे स्टार्स की जानिब से, और आप देख सकते हैं आप कंफर्टेबल होते जा रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल भी कर रही हैं दोनों बैटर्स और एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं। 100 जो रिक्वायर्ड है, और वो 4 का 3.9 का है, लेकिन बहुत आसानी से अबूर कर सकते हैं क्योंकि बैटिंग में डेप्थ है। सिद्रा अमीन को भी आना है, कप्तान कायनात हफीज अच्छी बैटर है, सिद्रा नवाज भी बैटिंग कर लेती हैं, तूबा हसन भी बैटिंग कर लेती हैं, तो इसलिए इस पार्टनरशिप को जल्द से जल्द तोड़ना होगा। सदफ ने तेज रफ्तार बॉलिंग का सामना बड़ी जवामर्दी के साथ किया, पुल शॉट खेले, रफ्तार का इस्तेमाल किया। यही वजह है कि इस वक्त स्टार्स के खेमे में बिल्कुल बेचैनी नहीं है, पुरसुकून चेहरे हैं। कट कर गई, यहाँ पर 1 ही रन मिल सकेगा। शोएब मलिक भी आ गए अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। स्टार्स के खेमे में शोएब मलिक और मंसूर अमजद जो हेड कोच हैं, इन दिनों स्टैलियंस के साथ वाबस्ता हैं। जहाँ मुतमईन होंगे इस स्टार्ट से, और पहले इनिंग की परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा रन्स दिए नहीं, 178 रन्स इनकी टीम ने बनवाए हैं, जो कि इस
पिच पे और इनकी बैटिंग को देखते हुए डेफिनेटली चेजेबल हैं। और अब जैसा आगाज मिल गया सदफ शम्स, जरा क्वाइट सा टूर्नामेंट रहा है, लेकिन क्या उन्होंने अपना जो बेहतर है वो बड़े मैच के लिए संभाल के रखा है और यही वो अपॉर्चुनिटी है उनके पास। फोर्स करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर कभी कभार जो स्ट्रोक प्ले है इस पिच पर मुश्किल हो जाता है। फातिमा सनम हर बार टीम विकेट के लिए इनकी जानिब देखती है। ये इस वक्त पाकिस्तान की सबसे तेज बॉलर हैं और पाकिस्तान को चाहिए दूसरे एंड पर भी कुछ मजीद पेस चाहिए और बड़ी और ताकतवर टीम बनने के लिए, क्योंकि इस जो दुबई और शारजा का आलमी कप था, जब उसमें डायना बेग जख्मी हो गई थी, तो उसके बाद दूसरा एंड जो है वो बॉलिंग के एतबार से, पेस के एतबार से वो तकरीबन खाली हो गया था। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन अगर हम पिछले साल 2 साल की क्रिकेट देखें पाकिस्तान विमेंस की, तो ज़्यादातर हमने देखा कि सादिया इकबाल ही नया बॉल करती हुई नज़र आती हैं हमें। फर्स्ट चेंज के ऊपर हमने ज़्यादातर देखा है या फातिमा आती हैं या डायना बेग आती हैं, उससे पहले अनम अमीन किया करती थी नया बॉल। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट में हमेशा ही छाए रहे हैं और नए बॉल के साथ स्पेशली। और सादिया इकबाल ने जो कंट्रोल हासिल किया है अपनी स्पिन पर, जो आर्मर वो करती हैं, तो एक दुनिया की बेहतरीन T20 बॉलर्स में उनका शुमार होता है। और शानदार शॉट, दिलकश स्क्वायर ड्राइव सदफ शम्स का, और जो ही उनको पेस मिली वो और यहाँ पर अच्छी लगी स्ट्रोक प्ले में। ये बहुत ही टैलेंटेड बैटर हैं सदफ शम्स, और ये कहना होगा इस मैच का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन शॉट। देखिए पिक्चर परफेक्ट, नी डाउन, ग्रेट स्विंग ऑफ द बैट, और प्लेसमेंट भी कमाल की रही, बैलेंस भी शानदार रहा। बहुत ही बेहतरीन इस मैच का सबसे बेहतरीन शॉट। रिस्ट वर्क उनका लाजवाब था। इनकी जो रन बनाने की औसत है वो पहले ही मतलूबा औसत से ज़्यादा है, और पावर प्ले में ऐसा होना भी चाहिए अगर आपको मुखालिफ टीम से 2 कदम आगे रहना है। इसलिए सिद्रा इस वक्त खुश होंगी। ये सिद्रा नवाज हैं बाएं जानिब जो विकेट कीपर हैं, और ये सिद्रा अमीन है दाएं जानिब आपकी स्क्रीन के जो कैप्टन है स्टार्स की। कोशिश तो कर रही हैं फातिमा सना की विकेट हासिल की जाए, लेकिन बहुत ही समझदारी से बैटिंग कर रही हैं। बॉल का इंतज़ार कर रहे हैं कि ख़राब बॉल किया जाए, उनकी जोन में बॉल किया जाए जिसको वो ज़ोरदार हिट मारे। अब देखना होगा कि कैसे कब कितनी जल्दी फैसला करती हैं कि दूसरी जानिब से भी स्पिनर को लाया जाए। सईदा अरूब शाह जो लेग स्पिनर हैं वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है, और वो कब लेके आती हैं ये फैसला उनको करना है, क्योंकि इस पार्टनरशिप बहुत ही खतरा बनती जा रही है कॉन्कर्स के लिए। आखिरी गेंद मुमकिन तौर पर फातिमा के स्पेल की होगी। अच्छा बाउंसर उन्होंने किया, सदफ ने इसे छोड़ दिया। पावर प्ले यहाँ पर तमाम हुआ, स्टार्स ने बनाए 35 किसी नुकसान के बगैर। यहाँ 35 रन बगैर किसी नुकसान के। पावर प्ले यकीनन अब स्टार्स के नाम रहा है, बहुत अच्छे शॉट्स देखने को मिले हमें। थोड़ी ख़राब बॉलिंग ने भी उनकी मदद की, लेंथ में चूंकि फास्ट बॉलर हमना बिलाल ने थोड़े बाउंड्री डिलीवरीज बहुत आसानी से दी, और दूसरी जानिब बैटर्स तैयार थे किसी भी ख़राब बॉल को बाउंड्री तक पहुँचाने के लिए। और ये आखिरी शॉट जिस तरीके से अथॉरिटी दिखाई है सदफ शम्स ने, बहुत ही कमाल का ये शॉट। और अब खतरा है कॉन्कर्स के लिए। नशरा संधू अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग जारी रखेंगे। ऑफ साइड 5 फील्डर हैं जिनमें एक को स्लिप में रखा गया है, कोई भी बाउंड्री राइडर नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो खवातीन बैटर्स हैं उनमें हिटिंग का रुझान लेग साइड में ही रहता है।
अंपायर ने इशारा दे दिया है कि फील्ड इस वक्त खोली जा सकती। वापस आते हैं उसी पॉइंट की जानिब कि पाकिस्तान जो है वो नई गेंद एक एंड पर स्पिनर से कराता है। सादिया इकबाल जो हैं वो नई गेंद शेयर करती हैं ज़्यादातर फातिमा सना के साथ। तो अगले साल जो वर्ल्ड कप है 50 ओवर का भारत में है, स्टंप्स को ये छोड़ती हुई जाती लेग की तरफ, तो वहाँ पर तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये चल सकता है। गो के पाकिस्तान के जो मैचेस हैं न्यूट्रल वेन्यू पर एशिया में ही होंगे, लेकिन जब एशिया से बाहर पाकिस्तान टीम को जाना पड़ेगा। और ये स्टंप हो गए, अपनी क्रीज से आगे निकल आई थी सोहा और उन्हें फ्लाइट में ही बीट किया। टर्न भी मिली नशरा को और अच्छी विकेट कीपिंग अलवी की। यही एक्सपेक्ट किया जाता है, नशरा से बहुत ही समझदार बॉलर है, अपनी पेस को वेरी करती हैं, अच्छी स्टंपिंग भी। जैसे आपने कहा नजीर अलवी की जानिब से शायद इसकी ज़रूरत नहीं थी, अभी थोड़ा वक्त और ले सकती थी सोहा, कदमों का इस्तेमाल किया, बहुत ही आगे आ गई और अपनी पेस से बीट किया, टर्न भी मिला नशरा को। लेकिन ये देखना है कि जो नजिया अलवी थी क्या इन्होंने कलेक्शन जो है वो स्टंप्स के सामने से तो नहीं की। यहाँ ये अंपायर देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने सामने से की है तो फिर आउटशुमार ही होगा, क्योंकि इनने गेंद को आने दिया था, गुजरने दिया था स्टंप से, इसलिए कलेक्शन की टाइमिंग बिल्कुल सही। और उसके बाद स्टंप से उड़ाने की भी पहली विकेट गई सोहा ने बनाया 13, 35 पर 1। प्रमोशन मिली है सिद्रा नवाज भट्टी को, 146 रन, 250, 62 इनका हाईएस्ट स्कोर है। सिद्रा अमीन ने अपने आप को पीछे रखा है, शायद वो चाहती हैं कि जब मेन स्पिनर्स आए तो वो खुद फेस करें उनको जाके, यही प्लान हो सकता है। लेकिन मेन स्पिनर नाश्ता तो बॉलिंग कर रही है और एक विकेट भी हासिल कर चुकी हैं, करीबी मामला हो सकता है ये। जी हाँ, उंगली फिजा में बुलंद की अंपायर ने और यहाँ पे बैक टू बैक विकेट्स नशरा की जानिब से। ये बेहतरीन बॉल था, तो वो प्रमोशन सिद्रा नवाज की ज्यादा काम ना आ सकी स्टार्स के। यहाँ पर ज्यादा खुश नहीं है सिद्रा नवाज और हैट्रिक पर आ गई हैं नशरा। उनका यह ख्याल था कि गेंद लेग स्टंप को मिस करती, लेकिन ये लगी थी मिडल और ऑफ स्टंप पर, इसलिए अंपायर के जहन में कोई शुबा नहीं। सिद्रा नवाज सिर्फ एक ही गेंद खेल सकी, 35 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं था, 35 पर 2 हैं। कप्तान सिद्रा अमीन अब क्रीज पर आए हैं, 9 मैचेस में 254 रन, 86 की स्ट्राइक रेट के साथ बना रखे हैं, एवरेज 42 की है। काम नहीं आ सका, वो तजुर्बा कामयाब नहीं हुआ सिद्रा नवाज को ऊपर भेजने का, शायद उसकी तारीख भाई जरूरत भी नहीं थी। अब अपने रेगुलर बैटर्स के साथ जाते हैं, क्योंकि बेहतरीन बॉलर तो ऑलरेडी बॉलिंग कर रहे हैं, तो ज्यादा चांस बेहतर होता है कि सिद्रा ही नशरा को फेस करती। हैट्रिक पर हैं कल, यहाँ 2 दिन पहले यहाँ पर हैट्रिक हुई थी। नूरपुर लायंस के जो बॉलर हैं आफाक अफरीदी, उन्होंने अपने पहले ही T20 मैच में डेब्यू पर हैट्रिक की। नशरा क्या इस कौमी वनडे टूर्नामेंट के फाइनल को यादगार बना सकती हैं हैट्रिक से? अच्छा खेला, सीधा कप्तान सिद्रा अमीन ने सीधा खेला हैट्रिक।
की चाल को नाकाम बनाया। ये स्टंपिंग, गेंद को टर्न किया और उसके बाद ये टर्न के लिए खेली थी, लेकिन ये आम बॉल थी। फाइनल की जानिब ये गेंद निकल खड़ी हुई। 2 रन का और इजाफा। ये ओवर जो कि डबल विकेट मेडन हो सकता था, अंपायर की तरफ से इशारा नहीं आया, जिसके मानी ये है कि ये मेडन नहीं शुमार होगा। 10 ओवर के बाद 37 पर 2। दाएं हाथ से ऑफ स्पिन बॉलिंग करती हैं महानूर आफ्ताब। पवेलियन एंड से इनको मौका दिया गया है। अपने करियर में 7 मैचेस खेले, 13 विकेटें हैं, एक बार 5 विकेट भी हासिल कर चुकी हैं महानूर। कुछ बताइए, पिच का जो रवैया है वो बदला, क्योंकि हम 56वें ओवर में दाखिल हो रहे हैं इस मैच में। देखिए अच्छा पिच खेला है, बल्ले पे बॉल अच्छे तरीके से आया है और ऐसा ही पिच आपको चाहिए जहां पे बल्ले के ऊपर बॉल अच्छे तरीके से आए, इवन बॉल आए, और ऐसा ही हमने इस पिच पे देखा है। कंडीशंस की वजह से सुबह थोड़ा गेंद हिला जरूर था, लेकिन उसके बाद से बहुत अच्छा सेटल इन हुआ है ये पिच, और अब तो बैटिंग के लिए बहुत साजगार है। और अब देख सकते हैं जिस तरीके से सदफ बैटिंग कर रही हैं, जो 2 विकेट्स गिरी हैं उसमें एक में तो बैटर की गलती थी सोहा फातिमा, और दूसरा कमाल था नाशा संधू का, जैसे सिद्रा नवाज को उन्होंने स्मार्टली बीट किया और LBW हासिल किया। लेकिन जैसे आप सदफ शम्स बैटिंग कर रही हैं, आपको देख के लगता है कि एक प्रॉपर बैटर खेल रहा है जिसको कोई मसला नहीं है पिच से, हर बॉल को मैरिट पे खेल रही हैं, और यही चाहिए इस वक्त स्टार्स को। यहाँ जो सिद्रा अमीन क्योंकि नई पहुंची हैं विकेट पर, इनके लिए जो ऑफसाइड स्वीपर है ये उनको भी बुला सकती हैं इस वक्त दायरे के अंदर। ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रही हैं, क्योंकि आसानी के साथ यहाँ पर शुरू में 1 रन नहीं देना चाहिए। ये बड़ी अहम पार्टनरशिप हो सकती है, और जब आप इतना ज़्यादा टर्न कर सकती हैं तो आपको और हौसला अफजाई करनी चाहिए कि अगेंस्ट द टर्न जाएं खेलने को कवर्स की जानिब। जहाँ एक अंदाज़ा बिल्कुल हो सकता है ऐसे, लेकिन सिद्रा अमीन जो है वो रिवर्स हिट भी बहुत अच्छा मारती हैं, अपनी इनिंग के शुरू में ही बहुत अच्छा खेलती हैं। क्या वो चीज़ भी शायद कप्तान के जहन में है, लेकिन यहाँ पे इनको शायद अपना तौर तरीका बदलना होगा। सिद्रा अमीन को थोड़ा लंबा खेलना होगा, लंबी इनिंग खेलनी होगी टीम के लिए। 11 ओवर्स के बाद 38 पर 2। मिसबाह हक की अहलिया हैं। अच्छा लग रहा है, पुराने क्रिकेटर्स की जो फैमिलीज हैं, ऑफिशियल्स की फैमिलीज, वो यहाँ आई हैं हौसला बढ़ाने के लिए। ये पार्टनरशिप जो है ये कितनी कलीदी है। इसके बाद वहीदा अख्तर हैं, कायनात हफीज बैटर करती हैं, वो बैटर्स में शुमार होती हैं। तोबा हसन खेल सकती हैं, लेकिन ये जो 2 हैं इनका ज़्यादा तजुर्बा है, ख़ासतौर पर सिद्रा अमीन का, इसलिए मिसबा भी जानते हैं इस विकेट की अहमियत को। ये सबसे अहम पार्टनरशिप है। अभी जैसे आपने कहा कि तूबा भी बैटिंग कर लेती हैं, कायनात हफीज प्रॉपर बैटर हैं जो कि अभी आने वाली हैं। आई थिंक वो जो इनका तजुर्बा था सिद्रा नवाज को ऊपर भेजने का,
वो शायद इनको महंगा साबित होगा, क्योंकि सिद्रा नीचे आके अच्छी बैटिंग करती हैं। 5वें 6ठे पे अगर आप उनको रखते तो ज़्यादा बेहतर था, और आपने उनको भेजा आशा संधू के सामने फेस करने के लिए, तबकि सिद्रा अमीन को खुद फेस करना चाहिए था उनको। अब उस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए इस पार्टनरशिप को लंबा जाना होगा। इस वक्त 3 ही आउटफील्डर हैं, तीनों लेग साइड में हैं। लॉन्ग ऑन पर फातिमा सना है, डीप मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग है। फातिमा सना दरअसल ये मिड विकेट पर चली आई, स्लिप में रहा था। अच्छी कप्तानी कर रही हैं, वो जानती हैं इस पार्टनरशिप की अहमियत को। स्लिप रखी है, खुद स्लिप में मौजूद हैं, चाहती हैं कि इस पार्टनरशिप को तोड़ा जाए जल्द से जल्द। 12 के बाद 39 पे 2। दोनों एंड पर स्पिनर्स जो हैं वो अपनी छाप छोड़ने में अभी तक कामयाब रही हैं। पहली इनिंग्स में भी स्पिन के सामने इतना आसान नहीं रहा था, और बड़ा इंतजार होगा स्टार्स की कामयाबी का कि वो स्पिन के सामने उनका कैसा हुनर है। और शॉट गेंद थी, जोरदार शॉट खेला, लेकिन रन एक ही मिल सकेगा। सिद्रा अमीन इनिंग्स छोटी छोटी खेली है इस टूर्नामेंट में, लेकिन बड़ी इनिंग अभी तक नहीं खेली है, और यहाँ पे मौका बहुत अच्छा है, और इनमें वो पोटेंशियल भी है। हमने बहुत बार देखा है जब ये 100 करती हैं तो ये बड़ा 100 करती हैं। 160 रन इन्होंने आयरलैंड के अगेंस्ट एक बार किए थे कदाफी स्टेडियम लाहौर में, इसलिए ये बड़े बड़े मैच की प्लेयर हैं, और यहाँ पे टीम को भी जरूरत है, और अच्छा साथ निभा रही है सदफ का। और ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस है, ये इतनी उम्मीदें थी यहाँ पे सदफ शम्स से, और सीधा ही कैच महानूर के हाथों में दे बैठी हैं। ये बहुत बड़ी विकेट है इस मैच की। एक बड़ा पुराना सबक दिया जाता है बल्लेबाजों को कि स्पिन को आप स्ट्रेट ड्राइव ना खेलिए। सदफ ने वही गलती की, और जम जाने के बाद अपनी विकेट से हाथ धो बैठी। अच्छा कॉटन बोल्ट किया महानूर ने। यहाँ 6 रन के इजाफे में ये तीसरी विकेट चली गई है। इसे सॉफ्ट डिसमिसल हो नहीं सकता था। जब आप सेट होके आउट होते हैं तो ज्यादा दुख होता है, शायद यही डिसअपॉइंटमेंट लेके वापस जाएंगे सदफ शम्स 22 रन बनाकर 41 पर 3। इस कौमी वनडे खवातीन चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा विकेटें उड़ाई हैं रामीन शामीन ने अपनी ऑफ स्पिन के जरिए, लेकिन यहाँ बल्ले से ज़रूरत है उनकी टीम को इस वक्त। क्या वो ये नंबर 5 की जो पोजीशन है इससे इंसाफ कर सकती हैं? अभी भी लंबा सफ़र तय करना है। 138 रन उनको बनाना है, और ये जो 179 का हदफ है ये अब कुछ बड़ा लगने लगा है। एक और प्रमोशन मिली है, डबल प्रमोशन है आज तो स्टार्स की टीम है। रामीन शामीन सिर्फ 81 रन बनाए हैं, और जैसे आपने कहा ये बॉलिंग की इनकी जो वजह शोहरत है, और यहाँ पे कायनात हफीज और इवन तूबा हसन से इनको ऊपर भेजा गया है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन शायद बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे।
लेकिन फिलहाल लेफ्ट हैंडर की आमद का महानूर बिल्कुल बुरा नहीं मनाएंगी, जिन्होंने अभी अभी विकेट ली। इस बार लाइन ज़रा सी तब्दील की थी लेकिन लेंथ बिल्कुल नहीं। वहीं से ड्राइव हवा में खेल बैठी। आसानी के साथ रन्स दस्तयाब नहीं हैं दायरे के अंदर। वहाँ पर तूबा मौजूद थी। एक और अच्छा ओवर पिछले की तरह, इसमें भी सिर्फ 2 ही रन्स बन सके और विकेट भी 41 पर थी। स्पिनर्स को कामयाबियां मिली हैं यहाँ पे। दोनों नाशरा और महानूर ने विकेट्स हासिल किए हैं। 2 नाशरा संधू ने और 1 महानूर ने। दोनों जो पेस बॉलर्स हैं फातिमा और हमना बगैर विकेट के रहीं। 13 के बाद 41 पर 3 और अब हम बॉलिंग में चेंज देख रहे हैं। दुआ माजिद को बॉलिंग के लिए लाया गया है। आज जिन्होंने बैटिंग में इनिंग्स का आगाज किया था और अच्छा खेलने में कामयाब हुई, 4 विकेटें हासिल की हैं अपने करियर में। पहली गेंद पर ये हाफ पुल हाफ स्वीप शॉट था लेकिन रन्स पूरे आए। 4 लाइन मिल गई थी ये शॉट लगाने के लिए सिद्रा अमीन को, जो कि स्पिनर्स पर हमेशा खुलकर खेलने के लिए जानी जाती। और स्क्वायर ऑफ द विकेट भी बहुत अच्छा खेलती हैं। स्वीप हो, कट हो, रिवर्स स्वीप हो, स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छा खेलती हैं। इसलिए इस सिचुएशन में इनसे बेहतर बैटर हो नहीं सकता है। इसलिए लेकिन इनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना होगा, लंबा खेलना होगा। और डिफेंस भी अच्छा है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंधों पे। सॉलिड खेल रही हैं, जानती हैं अहमियत को कि अपनी विकेट कितनी ज़रूरी है यहाँ पे इनके लिए। काफ़ी सीरियस लुकिंग शुएब मलिक। मेंस की टीम तो इनकी फाइनल में पहुंच गई, एक एंड तो इनका सुकून में है। यहाँ कल दूसरी फाइनलिस्ट का फैसला होना है यहीं रावलपिंडी में। इस वक्त धूप जो है ये अब निस्बतन गर्म हो रही है। मौसम सुबह के मुकाबले में अब क्रिकेट के लिए ज़्यादा साजगार है। एक्शन देख लेते हैं। अच्छा स्वीप किया। ये हम बात करते कि ये स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा खेलती हैं, लो रह के बैटिंग करती हैं। 14 गए 46 पर 3। That's true, but have protection. Sidra Amin. The skipper has to take the responsibility. Ramin can be handy as well. He's got control to nudge around for singles. Manu Raftab, another good prospect. He was the captain for under 19 when they played
the Tri-Nation in January, just the start of this year. Tossed up this, inviting Ramin to go for that drive. Important partnership. 3 quick wickets have fallen. Opening partnership of 35 runs, and then within 6 runs, 3 wickets fell. They're in desperate need of another partnership, the Stars. Can't have a better person than Sidra Amin to rescue this situation. Ramin also pretty experienced. Yeah, Sadaf and Soha, they looked good. He couldn't really capitalize on the starts. Promoted Sidda Nawaz. Again tossed up this, inviting her to take the challenge. Sidda Nawaz was gone or not. Now these two have some work to do. Got Kainat Hafiz as well. Hurana can bat. Wahida Akhtar can hit. Tuba Hassan and Usha Nasir, they've got plenty of batting to follow, but the only thing is they need to keep that strike rate under check. Just one coming off this over from Manur. 47 for 3 stars. Well, it's time for drinks. This is how the thing started for Stars, chasing the target down. Good start up the order by Sadaf and Soha. 22 for Sadaf, Soha scoring 13. Nawaz gone cheaply. Sidra Amin and Ramin out in the middle now. Three wickets. Nashra Sandhu
built the pressure, bowled the dots, and then got back-to-back wickets. This one is a big one, Sidra Nawaz, and then the third wicket, Sadaf Shams, who's looking good. All these 3 wickets fell within 6 runs of each other. You see those figures of Nashra Sandhu, 4 overs for 5 runs and 2 wickets. Started off with a maiden, then the pressure built. She picked up a couple of wickets and in the process helped Manur to pick up a wicket as well, who herself has bowled pretty tidily. 4 runs of her 3 overs. Fatma Sana has plenty of options and resources as far as bowling is concerned. Dua to continue. She's playing it away from the body. She's standing probably, I think, little. If you look at it, it's not on leg stump, but it's below leg stump. Sidra Amin likes to sweep the ball. Just look where she's standing. Again, away from the body. They've got sweeper protecting it. She got a run on this delivery. Probably she could have done more, but have a look at this one. Look at her feet, her hands. She just throws the bat at it. That's why it's very difficult to control it from there, although she thumped it from the middle of the bat, but straight to the fielder. She got herself into better position. She will be able to find the gaps. She's a natural sweeper of the ball. She likes to do that. She's got slog sweep as well. So if you got those shots in your arsenal, you would like to stay in front of stumps and probably make the bowler bowl at you. Dua is not a big turner of the ball, but what she can do is just probably keep bowling within the stumps, and that's where you can extract runs. Looking into the gap for a single. Yeah, Sidra Amin is a very powerful player. Probably one of the most powerful players in Pakistan women's team. But like you said, she's not getting herself into good positions. Well, familiar face, Mrs. Misbah Haq. It's a cricketing household, I hear. All the talk in the household is about cricket. Obviously, we know about Misbah, but the missus and now their son representing Pakistan under 19. It's all cricket in that household. Just nudging it down to the third, guiding it. Should race away. Oh, Roop Shah, probably the best one who could have pulled it back, but wasn't able to do so. 4 runs. And the valiant chase, if anyone could, Urub would have, but that outfield is deceptively quick. Have a look at this again, not much pace, but she ran it down, just found the gap and just a yard, I won't say slow, but yard behind the pace of the ball. The ball was too quick. 16 gone, 53 for 3. Things have slowed down in terms of the chase. 126 more required. Fatma Sana got plenty of resources. Dua Majid already bowling. Fatma Sana herself has taken the responsibility. Aroop Shah yet to come. Hamna Bilal, Nashra Sandhu with those 2 wickets. It's interesting to see how Aroop Shah will come with some leg spin. Hafsa Khalid can also be handy. I doubt that she might need it. Manur Aftab has been economical. The required run rate is still 4.34, so it's not out of hand just yet. The partnership here would really give Stars an opportunity. Juicy full toss.
feel Ramin could have done more with it. She's happy with the single. Yeah, she's sort of a better who can nudge around for singles. The only area she might probably get a boundary is towards that deep mid-wicket area. Otherwise, she's happy to give strike back to Sidra Amin. Down the track. Slowed it through the air. Manur is a very intelligent bowler. Good change of pace. She saw Sidra coming, pulled the length back. Sidra is looking to be proactive. Mid-wicket is the only fielder in the ring on the onside. Yeah, when you look at Sidra Amin, she likes to slog. That's why they've got probably straightish deep mid-wicket. A lot of protection into the leg side. But again, I'm not sure that that's her preferred area, and that's probably you would like to target Manur and even Dua, but yet she prefers to stay leg side-ish and opening that offside, which is not her strength. That's into her zone. She'll pick up. But Sidra Amin, generally a very strong bottom-handed player. You'd feel if we had the opportunity to see her career wagon wheel, you'd see certain areas, square of the wicket on the offside is her strength, behind square, and then that sweep shot too. Very little down the ground. That's why she can get herself stuck at one end sometimes. 17 gone, 55 for 3. Good to see people coming in, especially children and families out here to support women cricket. It's the final, the ultimate battle. Arup Shah, change in bowling, some leg spin. She can be quick through the air, but the only problem is she has that tendency to bowl short at times. Yeah, wrist spin is one of the most toughest art to master. Sidra Amin look to pounce on any opportunity that is provided to her by Arup. She started off with a nice flighted delivery. It'll be important that Arup doesn't give her any freebies. That would really make the pressure build on Sidra. Happy to defend it. Arup Shah can be quick through the air. She can turn the ball, and I've seen her do it with some power and speed. That can be deceiving. She's very tall and got a good pivot as well. If you're a leg spinner, you have decent amount of consistency and you're able to turn the ball. It'd be a handful. This is a powerful sweep, but the field is well set by Fatma Sana. It's a little bit of a heated exchange between Arup and Sidra. They're both very tough competitors. She's a character. Arup Shah likes to take on the challenge. Always has a lot of confidence on herself. A fighter. So you'll expect that. Whenever she's around, you'll expect something happening in the middle. Oh, this is sloppy. A regulation stop. She's lucky that there is sweeper behind her.
Have a look at this. Yeah, Arub. She's a competitor. She can come up to you and say something just to poke you. I thought they might have run into each other, but Sidra avoided her by a long way. That's interesting. Keep an eye on this battle. Yep, more aggression. It's very good to see. She's done that at international level as well. And I'm sure the only thing she would have said to Amin was to go and sweep me as hard as you can. I know she put up a challenge to her. And she's doing it so far. And I think it will be a boundary. She's not happy, Arup Shah, with the effort. She'd also need to realize that everyone else is not as good a fielder as she is. 18 gone. It's 61 for 3. Sidra Amin too good at that occasion. That's where her strength is. Just waited for the ball. Knew exactly where the fielder was. And did well to roll the wrist to beat it. This is brewing into a good contest now. Ramin is doing her part, trying to rotate the strike. Sidra has got herself on a roll now, 20 of 28. And Fatma Sana realizes she's in the middle of the fight, because they need to break this partnership. If you allow Sidra Amin to bat for any length of time, you wouldn't know and the game would go away from you. Manur just giving no pace whatsoever. Sidra Amin, normally she's more attacking than this, but right now that's the situation in which she has walked herself in, taking more responsibility. Cut through, and that will beat the fielder. Got enough legs to roll to the boundary. You can't afford to give this much room to Sidra Amin. And it was short as well. Double trouble in terms of line and length from Mahanur. And Sidra is a powerful player. It's a strong punch. All she needed to do was to hit the gap, which she did, and after that you'll get full value for strokes. This is once again wide. Did she get something on it? It won't matter in terms of the result. Yep, she did get a tickle. Back-to-back boundaries for Sidra Amin. Manur, just overcorrection coming in on that occasion, straying down the leg. Previous one was outside off, so she's experienced enough. She's young but experienced enough to understand what the lines and lengths should have been. The previous one was short and wide, asking for trouble, and so did this one. And we've seen even with Ramin and Manur, both off-spinners, they prefer having 5-4 field. This is like giving invitation to the batter. You can go either side of the wicket for a boundary. The length has been the problem in the last two deliveries as well. You can't allow that much time to Sidra. This is good fielding in the ring. Excellent work. Saving grace for Mahanur, because this was headed to the boundary. Samia had done well. The young girl, 13-year-old. Excellent work in the field. Good over for Stars though. 19 gone, 71 for 3. Arup to continue. 6 off her first over. The battle is on. Sidra Amin has played enough cricket. These two with Arup. Ramin belongs to Karachi, and so does Arup Shah.
They know each other's strengths and weaknesses. I want to watch this now. Roop Shah to Sidra Amin. She got a boundary on the last ball of last over, which Roop wasn't happy. This is a big wicket. It's just the length. She's quite comfortable off that, Sidra Amin. Aroob, she can give some air, has that cushion of fielder as well to cover it. But what you want with Sidra on in middle is to invite her to play off on the front foot rather than off the back foot. She's quite comfortable doing that. Even Ramin as well. That's good areas for the lefty. Leg spinners, like I said, it's a difficult art. If she gets into her spell, probably she will challenge Sidra with those flighted deliveries. But at the moment, looks like she's finishing her action better to the left-hander. That's again well pitched up delivery, inviting the drive. It seems like, especially in terms of the pivot, the follow through, as you mentioned, it's more natural against left-handers. I would like to see more pivot from her, because then she can add more rivs to her bowling. No run there. They've got tight fielding around the batters. Nice steady run up, still head. Look at that back leg in the pivot. There's a lot of good things about this action. No run again. It's good bowling and good captaincy, just nudging down the singles there. Yeah, the only thing I was talking about, everything is fine, just a pivot. Look at that front foot, no pivot at all. And normally with leg spinners, you want that, so that you can give your body a bit of turn to get more revs on it. At the tip of the left shoulder. This is off the edge. It will run away. Not a bad delivery, but Ramin will take the boundary. That will finish the over with a boundary again. Stars moving along pretty smoothly. 20 done, 76 for 3. Well, this partnership is brewing slowly. 35 of 44 between the skipper Sidra Amin and Ramin Shamim. Both are experienced enough to steer Stars in order to chase it down. Plenty of batting to follow. Kainat Hafiz, Huraina, Tuba can bat. Wahida and Anusha can bat. They need a partnership breaker, Conquerors. And here she is, Nashra. Yeah, the introduction of Nashra would tell that Fatma is now getting a bit worried. She wants this partnership broken, and she's brought her star left arm spinner. Look at those figures. Wow, 2 for 5 and 4.1. This is absolutely sensational. Oh, beauty there from Nashra. Just giving her enough air. Bit of turn, and lucky for Sidra, it didn't hit the off stump. How good was that? How beautiful was that? It looks like she just hung the ball there in the air. It remained there forever. And then when it landed, it sharply turned. And again, bit of turn there. This is beautiful from Nashra Sandhu. The flight,
like I said, it felt like the ball hung in the air forever. But then when it got closer, it dipped and turned so quickly. And again, she's inviting in, teasing Sidra Amin. And you can see Sidra walking away from the stumps to get a breather, give herself a reminder that you don't need to fall into the trap. That's good cricket. Sidra probably will be realizing that Nashra has been brought in to take a wicket. And she'll make sure that she doesn't give him that wicket. Conquerors desperately need wicket. Yeah, there's the action. You can see the pivot. The front foot, that's important for a spinner. And probably with the same action, she can fire it in with that arm ball. Almost there. Tossed up. Went straight down the ground, Sidra Amin. Didn't carry though. But a maiden over. 76 for 3. A lot of conversations going on. Fatma is a very proactive captain, a thinking captain leading Pakistan. Has some work to do here as well in terms to break this partnership. आज मतला जो है दोपहर के बाद अब आलूद रहा है। धूप अब वैसी नहीं रही जो पहली इनिंग्स में थी, लेकिन स्टार्स की टीम ने यहाँ पर अच्छी वापसी की है इस मैच में। एक मौके पर 6 रन्स पर उनकी 3 विकेटें गिर गई थी। उसके बाद कप्तान सिद्रा अमीन ने रामीन के साथ मिलकर अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाया है। हालांकि रफ्तार इतनी तेज नहीं रही, लेकिन इसको जो हदफ है वो इनकी पहुंच में है। यहाँ विकेट की जरूरत है फील्डिंग टीम को। सलमान जी हाँ, जिस तरह फील्डिंग टीम को विकेट की ज़रूरत है, उसी तरह बैटिंग साइड को एक बड़ी इनिंग की ज़रूरत है, बड़ी पार्टनरशिप की ज़रूरत है। और इनका दारोमदार बहुत हद तक अपनी कप्तान सिद्रा अमीन पर है, जो इस टाइम सेट खेल रही हैं, 30 रन पे हैं और काफ़ी अच्छे वक्त में इन्होंने 30 रन बनाए हैं। 40 बॉलें सिर्फ इन्होंने खेली हैं और इनसे जुड़े हैं स्टार्स के जो चांसेस हैं सिद्रा अमीन की बारी से जुड़े हैं बहुत हद तक। तोबा हसन ने पहली इनिंग्स में जब लेग ब्रेक बॉलिंग की थी तो उनको विकेटें मिली थी। यही तवक्को सैयदा अरूब शाह से भी है, मिसबाह उल हक को और फातिमा सना को। बार बार फ्लाइट दे रही हैं, बाहर से बाहर टर्न करने की कोशिश थी। अच्छी इनिंग्स के लिए सिद्रा अमीन ने, क्योंकि नॉकआउट मैचेस में रन चेज में जो दबाव है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। आप सफोकेट होना शुरू कर देते हैं। अच्छी डिलीवरी, बाल बाल बची, स्ट्रेच करना पड़ा। बहुत ही शानदार गेम था ये। ब्रेक हुआ और बीट किया आउटसाइड एज को, ये देखिए इन ड्रिफ्ट और उसके बाद बहुत शानदार स्पिन। अच्छी फ्लाइट के साथ बॉल कर रही हैं रूपशा। सिद्रा अमीन एक सेट बैटर हैं, उनको बीट करना इतना आसान नहीं। देखिए एक बार फिर राइट चैनल में बॉलिंग कर रही हैं लगातार और इसके साथ ही ये 22वें ओवर का खेल खत्म। 77 पे 3।
नशरा संधू, जिनने 5 ओवर्स में सिर्फ 5 रन दिए, सबसे कामयाब बॉलर हैं 2 विकेटों के साथ। यहाँ ये पेस के मुतालिक भी सोच सकती थी। हमना बिलाल ने अभी सिर्फ 2 ओवर्स किए हैं, क्योंकि स्पिनर्स पर बल्ला रवा हो गया है, रामीन और सिद्रा अमीन दोनों का। एक एंड पर सलमान, क्या ये जायज़ बात है कि पेस को वापस लाएं ताकि कुछ मुख्तलिफ करना पड़े बल्लेबाजों को? जी हाँ, इससे पहले कि कुछ ज़्यादा देर हो जाए, एक ऑप्शन तो है कि तेज़ गेंदबाजों को वापस लाया जाए और विकेट लेने की कोशिश की जाए और एक एंड से थोड़ी सी तब्दीली भी लाई जाए, बिकॉज ये बिल्कुल अब कोई किसी किस्म का मसला दरपेश नहीं है इनको स्पिनर्स के खिलाफ। सिर्फ अरूप शाह के जो गेंद ब्रेक हुए हैं वहाँ पर थोड़े से कह लीजिए कि बैटर्स के लिए थोड़ी परेशानी हुई होगी। असद शफीक जो कि सिलेक्टर भी हैं और विमेंस भी शायद सिलेक्शन कमेटी को ये हेड कर रहे हैं। और ये अच्छा शॉट गैप में था, फील्डर की सरतोड़ कोशिश लेकिन नाकाम। 4 रन। सिद्रा अमीन स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। यह पिच जो है और ज्यादा अच्छा खेल रही है, कोई मुश्किल पेश नहीं आई, बैकफुट पर गई, थोड़ी सी जगह बनाई, शॉट में खासी फोर्स थी जिसके सबब कवर्स की फील्डर मात खा गई, पूरी तरह झुक नहीं सकी, रुकनी चाहिए थी गेंद। फिर से बहुत आहिस्ता गेंद की, एक रन का और इजाफा। ये आदी हो गई हैं दोनों ही बल्लेबाज, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेल रही हैं, इसलिए कुछ मुख्तलिफ करना होगा। शुएब मलिक इस मरहले पर काफ़ी खुश होंगे इस पार्टनरशिप के ज़रिए जिसमें 42 रन बने। मेंटोर हैं स्टार्स के। सलमान बताइएगा, पाकिस्तान की जो विमेन टीम है ये अभी वर्ल्ड कप में उसने श्रीलंका को हराया था, उससे पहले भी भारत को पाकिस्तान ने शिकस्त दी वर्ल्ड कप में अभी कुछ बरस पहले। टीम जो है ये विक्ट्री स्टैंड की तरफ बड़े इवेंट्स में कैसे आ सकती है? यहाँ पर खेलों के कल्चर को फ़रोग देना होगा हमें। ओवरऑल अगर आप ख़वातीन के हवाले से बात करें तो इंस्टीट्यूशंस में, स्कूलों में हमें इनके लिए फैसिलिटीज़ बनानी होंगी और डेडिकेटेड फैसिलिटीज़। एक कल्चर जब स्पोर्ट का आएगा एक छोटी उम्र से, तो फिर आप देखेंगे कि उस विक्ट्री स्टैंड के ऊपर पाकिस्तानी प्लेयर्स भी नज़र आएंगे, पाकिस्तान की टीम भी नज़र आएगी, एक प्रोसेस पूरा बनेगा। हमारी पाथवेज में कुछ कमियां कोताहियां हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है इंस्टीट्यूशन लेवल पे। सारा कुछ आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या किसी एक स्पोर्टिंग फेडरेशन पे नहीं डाल सकते। मेरा ख्याल है कि ये तो हुकूमतों की तरफ से ये पॉलिसीज़ आती हैं कि जिसमें इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो खेलों को करिकुलम का हिस्सा समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो आज भी इसको एक्स्ट्रा करिकुलर इजाफी एक एक्टिविटी के तौर पे जाना जाता है। मेरा ख्याल है कि क्लासरूम्स के साथ साथ जो एजुकेशन ग्राउंड एक इंडिविजुअल को देते हैं वो अपनी हैसियत आप रखती है और एक कह लीजिए कि आप में बहुत सारी वो वाली चीज़ें पैदा करती है जो शायद क्लासरूम्स नहीं कर सकते। फिटनेस के कल्चर को आम करने की ज़रूरत है, खेलों के कल्चर को आम करने की ज़रूरत है, ग्राउंड्स बनाने की ज़रूरत है और ये टैब्स और ये मोबाइल फोन्स इनसे काफ़ी हद तक जान छुड़ाने की भी ज़रूरत है। अरूप शाह अराउंड द विकेट, लेफ्ट हैंडर को अपने सानवी किरदार में अभी तक खेलती हुई नजर आई हैं रामीन, लेकिन ये जो बाएं और दाएं हाथ का बैटिंग पेयर है ये खासा कारगर, मुश्किल पेश आ रही है इन स्पिनर्स को इनसे छुटकारा पाने में। इसलिए मिसबा जो हैं या बेचैन नजर आने लगे इस वक्त।
सामने स्लिप आ जाओ, सामने स्लिप आ जाओ। दूसरी जानिब शोएब मलिक जो हैं वो इस वक्त ज़्यादा मुतमईन है। मिसबाह का ख्याल है कैचर करीब होना चाहिए। जी हाँ, इस टाइम दोनों स्पोर्ट्स स्टाफ जो हैं उनकी मुकम्मल तवज्जो जो है उनकी टीमों की तरफ है। शोएब मलिक अपने कोचेस के साथ खड़े हैं। मंसूर अमजद बाउंड्री के करीब खड़े हैं, हेड कोच हैं स्टार्स के। दूसरी तरफ मिसबाह हक अपनी टीम को फील्डिंग के हवाले से आइडियाज़ देते हुए नज़र आ रहे हैं। सो चीज़ें स्टेक पर हैं इस वक्त और सभी मुतारिक हैं। रन नहीं मिलेगा, खाली गई और आखिर में सुस्त रवि का फायदा उठाया उनने मिड ऑफ के रन हासिल कर लिया। अगले कदम पर खेली थी, इसे जैसे ही उन्हें नजर आया कि रन हो सकता है भागना शुरू कर दिया तो दबाव जो है झलकने लगा इस फील्ड पर। यहाँ पर दूसरे रन के लिए भी ये वापस जाएंगी। अच्छा शॉट खेला गैप में, उम्दा स्वीप शॉट रामीन का। जी हाँ, एक अच्छा स्ट्रोक और इसके अलावा भी अच्छी स्ट्राइक रोटेशन हमें देखने को मिली है। अच्छी कॉलिंग है, ज़रा सी कोताही पर फील्डर की पूरा फ़ायदा उठाया सिद्रा अमीन ने। वो वैसे भी बहुत अच्छी रनर है बिटवीन द विकेट्स। अगर पाकिस्तान टीम की बेहतरीन एथलीट कहा जाए तो ये गलत ना होगा, जिन्होंने पीछे भागते हुए कैच भी लिया सुबह, जो कि बहुत ही शानदार था। और उनकी इनिंग से जुड़े हैं उनकी टीम के चांसेस, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। 24 ओवर्स के बाद स्टार्स ने बनाया 88, 3 विकेट के नुकसान पे। ये जब यहाँ पानी का वक्फा हुआ था तो शोएब मलिक मैदान में आए थे दोनों ही बल्लेबाजों से गुफ्तगू करने के लिए। यहाँ शोएब मलिक को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनकी साइन लैंग्वेज को भी आप ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, तो इसको क्या एडवाइस होगी इनकी? यहाँ पर तो साफ जाहिर है कि जो उनका एम्फसिस है वो कप्तान के विकेट पे रहने पर है। और बिलाशुबा इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि सिद्रा अमीन ही इनकी बेस्ट प्लेयर है। और इस वक्त अगर उनकी आप बारी देखें तो 36 रन वो बना चुकी हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए ज़रूरी है कि वो आखिर तक क्रीज़ पे मौजूद रहें और 80-90 रन या 100 की इनिंग उन्हें खेलनी पड़ेगी, गाइड करना पड़ेगा अपनी टीम को। और शायद शोएब मलिक के जो इशारे थे वो यही बता रहे थे कि आपने अंदर ही रहना है और बाकियों को इर्द गिर्द अपने खिलाना है और उन्हें गाइड करना है। यहाँ पे हफ्सा ने अपने स्पेल का आगाज़ किया और अगर ये देखिए इधर समीउल्लाह नियाज़ी भी जो है वो भी बैटर से गुफ्तगू में मसरूफ़ है और बता रहे हैं कि किधर बॉलिंग करनी है, किधर फील्डिंग होनी चाहिए और पैगाम भिजवा रहे हैं बाउंड्री फील्डर्स के ज़रिए। इस बार पुल किया है गैप में और कोई चांस नहीं किसी भी फील्डर के लिए कि इस गेंद को रोके। ये 4 रन है, ये कैसी लेंथ थी कि जहां मर्जी इसको स्ट्रोक खेल सकती थी सिद्रा अमीन और परफेक्ट प्लेसमेंट उनकी। स्क्वायर लेग बाउंड्री पे 4 रन हासिल किए। यहाँ लेग साइड का जो इलाका है ये हमेशा से बारावर रहा है सिद्रा अमीन के लिए और ये तो इनायत थी उनके लिए, इस लेंथ की वो हमेशा तलाश में रहती हैं। ये पिच ज्यादा अच्छा खेली है दूसरी इनिंग्स में, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन एक बात जो काबिल गौर है इस पार्टनरशिप में जिसमें अब तक 71 गेंदों में 53 रन बने हैं, सलमान 4.15 की औसत चाहिए और हमने देखा था
कि गेंद जैसे जैसे पुरानी हुई थी, पहली इनिंग्स में वो बाउंड्रीज लगाना इतना आसान नहीं रहा था। क्या दूसरी इनिंग्स मुख्तलिफ हो सकती? जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर सिद्रा अमीन के होते हुए ये एक अच्छी चीज़ है स्टार्स की टीम के लिए कि रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी अच्छी है। और आप देखिए कि जैसे ही उन्हें थोड़ा सा मौका मिलता है, थोड़ी सी स्पेस मिलती है, तो वो तेज़ी से रन बनाती हैं। और जब तक ये हैं, स्ट्राइक रोटेशन का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा आसानी के साथ। और आप देखें कि अब क्योंकि दोनों सेट हैं तो बाउंड्रीज भी आना शुरू हो गई हैं, और कहीं ना कहीं अनकरीब वापस आना पड़ेगा या फातिमा सना को खुद या अपने किसी सीमर के साथ। यहाँ भी 4 ओवर्स बाकी हैं फातिमा सना के। हमना बिलाल वो 7 ओवर्स और कर सकती हैं। खेल की जो रफ्तार है उसको बदलने की जरूरत है फातिमा सना को। अच्छी कप्तान है वो, क्योंकि स्पिनर्स पर कोई मुश्किल पेश हो नहीं रही। स्ट्राइक रोटेशन हो रही है, दोनों खिलाड़ी जो हैं वो हाथ से भी अच्छा पिक कर रही हैं, रिस्ट स्पिनर को और फिंगर स्पिनर्स दोनों को। यहाँ पर विद द स्पिन खेला रामीन ने एक और रन के लिए। 25 ओवर्स के बाद स्कोर लाइन है 96 पर 3। आज इतवार है और यहाँ पर छुट्टी है, इसलिए खासी गहमा गहमी देखी जा सकती है। आसमान पर बादल गहरे होते जा रहे हैं। बारिशें जो हैं आमतौर पर हो जाया करती थी दिसंबर में पंजाब और इन शुमाली इलाकों में, लेकिन अभी तक मौसम सरमा की जो पहली बारिश है उसका सभी को इंतज़ार है, जिस तरह विकेट का इंतज़ार है यहाँ पर कॉन्करर्स को। जी हाँ, और यहाँ पर खेल की शुरुआत के लिए अंपायर को भी किसी चीज़ का इंतज़ार है। शायद अब वो मसला हल हो गया है। रूप अपने 5वें ओवर में अच्छी लाइन पे इन्होंने बॉलिंग की है। आइडियल कॉम्बिनेशन है इस वक्त स्टार्स के लिए, रामीन और सिद्रा का राइट एंड लेफ्ट हैंड। यहाँ रामीन को पहले भेजा गया कायनात हफीज से और ये फैसला उन्होंने सही साबित किया। अपनी उम्दा बैटिंग की बदौलत अपने कप्तान का भरपूर साथ दिया है। और जब लेग स्पिनर आती हैं तो उसमें जो मैचअप है वो भी फिर रामीन का हो जाता है। सिद्ध रामीन वैसे ही स्पिनर को अच्छा खेलती हैं। सिद्रा ने सामने हिट लगाने की कोशिश नहीं की, मिड ऑफ को मुसलसल दायरे में ही रखा है उनके लिए स्पिनर्स पर। किसी चाल में आई नहीं है ये बार बार जो फ्लाइट की जाती। जी हाँ, उन्हें काफ़ी लालच दी गई है, लेकिन कैप्टन इस टाइम कैप्टन इनिंग्स में मसरूफ। इस बार स्ट्रोक खेली उन्होंने, लेकिन सीधी फील्डर के हाथ में काफ़ी ओवर पिच बॉल था, फ्लाइटेड था। शायद इस चीज़ का भी उन्हें एतमाद है, उन्हें पता है वो अच्छी हिट भी मार लेती हैं, तो जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी खासे ओवर्स पड़े हैं, 19.2 ओवर्स का खेल अभी बाकी है। ये देखिए इस बार फिर ड्राइव किया, लेकिन एक बार फिर फील्डर के हाथ में। सलमान, पाकिस्तान की जो खवातीन
टीम है, ये काफ़ी अरसे से खेल रही है। मुझे याद है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने एक टेस्ट मैच खेला था कराची में, ये पिछली सदी के आखिरी दिनों की बात है। ये उम्दा स्वीप शॉट, ये हार्ड स्वीप था जो स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे खेला गया। और ये पुराने कोचेस कहा करते थे कि आपको स्क्वायर लेग अंपायर को निशाना बनाना चाहिए स्वीप शॉट खेलते हुए। वही किया सिद्रा ने। 26 ओवर और सेंचुरी मुकम्मल हुई। जी हाँ, बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूशन इस शॉट का और गैप को पिक किया, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए, और गेंद भी बड़ी अच्छी पिक की, ओवर पेच थी, ऑफ स्टंप से बाहर थी, तो एलबीडब्ल्यू होने का किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। 100 रन मुकम्मल किए इस चौके के साथ और अपनी निस्फ सेंचुरी से सिर्फ 3 रन की दूरी पर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इनका अंदर रहना आखिर तक। 60 रन बाकी हैं और 80 गेंदें, सॉरी 60 रन की पार्टनरशिप हो गई 80 गेंदों में, और अभी 78 रन और चाहिए, खासे गेंद बाकी हैं। 114 गेंदें अभी बाकी हैं। यह 27वां ओवर जारी है। हालात इस वक्त स्टार्स के हक में लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विकेटें गिरी। अगर यह के बाद दिख रहे 2 विकेटें गिर गई इस रन चेज में, कहीं भी अगले 20 से 30 रन में, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जी हाँ, किसी भी रन चेस में बड़ा ज़रूरी होता है कि पार्टनरशिप्स लगें और विकेट्स इकट्ठी ना गिरें। एक बार फिर स्लो एयर में काफ़ी फ्लाइट और रूम दिया, और उनकी कोशिश है कि सिद्रा बड़ी हिट लगाने जाएं और उसमें विकेट मिले, लेकिन अभी तक सिद्रा अमीन ने सब्र का भी मुजाहरा किया है और अपनी शॉट सिलेक्शन बड़ी उन्होंने अच्छी रखी है। मैं वापस आऊँगा उस सवाल की जानिब। सलमान, किरण खान ने डबल सेंचुरी बनाई थी कराची में, जो पाकिस्तान ने इकलौता टेस्ट मैच खेला था ख़वातीन का। पहली आपकी क्या मेमोरी है पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट से मुताल्लिक? मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज़ बताता हूँ कि जब मैं अंडर 16 खेल रहा था, पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारा कैंप था और अख्तर भट्ट साहब उस कैंप को रन कर रहे थे, तो जिनका आपने नाम लिया किरण खान, ये उस वक्त पाकिस्तान टीम से खेलती थी, तो इनसे प्रैक्टिस मैचेस अंडर 16 के हुआ करते थे। और मुझे याद है कि अख्तर भट्ट साहब, जो कि आपको पता है कि कॉलेज क्रिकेट में वो एक बहुत आला दर्जे के कोच भी हैं और बहुत सारे पाकिस्तान को उन्होंने प्लेयर्स दिए, तो वो जिस तरीके से लड़कों की टीमों के साथ डील किया करते थे, सेम उसी तरह जो है वो वुमेन्स को भी सिखाया करते थे। 27 ओवर्स का खेल, 103 पे 3। तुम शॉट पर जाओ ना इस पे तो। शाबा मानू, शाबा आरिफ, या तगड़ा आने। शाबा गाइस। ये फाइनल मैच है कौमी वनडे टूर्नामेंट का टीम कॉन्करर्स और स्टार्स के दरमियान, जिसमें 18 ओवर्स बाकी रह गए हैं, 76 रन दरकार हैं, और अभी भी फास्ट बॉलिंग के ये पेस के कोई आसार नहीं है। तो वापस मुकम्मल कीजिएगा अपनी उस कहानी को सलमान। जी हाँ, तो आपको ये बता रहा था कि उनकी जब तैयारी हो रही थी इंटरनेशनल सीरीज़ के लिए, तो उन्हें लाहौर की अंडर 16 के साथ 2 मैचेस खिलाए गए थे। एक ओल्ड कैंपस पंजाब यूनिवर्सिटी में और एक डिफेंस पब्लिक स्कूल है DHA फेज़ 3 या 4 में आई थिंक। तो वो 2 मैचेस मैं खेला हूँ इनके ख़िलाफ़, और खासी अच्छी थी पाकिस्तान की टीम वो, और इनमें से किरण खान जो हैं, ये इनकी फ्रंट लाइन बैटर हुआ करती थी। काफ़ी पाकिस्तान टीम की अच्छी यादें हैं वुमेंस क्रिकेट को अगर देखा जाए, लेकिन यह है कि करंटली जिस तरह इनकी तरफ तवज्जो हुई है आजकल क्रिकेट बोर्ड की, और इनको मेंटर्स के साथ
भी मौका मिल रहा है यहाँ पर काम करने का। तो ये अच्छी डेवलपमेंट की तरफ चीज़ें जा रही हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो डिपार्टमेंट से भी बातचीत कर रहा है कि वो भी एक एक टीम ख़वातीन की बनाए। उससे डेवलपमेंट में मज़ीद बेहतरी आएगी, बस मज़ीद आसानी होगी जब प्लेयर्स जो हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल होंगे और उनके लिए खेलने के मौके भी बढ़ेंगे और उनका कंपटीशन लेवल भी बेहतर होगा। जी हाँ, क्योंकि अब इनमें से जो बेशतर क्रिकेटर्स हैं ये प्रोफेशनल हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके हैं, एक नया दौर में अब दाखिल हो रहे हैं। पहले ये हुआ करता था 90 और 80 की दहाई में कि जो ख़वातीन एथलीट्स होती थी वो कई खेल खेल रही होती थी, एक ही वक्त में पाकिस्तान की कई टीमों की नुमाइंदगी कर रही होती थी। अगर आप क्रिकेटर हैं, आप हॉकी की भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, दूसरी खेलों से भी वाबस्ता हैं। बड़ी ज़रूरी आपने ये बात की है, बल्कि यंग एज पे मल्टी स्पोर्ट्स खिलानी चाहिए सभी को, उससे बेहतर एथलीट्स डेवलप होते हैं, बेहतर सेंस डेवलप होती है। और ये एक स्वीप करने की कोशिश, क्या गेंद विकेट को तो नहीं लगी थी? इन्होंने इशारा किया, अब जाने ये अपील थी या विकेट को बॉल लगा, लेकिन बेल्स नहीं गिरे ना स्टंप्स अपनी जगह से हिले। तो 28 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 104 पे 3। बस ठीक है, उसी में कर लूंगी मैं। सर जी What a partnership this has turned out to be for the Stars. As another one has been swept beautifully. Sidra Amin with her 50. What a time to do it. Standing ovation for the captain. What a captain's inning this has been from Sidra Amin. She means business, very serious, very responsible. Sidra Amin. A very well-crafted half century from the Star skipper. And good time as well. 53 of just 62 at a healthy strike rate. More importantly, the partnership as well. She's guided Ramin along with her. 67, the partnership. They're looking good in this run chase. Yeah, there's a sense of calmness about this partnership. And she's very good square of the wicket. I said it earlier. She likes sweeping, cutting. We haven't seen a reverse set so far. We might see it soon. Because now that she's settled in, looking very good, looking very determined to win this one. Lofted over the head of the fielder, and it's all the way for 6. That is brilliant from the captain. Now opening her shoulders. It was a very difficult shot to execute because it was thrown up in the air quite wide. She had to really stretch and lunge to reach out for that. Look at that stride and then the bat swing. Very, very clean. Chose the right area. She's taken a liking to this stroke as well. Anything short, she's been able to rock back and thump it hard. Very difficult customer to bowl at when she's in this kind of mood. And especially in this format. The one-day format. She's ideally suited for this format. Takes her time. There's a calmness about her batting. She's got strokes, yes, but she needs some time. In T20 cricket, we've seen her play some shots early on. Those reverse swip that has taken her wickets, but in this format, she's looked good. Yeah, this is her favorite format. You've seen her score big hundreds. I remember that 170 she scored against Ireland at the Gaddafi Stadium. She goes big. As opposed to that in the 20 over format, she's a bit rushed. She's not her usual self, although she's got all the ingredients to become a very good T20 player as well.
But nonetheless, this ODI format is her favorite, and she's really played a wonderful knock again today. Not to forget the contribution from Ramin Shameen, promoted up the order. She's done really well. She's taken a time, 40 deliveries for 17 runs. 29 gone, 115 for 3. Sidra Amin, well, her innings will be littered with a lot of sweep shots and a lot of powerful cut shots as well. That was a good one, just piercing the gap. Plenty of opportunities for her to rock back onto that back foot and punish the bowling, both onside, offside. And again, yet another sweep shot. Terrific knock. Oh, nearly. Nearly, yes, those expressions from Manur suggesting it was very close. So now that she's in that, is it the same safe zone yet? Can we say that? 64 required of 95 deliveries. She's looking to express herself. A 6 in the previous over. It may look easy at the moment, but we've seen a lot of cricket in this square in the last couple of weeks. It's not easy for the new batters to come in and start their innings. So this wicket is very important. Definitely Conquerors are still in the game. They just need to break this partnership. Oh, there was a chance. There was a definite chance to break that partnership. Manur was unable to hold on to that. It was hit hard, yes. Very gentle Manur. She forgot her pain as soon as she dropped the catch. She's just quickly apologizing to the non-striker first. He got a fierce thump on her hand and also the agony of dropping the catch. She quickly forgot that for a minute and just apologized to the non-striker for bumping into her. That's very kind of her. Arub is not very kind to her opponents wherever she plays. She's fierce, she's aggressive, and in their face. She's had a good battle with Sidra Amin, but Sidra is winning that up till this point. Yeah, the experience coming into play from Sidra Amin. She didn't have a good tournament before this inning. She was into runs, but not a big inning that she's played in this tournament. But this time she's saved the best for the last. And as you said, that inning against Ireland at Gaddafi Stadium shows that she has that habit of playing big innings. When she gets the start, she converts it to the big one. They're all set. Maybe the drinks break after this one as she sweeps another one. Oh, again, gone through. Not good. When you're looking to put the pressure on batting side, you cannot do that. Simply cannot. Sairaj being the fielder on that occasion. Just the regulation stop. And after that, there was a few players just down on their haunches, feeling the pain. Not good signs, not good body language here from the Conquerors. 30 done, 119 for 3, 60 more runs to go. Miss Balhag pacing anxiously. Some tension. A bit of a nervous smile from Samiul Laniazi. Very focused this lot. Shoaib Malik, Mansoor Amjad. They would ideally want Sidra to stay there because they don't want any hiccups. If the partnership is broken, it may be a tense race to the finish. Yeah, that's the match summary so far. Conquerors
Batting first, 178 runs for the loss of 9 wickets. Hafsa top scoring with 47, with Dua 40 and Saira scoring 32. Wahida got 3, Ramin couple of wickets and Tuba also 2. And in reply, in 30 overs, Stars are 119 for 3. They require 60 more runs to win off 90 deliveries as Fatma Sana is back. I think this has to be a very important phase of the game, where Fatma is now looking to break this partnership. She's tried everything. Nasha Sandhu has bowled 6 overs. Saida Aroop Shah has bowled 5 overs. Hafsa Khalid has bowled 3 overs. But they've not been successful in breaking this partnership. So probably this is their best chance. Fatma Sarab bringing herself in. Well, skipper has taken things into her own hand. This is very, very crucial. Can she break through the partnership? Can she provide her team the lifeline? She knows her role quite well, Ramin Shamin. She's hardly played a wrong shot, not even attempted it. From the full face of the bat, she's been blocking well. That was a role that was assigned to her. Just go out there, support Sidra Amin, who's looked so good for her 64 runs. This may turn out to be a match-winning effort from these two. Championship-winning effort also. Down the leg side, sums up the day for the Conquerors. It's not just working for them. Wide signal. Nothing happened off the pitch for Fatma Sana. Good knockdown from Najiha Alvi. She moved very quickly. Okay, what can Fatma do? Generally, when she comes back for her second spell, she generally changes the pace, gets the slower off-cutters. But that's handy when the batters are going after you. At the moment, the required run rate of 3.95, especially Ramin hasn't played a shot in anger. Sidra has been very controlled in her aggression. What can Fatma produce here? Maybe a searing Yorker. Yeah, that would be best if she's able to do that. Yeah, another thing they can do is field well. There have been a couple of instances when the ball has gone right through the fielders. I believe just put pressure, grab the runs from Sidra Amin's end. That's the best you can do. Drive runs from this end and make Ramin Shamin do something different. Try to look for runs for big hits. Just buy a wicket, do something different. Because they're doing it with some ease. There's no pressure whatsoever. So again, nicely just played towards mid-off and took a single and got on the other end. So they're doing it with some ease. Got to make it tough every run for them. Shoaib Malik, the master of chases. Mansoor Amjad with him. They will be satisfied. Yeah, but tensed Misbah-ul-Haq on the other end. Because they know they're behind in this game. They're catching up. They need to break this partnership. Samiullah Niazi, the bowling consultant, they will be coming in anytime soon now for the drinks break. What would the message be from Misbah-ul-Haq? Well, they'll feel much better if they go into this drinks break, if they're able to break through this partnership. One delivery to go before that break. Obviously, the other way around would be for Shoaib Malik and his charges to go into the drinks break with these two intact, and the instructions then will be for them just keep going. But Misbah and Samiullah Niazi really would have to come up with some kind of plan to dislodge these two. One big chance for Fatma Sana before the break. Shot nicely saw and helped along by Sidra. She's really played beautifully, and good piece of fielding too. That was a very good piece of cricket all round.
31 done. Stars in complete control. 124 for 3. And drinks on the field. Right, 124 for 3 in 31 overs, requiring 55 more runs to win off 84 deliveries. It's this partnership. The captain Sidra Amin, 66 of 74. Ramin Shamin, well supporting our 18 runs. It's been trouble. Just a couple of bowlers taking wickets. Nasha Sandhu and Manur are the bowlers amongst wickets. 2 for Nasha, 1 for Manur. Remaining bowlers have been wicket list. Yeah, we've been talking about what can happen, what should happen. There's a drink break and the mentors did come in the ground. For the pep talk, this was Miss Paulak because they do need inspiration. They do need some good ideas to get a wicket. Samuel Anyazi making sure just to tell her which line and which length to bowl at and maybe what field setting should be set. Well, Shoaib Malik probably will be asking more of the same, please, from these two. It's been a wonderful partnership, 83 of 110. Current run rate is more than what is required.
Starts off with the wide. Yeah, it would be saying just keep it simple. Keep it regular, the way you're doing. Umpire not happy with something. All good now. That's been the best part of Sidra. I mean, her footwork. Quickly realizing the length, which length and what footwork to use. They're smiling, they're happy, they're confident they will do it. Oh, she swept that hard. Straight to Nashra Sandhu. It traveled to Nashra Sandhu within no time. She absolutely smashed it. Seeing the ball quite well now. Sidra Amin, have a look at that. Down on one knee and bang. Good ground coverage. Nashra Sandhu got in the way. Well, a couple of fumbles, but no damage done. You're saying the right thing, Ali. Just a while ago, you mentioned about how important Ramin's knock has been. It may seem 18 of 43 is not a lot, but if look at the partnership, that is very significant. Absolutely. She's understood her role. That's very important. Her role was not to go out there and hit big runs. Her role was to just stay there. 45 deliveries, that is all right for 18 runs. More importantly, it was the wicket, the partnership that she's done so well. Remember, they were 41 for 3. 3 quick wickets. There was a collapse. 6 runs, 3 wickets at one stage. They lost. She's appealing for it. Wicketkeeper was certain. She's been very good. The umpire since morning. 32 done, 126 for 3. Before the start of today, Right, there was an appeal on the very last delivery of the last over, Faisal. What do you make of it? Flight to delivery. bat hitting the ground clearly. Another good decision. The umpiring has been very good today. A little hesitation, but also between the fielders as well. It was a mix-up between the batters, and then there was a mix-up between the fielders. You should avoid this. So that Amin and Ramin Shamin, you don't want to be losing this wicket with a run out. Oh, she was certain. Yes, no, no. Finally, she's back on time. Yes, no is okay. Unless there is no sorry in there. Wasn't on that case. Again, she's run for it. This is good. Good judge of her runner she is. Fatma not happy, and rightly so. Well, those four fielders on the edge of the ring, they're hanging back, allowing quick singles. The required run rate is not that much. So if you're in the ring, your main job probably at this stage is to just come in quickly, cut down the angles, and don't give away any runs from inside the 30-yard circle. Now we see three fielders in the ring on the offside for Ramin.
Oh, very good. Very good from Ramin Salim. And overthrows. Get one for free. Yeah, she's helpless. She can't help it. She can't be everywhere herself. Saira Jabi. We'll have to wait and see when we see the replay. Was it the fielder's fault who threw, or Najiha wasn't strong enough with her left hand? We'll have to wait and see. Have a look at that. Saira came in. She was a bit slow. She was too late. And also Najiha didn't put a strong enough left hand. I have a feeling she's got a little injury on her left hand. We've seen that all day long. She's trying to protect that. Difficult to do in the heat of the battle. Telling her fielders, Najiha Alvi, take it easy. Don't throw it hard to me. This man will be a very happy man. He's looking forward to the final of the Men's T20 Cup as well in a couple of days. His team is through to the final after the initial stages. The Stallions. Misbah Haq will be playing the qualifier tomorrow. Oh, edge taken! Taken, is it? Oh, there was definite edge. Has it that carried? That's the question. And that's why he's referring to her partner. Oh, that is a big, big moment in the game. Well, the edge was definite. It's just we'll have to wait and see if it did lodge into the gloves. Did Najiha get her gloves just beneath the ball? We'll have to wait and see. Here you go. Oh, big moment. Oh, no, that's bounced. With this angle, you can tell it has just bounced before her. And everybody by now knows. Oh, that was a big moment. Yes, how desperate they were for a breakthrough. But the right decision has been made. And Ramin will breathe a sigh of relief. Nerves, excitement, tension everywhere. It's been a great game to commentate on, Ali. Thoroughly enjoyed it. She cuts this one towards third for one. Yeah, good competition. You have to say this. But this partnership, you know, just taking the game away and making it one-sided. And they lost 3 wickets in quick succession. I think that was a time when there was some interest in the game. But since then, it's been all stars. I think that since the time Shoaib Malik has arrived in the ground, it has changed for them. He was not there early in the morning. But once he arrived, things were pretty smooth for them. Some snacks for the little kiddos in the stands. Good to see some attendance. Good to see so many young boys and girls in here too. Definitely inspiring to see the national stars in the women games. Some of them have already made a name for themselves on the world stage. This is a big shout. This is massive. Everyone was up. She was certain again, Ajalvi. She cannot believe it. She was appealing for a couple of things. Edge and the stumping maybe. Tossed up. There was a definite movement after it goes past from the bat. All smiles, all good. Yeah, that's... There was a deviation. If you can have another look and just slow it up really when it passed the edge and the back pad. There you go. Now it was away from the bat and the back leg. Good decision once again. An excellent decision. Yeah, good decision. Yes, you have to say that. Because these girls, they were all over her.
She kept her cool, not for the first time. Well, just looking at the bowling options for Fatma Sana, Nashra Sandhu has been her best bowler. She's got 3 overs left. What would you do, Ali? How long would you wait before you throw the ball to Nashra Sandhu? Yeah, that's a good question. Maybe now. From the other end, Nashra and Saida Aruba Shah from one end. But because of this left hand and right hand combination that's on, I think that's why Fatma Sana has been a little reluctant using both of them together. So probably now should bring their ace bowler from both sides, look to break this partnership, and let's see what happens after that. First things first, break this partnership, which is very confident at the moment. Yeah, I wouldn't mind it bowling both the ace bowlers in tandem right here, right now, because there's no point holding the best bowlers overs for later if they're not required. Still have 48 runs to play with. Just go for broke. Let's see what Fatma does though. Oh, she's been very good with those sweep shots. She's always in control when playing that shot. Comes back for the second. 34 done, 133 for 3. Right, Fatma Sana into her 8th over. Very nice, very good. I think she's been very, very good. Really been impressed by her temperament that she's shown. You know, it's very easy to just get away and lose your temperament or the focus. But she's just been up to the mark. Yeah, remarkable concentration from Ramin. She didn't try anything out of the ordinary. She just stuck to her game plan for such a long period, not being tempted. It really shows her powers of concentration and played her role fantastically. And again, just quietly getting behind the ball, pushing it with the straight bat. And Faisal, not to forget, she's handled 3 of Pakistan's national bowlers rather. 1 fast bowler, a left arm spinner, and a leg spinner. Fatma Sana, Nashra Sandhu, Saida Aruba Shah, all 3 play for Pakistan side. And the way she's handled it with some temperament and focus and concentration. 10 on 10. Be careful. Yeah, well, that's just about the only time they've risked losing a wicket for quite a while now, through running between the wickets and some hesitation and misunderstanding. She's looking for one. I think Sidra showed her to come, and then Sidra backed off, so she had to go back. No damage done. Well, it's 46 runs of 63 deliveries. They can play out Fatma Sana. That's all right. There will be runs available from one end at least. So there shouldn't be any urgency at the moment. Yeah, that's good. Keep taking around, keep taking singles, keep finding the gaps. She's very calmly played 3 dots and then knocked the next ball in the gap. Like you said, the required run rate at the moment, 4.35, not a lot. Fatma Sana's got 1 over left after this.
Interesting to see if she bowls that or just changes herself and brings the other bowling option. Neshra Sandhu's got 3 overs left. Saida Rupsha has got 4 bowling options in the remaining 10 overs. But I don't think if they don't get wickets, it's not going to go all the way down to 45th over. So Fatma Sana has to be very clever with her bowling changes. She's appealing for it, huge appeal. But that clearly was going down. It's all happening. It's all happening. They just so desperately need that wicket. Fatma Sana. Another good decision by the umpire. An ironic smile exchange between the umpire and Fatma Sana. Angling in. Would have gone down on the angle. But there was the chance. The misunderstanding. Fatma realized it later. But good decision by umpire Waqar. The umpiring has been very good in this final, you have to say that. A dot to end the over. 35 done, 135 for the loss of 3 wickets. Stars. स्ट्राइक पे कौन है? राइट ही है शायद. स्ट्राइक पे राइट ही है सर. बॉलिंग चेंज, लेफ्ट आर्म डाउन. नशरा संधू 2 विकेट इन्होंने हासिल की, सिर्फ 12 रन दिए अपने 6 ओवरों में. 135 पे 3. कुछ मुश्किल लग नहीं रही. बहुत ही अच्छी इनिंग्स कप्तान की जानिब से. 70 रन किए हैं 80 गेंदों पे. रामीन 23 पे मौजूद हैं और सिर्फ 6 रन और दरकार हैं इस पार्टनरशिप को 100 तक पहुंचने में. सिद्रा अमीन की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी इस पूरे रन चेज में. ये शुरू से इस चीज़ का इल्म था, लेकिन बहुत लेट आई हैं जब वो वेल सेटल हो गई. यहाँ वो इंतज़ार करती रही कि जो स्पिनर्स हैं वो इस पार्टनरशिप को तोड़ेंगे, लेकिन उसी में खासी देर हो गई और अब मामला जो हैं वो इनकी पहुंच से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं. पानी सर से ऊंचा लग रहा है. यहाँ क्या जहाँ रोक गई थी सफाई के साथ, लेकिन ये हफ्सा थी. इससे पहले जो टॉस जीता फातिमा सना ने, उसमें भी शायद वो हद दर्जा खुद एतमादी का शिकार हुई. इस मौसम में पहले बैटिंग करने का जो फैसला है उस पर सवाल रहेगा. स्वीप करते हुए पहले गिरी गेंद, क्योंकि आसान नहीं थी बैटिंग. ये हमने देखा इस दूसरी इनिंग्स में, इस पार्टनरशिप में गेंद ज़्यादा बेहतर बल्ले पर आई है, रुकी नहीं है ऑफ द पिच. बिल्कुल बहुत अर्ली आगाज़ था 9:30 का और उस टाइम पे रन्स बनाना मुश्किल लग रहे थे, नज़र आ रहा था. लेकिन शायद वो एक फैक्टर होता है कि फाइनल में आप पहले बैटिंग करें. टोटल आपने पोस्ट किया, उनको एतमाद ज़रूर था बॉलिंग पे अपनी, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी थे. लेकिन जिस तरह बीच में उन्होंने फ्रीडम दी है, स्पेशली सिद्रा अमीन, और अमीन को शुरू में आके खुले सिंगल्स दिए. हर ओवर में एक ऐसी बॉल भी की जिस पे चौका आया. शायद अंदाज़ा इनको बहुत देर से जाके हुआ कि अब बात हाथ से निकल गई. और अब सिद्रा अमीन के पास मौका है, क्योंकि अभी जीत के लिए 41 रन चाहिए हैं. ये अपनी सेंचुरी की तरफ भी जा सकती हैं.
41 में से अगर ये 27 रन बना लेती, जो कि मुमकिन है, क्योंकि रामीन जो हैं वो ज़्यादा सानवी किरदार में ही नज़र आई हैं, उन्होंने पसंद भी किया है यही किरदार अपने लिए, और हमेशा से यही किरदार उनको सौंपा भी गया है, इसलिए उन्होंने एक तरह से एक या दो शॉट्स ऐसी हैं जहाँ पे वो बाउंड्री हासिल कर सकती हैं, लेकिन सिंगल्स निकालना उनको बखूबी आता है। इस बार भी नरम हाथों से खेला, अच्छी रनिंग की, मिड विकेट को चैलेंज किया, दोनों खिलाड़ियों ने जैसे गेंद बल्ले से लगी भागना शुरू कर दिया, एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। रमीन ने जब भी खेला है उनको जो भी रोल दिया गया है, एक तरह से ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से खेला अपने नज़रों के नीचे, कि ये डॉट बॉल्स बहुत कम कोशिश होती है इनकी के खेलें, क्योंकि ये वनडे है तो फिर थोड़ा सा मार्जिन था पार्टनरशिप बिल्ड करने का, लेकिन लेग साइड पे भी ये स्वीप कर देती हैं, स्लॉक कर सकती हैं, एक्स्ट्रा कवर भी मार लेती हैं, लेकिन आज रोल डिफरेंट है इनका। फाइन स्वीप खेल गई, फील्डर मौजूद थी 45 पर, लेकिन रोकने का मौका नहीं। वैसे भी जब सिद्रा अमीन बैटिंग क्रीज पर हूं तो आप स्वीप शॉट पर चौके से दूर रहते नहीं ज्यादा। नशरा इस बार लेग साइड पे गेंद कर गई, एंगल के साथ अंदर लाना चाह रही थी, लेकिन सिद्रा जितना सेट है ऑलरेडी लेग स्टंप से काफ़ी नीचे खड़ी है, इसलिए हल्का सा भी अगर लाइन में चूक होगी, अच्छा एक्सटेंड किया अपने बल्ले को, आर्म्स को कनेक्ट हासिल करने के लिए। 36 के बाद 143 फॉर 3। इस मैच की वाहिद जो 100 रन की पार्टनरशिप हुई है रामीन और सिद्रा अमीन के दरमियान, वो अभी तक जारी है। 102 रन का इजाफा किया है स्टार्स की इन दो बैटर्स ने। एक बार फिर रन खतरे से खाली नहीं था, लेकिन कोई झिझक महसूस नहीं की। रामीन अपने शॉट पर ही खेलती चली गई, दौड़ती चली गई। दोनों बहुत तेज हैं, सिद्रा अमीन तो काफ़ी तेज हैं, रामीन भी एक अच्छी एथलीट हैं, खेलते साथ ही कॉल की थी, बड़े ही आराम से थ्रो की। अगर थोड़ा जान से थ्रो करती और डायरेक्ट हिट होती तो शायद मुश्किल हो सकती थी रामीन को, लेकिन बहुत ही टाइम लेके आराम से थ्रो की। अमीन को फिर स्ट्राइक मिल गई है। ये पैड पर लगी और अंपायर ने हाँ में हाँ मिलाई। फातिमा सना के ऐसा दिखाई दिया था कि गेंद शायद लेग स्टंप को छोड़ जाती, नीचे लगी थी पैड के। सिद्रा अमीन को जाना होगा, अपने ऑपोजिट नंबर की विकेट ली कप्तान ने। सिद्रा अमीन खुश नहीं होंगी बिल्कुल भी, क्योंकि अपने 100 के करीब पहुंच गई थी फातिमा सना। नेचुरल इनका इन स्विंग होता है और लेग स्टंप के सामने बैट पे गेंद लगा और अंपायर ने इस चीज़ का फैसला किया कि ये एलबीडब्ल्यू था। काफ़ी मार्जिनल डिसीजन था, लेकिन बहुत ही शानदार इनिंग्स इस चेस को ट्रैक पे लाने के लिए 77 की। और थोड़ा सा अब मौका है स्टार्स के पास, बल्कि कॉन्करर्स के पास, के चीज़ें मज़ीद दुश्वार बना सकते हैं। अभी भी 35 रन दरकार हैं, लेकिन बहुत ही आला बैटिंग की सिद्रा अमीन ने। यहाँ कायनात हफीज का ये टूर्नामेंट रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि अपने करियर में इससे कहीं ज़्यादा मैचेस जिनने खेले, तो काफ़ी बरसों से ये मंजरनामे पर मौजूद हैं। अच्छा रन लिया, एतमाद से आगाज़ किया अपनी इनिंग्स का। सना के सामने
लेकिन ये बॉलिंग अच्छी नहीं थी। अभी विकेट हासिल किए फातिमा सना ने, इजी सिंगल दे दिया। ये देखिए विद एंगल नेचुरल स्विंग है फातिमा का, इन स्विंग आता है और बल्ला मिला नहीं सकी सिद्रा अमीन। और ये सेलिब्रेशन बताती है कि कितनी बड़ी विकेट थी। इसी चीज़ की मैं बात कर रही थी कि पहले इनको जल्दी आना चाहिए था। सिद्रा अमीन के फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट, स्पेशली सना के अगेंस्ट थोड़ा सा इशू होता है सिद्रा को। अच्छा स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग भी फातिमा सना हमा वक्त ये एक्शन में रहती हैं। अच्छी एथलीट हैं, कराची से इनका ताल्लुक है और बड़ी कम उम्री में इनको पाकिस्तान की क़यादत सौंपी गई। बड़ी खुशसलूबी के साथ अभी तक कप्तान के किरदार में नजर आई हैं। शायद अंगूठे के ऊपर बॉल लगा है। बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है सना, फातिमा सना का। एक फाइटर हैं, अपनी बॉलिंग को, अपनी क्रिकेट को बहुत सीरियस लेती हैं, फिटनेस को, फील्डिंग को, तीनों डिपार्टमेंट्स में आउटस्टैंडिंग रही हैं और थिंकिंग प्लेयर हैं। इसीलिए बहुत जल्दी इन्होंने स्टैंड आउट किया बाकी सब प्लेयर्स के दरमियान। सिद्रा अमीन, आज एक अच्छी इनिंग्स देखने को मिली इनकी जानिब से, कप्तानों की तरह खेली, लेकिन फिनिश नहीं कर पाई, ना 100 रन हासिल कर पाई, लेकिन डायरेक्शन ज़रूर दे दिए स्टार्स को। कॉन्करर्स ने काफ़ी ऑप्शंस आजमाई ज़रूर हैं, लेकिन अशरा वो वाहिद कामयाब बॉलर रही हैं जिन्होंने थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट किया। इकोनॉमी भी आप देख सकते हैं 2.8 की है, 2 विकेटें हासिल की 7 ओवरों में। महानूर और फातिमा ने एक एक विकेट हासिल की। ये बहुत दायरे के करीब से भागना शुरू करती हैं। ये 25 गज का दायरा होता है खवातीन क्रिकेट में, 30 का नहीं। और हवा में, और ये हाथ लग चली थी। अच्छी कोशिश की फातिमा सना ने, खासा तेज शॉट था और अगर ये विकेट मिल जाती तो पहले जो खिड़की खुली थी ये दरवाजा खुल सकता था यहाँ टीम कॉन्करर्स पे। बिल्कुल रामीन की विकेट होती है जो 25 रन पे मौजूद हैं। फातिमा शायद दोनों हाथों से अगर जाती तो ये आसानी से कैच कर पाती, लेकिन फॉलो थ्रू में आसान नहीं होता है। देखें थोड़ा सा दूर जरूर था, लेकिन जाने में देरी कर दी इन्होंने, एक हाथ के साथ गई। अगर यहाँ पे ये विकेट हासिल कर लेती तो फिर मुश्किलात बढ़ जाती स्टार्स के लिए। तो आखिरी गेंद ये बड़ी अहम हो सकती है। कवर्स को आगे किया है फातिमा सना ने, शॉर्ट मिड विकेट पर एक कैचर है। अच्छा फेंड किया इस शॉर्ट डिलीवरी को, शानदार बॉलिंग कप्तान की जानिब से। टीम के लिए फाइट बैक कर रही हैं 37 ओवर्स के बाद 145 पर 4। ये वो कैच है और इसी हाथ पे पहले भी बॉल इन्हें लगी थी। अगर दोनों हाथों से जाती तो थोड़ा सा आसान ज़रूर हो जाता, लेकिन अच्छी एफर्ट। एक एथलीट हैं, नेचुरल एथलीट हैं फातिमा सना। थोड़ा सा मज़ीद फील्डिंग को टाइट कर सकते हैं ये इजी सिंगल्स, क्योंकि रामीन का भी वही रोल रहेगा। आराम से अगर सिंगल्स भी लें तो आसानी इस हदफ तक पहुंच सकते हैं। थोड़ी अटैकिंग अप्रोच रखनी पड़ेगी फातिमा सना को। सैयदा अरूब शाह, अभी इनके 4 ओवर्स बाकी हैं। आज विकेट से महरूम रही हैं। 5 ओवर्स में 21 रन दिए हैं। 5 फील्डर हैं दायरे में। लेग ब्रेक, ड्रॉ किया कायनात को अगले कदम पर, वहीं से टर्न किया, बाल बाल बची। ब्रेक है इनके हाथ में और कभी कभी तेज ब्रेक करती हैं, लेकिन ये लेंथ बहुत अच्छी है। तकरीबन मैच का दूसरा या तीसरा बॉल होगा जिन्होंने इस लेंथ पे कराया हो, जहाँ पे फोर्स किया है कायनात हफीज को कि वो ड्राइव के लिए आए।
स्लिप अब आ गई है, फातिमा सना खुद हैं वहाँ मौजूद। कायनात हफीज ज़्यादा बड़ी शॉट खेलने जाएंगी नहीं। ऐसे लेग साइड में चलता किया, दूसरे रन के लिए भी वापस आएंगी। थोड़ी सी बात जो है फातिमा सना के मुतालिक और करते हैं। अभी कुछ महीने पहले इनको पाकिस्तान की क़यादत जब सौंपी गई थी तो वर्ल्ड कप के दौरान इनके जो वालिद थे उनका इंतकाल हो गया था और बड़ा मुश्किल मरहला था, लेकिन ये मुल्क के लिए वापस आई थी खेलने के लिए टूर्नामेंट के दौरान ही। और जाहिर है ये आसान नहीं होता, लेकिन उस दिन जज्बात ज़रूर थे। अलबत्ता जो इन्होंने दलेरी दिखाई वहाँ मैदान में जाकर अपने शौक को एक तरफ रखते हुए, ये मामूली बात नहीं थी। मजबूत आसाब है इनके। बिल्कुल, और इतनी छोटी उम्र में इतना मैच्योर होना, इमोशनली मैच्योर होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि फैमिली और स्पेशली फादर जिन्होंने आपको आगाज़ कराया हो क्रिकेट का, हर कदम पे फातिमा को वो जैसे खुद बताती हैं कि सपोर्ट की है। और ऐसे टाइम पे जब आप घर से दूर होते हैं और आपको ऐसी खबर मिलती है वर्ल्ड कप में, तो ये कैरेक्टर शो करता है। जो मैं बात कर रही थी कि ये कमिटेड हैं, फाइटर हैं, वो कैरेक्टर शो करता है कि वो वापस आई और उन्होंने इस चीज़ का एहसास किया कि मुल्क को अभी मेरी ज़रूरत है और मेरे फादर की भी यही ख्वाहिश होती। और जिस तरीके से शायद लेग साइड से नीचे जा रहा था गेंद और ये बाउंड्री के पार चला जाएगा, 4 रन हासिल होंगे। ये लेग बाई का इशारा नहीं किया अंपायर नाजिया ने। ऐसा दिखाई दिया था जैसे गेंद पैड से लगती हुई फाइन गई हो। मुमकिन है कि बल्ला इन्वॉल्व हुआ हो क्योंकि ग्लव्स लगे थे, क्योंकि सिर्फ अगर गेंद पैड से जाती तो इतनी तेज नहीं जाती। इसलिए अच्छा फैसला। बिल्कुल आज अच्छी एम्पायरिंग की है नाजिया ने। फातिमा की बात कर रहे थे, जिस तरीके से आई और जितना कंपोजर था उस मैच में, आसान नहीं होता फोकस करना। तो इतनी कम उम्री में इतनी मैच्योरिटी दिखाना बहुत ही शानदार बात है और ये बहुत दूर लेके जाएगा इनको। जहाँ क्योंकि इस जिम में सिर्फ एक ही मिसाल दी जा सकती है। ये हॉकी वर्ल्ड कप था सिडनी में 1994 में। ताहिर जमान जो पाकिस्तान के उस वक्त सीनियर खिलाड़ी थे, उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। वो आए नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर था। उनके वालिद की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते, ताहिर जमान खेलें और वो वहीं रहे उस मुश्किल वक्त में। पाकिस्तान आलमी चैम्पियन बना, आखिरी बार आलमी चैम्पियन हॉकी में। फातिमा सना जो है यकीनी तौर पर इन्होंने जो मजबूती दिखाई है, आगे चलकर ये पाकिस्तान क्रिकेट के और काम आएंगी, क्योंकि ऐसे किरदार जो हैं आपको और बड़ा बनाते हैं। 153 पर 4। कॉन्करर्स ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया था। 178 टोटल किया था, जिसने हफ्जा ने एक अच्छी इनिंग्स खेली थी। दुआ और हफ्जा की पार्टनरशिप एक अच्छी डायरेक्शन और प्लेटफॉर्म दिया था कॉन्करर्स को। सायरा ने 32 रन की इनिंग्स खेली। वहीदा ने 3 विकेटें हासिल की। अच्छी डेथ बॉलिंग नजर आई थी रामीन और तूबा की हिस्से में 2-2। और अब चेस जारी है। सिद्रा अमीन ने कप्तानों वाली इनिंग्स खेली। 77 पे वो आउट हुई। 30 पे नॉट आउट मौजूद है रामीन। अब जिम्मेदारी उन पे है सीनियर प्रो होने की हैसियत से। दुआ माजिद आज बैटिंग में इनने अच्छी कारकर्दगी पेश की। गई तीसरा ओवर होगा। अभी तक 2 ओवर्स में 11 रन दिए। नशरा संधू के अलावा जो बाकी स्पिनर्स थी वो ज्यादा उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरी। फिर से हवा में दूर थी यहाँ पर दुआ के हाथ से। तो ये क्योंकि अब आखिरी ओवर्स हैं इस चैंपियनशिप के, जो कराची से शुरू हुई और रावलपिंडी इस्लामाबाद में इसका इख्तिताम हो रहा है। कोई नए टैलेंट के बारे में बताइए, हमने यहाँ क्या मिला है इससे इस बाबत?
को अंडर 19 की कुछ इंडक्शंस हुई हैं, वो काफ़ी अच्छी हैं. ट्रायल्स जैसे बतूल ने बताया था, वहाँ से कुछ प्लेयर्स पिक हुए हैं. सबसे पहला नंबर तो मैं सामिया अफसर की बात करूँगी. एक आसान सिंगल बन गया यहाँ पे. सामिया अफसर सिर्फ 13 साल की उम्र उनकी है, लेकिन अगर आप उनकी टेक्निक देखें, उनकी अप्रोच देखें गेम की तरफ, तो लगता है कि शी इज़ बियॉन्ड हर ईयर्स. और दुआ माजिद को एक पूरा भरपूर मौका मिला, इन्होंने भी अपने आप को साबित किया है. सायरा जबीन को मौका मिला है. ये वो प्लेयर्स हैं जिनको ज़्यादा मौके नहीं मिलते थे. लारे मलिक का इंडक्शन हुआ है. मानूर आफ्ताब अंडर 19 की कैप्टन रह चुकी हैं, जो ट्राई नेशन हुई थी जनवरी में. वो एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट हमें देखने को मिला है अगर इन टीम्स में बात करूं. ये सीम पर रुक के गई, फिर दूर से खेल गई है. ग्राउंड शॉट्स खेले रामीन ने. किसी भी मौके पर उन्होंने गेंद को हवा में नहीं धकेला, को मौका फराहम नहीं किया. और ये वो 13 बरस की सबसे कम सिन क्रिकेटर हैं सामिया अफसर, जिनके मुतालिक बता रही थी हमें मरीना मजीद. बिल्कुल 6 साल की उम्र से इनको देखते आए हैं. जब मैं क्रिकेट खेलती थी तब भी अक्सर इनको नेट्स में देखा है. कैनेड कॉलेज में इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली, वहाँ पे इनिशियल ट्रेनिंग ज़रूर हुई है. 2-3 दफ़ा तब जब मैं खेलती थी तब भी इंटरेक्शन हुआ था इनसे, तो ऑलरेडी काफ़ी कमिटेड थी अपनी क्रिकेट को लेके. एज अ प्लेयर स्टैंड आउट करती हैं. दुआ के साथ जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, इनिंग्स का आगाज करती हैं. ये वाइड गेंद, यहाँ सिर्फ 22 रन की ज़रूरत है. और अगर कोई यहाँ पर ड्रामा पेश नहीं आता तो स्टार्स को चैंपियन बन जाना चाहिए. यहाँ पे बेहतर ऑप्शन होती है अगर नशा संधू को लाया जाता, क्योंकि ये रन्स कंटेन शायद ना हो पाए. अगर विकेट्स एक आधी यहाँ पे गिर जाती हैं तो मेरा ख्याल है कि मज़ीद मुश्किल हो सकती थी स्टार्स को. तो नशरा ने ज़्यादा मौका नहीं दिया बैटर्स को अपना बल्ला खोलने का, और एक्सपीरियंस भी हैं. तो दुआ थोड़ा इनएक्सपीरियंस है. अरूब भी इनकंसिस्टेंट होने की वजह से उनको खेलना आसान है. ये साफ झलक रहा है. दोनों जो मेंटोर्स हैं, आप उनको देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त कौन सी टीम खेल में आगे है. यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स मौजूद हैं. नदीम खान साबिक टेस्ट क्रिकेटर, मोहम्मद वसीम माजी के बैट्समैन और आज के कोच हैं. वीमेन क्रिकेट से इनकी वाबस्तगी है. असद शफीक. तो अच्छा लग रहा है कि नदीम खान वीमेन क्रिकेट के साथ भी वाबस्ता हैं. और इतने जो बड़े नाम हैं पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट से, वो अब ख़वातीन क्रिकेट की भी हिमायत पर उतरे हुए हैं. बिल्कुल. और ये बहुत अच्छा स्टेप पीसीबी ने लिया जो मेंटोर्स को विमेन क्रिकेट में लेके आए हैं, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप इंटरेक्शन करते हैं. ग्रेट्स हमारे साथ मौजूद हैं. शुएब मलिक, एक पूरी किताब है, इनसे आप हर चीज़ सीख सकते हैं, फिटनेस से लेके मेंटल स्ट्रेंथ तक. और ये कह सकते हैं पूरी डिक्शनरी है, कप्तानी से लेके इनिंग्स बिल्डिंग तक, टेम्परामेंट बिल्डिंग तक, स्पिनर्स को कैसे खेलना है. तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए, इवन के नेशनल प्लेयर्स के लिए भी. ये एक्सपोजर जो है ये ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगा. आपकी याद दहानी के लिए कल बहरिया टाउन चैंपियंस कप T20 का प्लेऑफ खेला जाने वाला है. फाइन गई, ये वाइड के रन्स आएंगे. ये 2 नहीं, ये 3 गिनती में आएंगे. अंपायर ने पहले ये वाइड करार दिया था, उसके बाद आया इन्होंने अपना फैसला तब्दील किया है. बल्ले के रन्स दिए.
अपने फैसले पर नजरसानी की है। पहले वाइड करार दिया था, उसके बाद लगता है कि अपना फैसला वापस ले लिया कि ये बल्ले के रन हैं। ओवरऑल मैच में एम्पायरिंग बहुत अच्छी की है दोनों जानिब से, वकार अहमद और नाजिया नज़ीर। ये इस वक्त कुछ खवातीन अंपायर्स हैं। सबसे पहले मुझे नाम याद पड़ता है आफिया एहसन, जो है एहसन रजा, जो टेस्ट अंपायर हैं आईसीसी के, उनकी अहलिया थी, वो आई थी अंपायरिंग करने के लिए। अब ये नया इजाफा है नाजिया नज़ीर। बिल्कुल, और मज़ीद नाम लिए जाएं तो हमारा फ़रा हैं सलीमा इम्तियाज़, जो कायनात इम्तियाज़ की मदर हैं, जो पाकिस्तान की प्लेयर हैं। यहाँ तो ये बहुत ज़रूरी ऐलान है, बैरिया टाउन चैंपियंस कप T20 टूर्नामेंट का कल क्वालिफायर होना है। इसमें ये मिसबाह उल हक और वकार यूनुस की टीमें होंगी। UMT मार्कोर्स की क़यादत इफ्तिखार अहमद करेंगे। इमाम उल हक जो कि फॉर्म बैट्समैन हैं, नूरपुर लायंस के कप्तान होंगे। दोपहर 3:30 बजे ये एक्शन का आगाज़ होगा और आप आ सकते हैं रावलपिंडी स्टेडियम में। टिकट्स दस्तयाब हैं बड़ी तादाद में। तो यहाँ कमेंट्री बॉक्स में भी अब तब्दीली हुआ चाहती है। अली यूनुस हैं और सलमान भट्ट। Thank you very much, Tariq Said Saab. What an inning from Ramin Shamin. What a support. What a partnership. First with Sid Ramin, now doing it with Kainat Hafiz. Just 19 more runs to win of 29 deliveries. Salman Butt, you got to say, what a calm and determined inning from Ramin Shamin. 33 of 75. Yep, extremely patient and also playing the situation, being the supporting act is never always easy. And her being there with her captain is priceless. There is the captain. Unfortunate to be given out. I think she could have reached the 100, but unfortunately for her not to be. This is Sidra Amin and 331 and number 1, Mrs. Ali Yunus. Alia Riaz. Wonderful performances there from the top 5, and she's leading by some margin, about 50 plus runs. And what a big occasion to score big for Sidra Amin. 78 she got, and got her side very close to being over the line. Still, she's hoping that her side would win. 18 more required of 27, but she was extremely unfortunate to be given out to a delivery which was going way down the leg side. Another appeal. There are nerves, certainly stumping opportunity. Not to be. And was the leg umpire Nazia again in business. She's done well. Yeah, the foot was firmly on ground. 18 runs off 25 deliveries now. They're trying to make it tough for them, for the batters, making every run difficult. And that's how it should have been. But I believe in the middle they just gave away too many easy runs to the batters. No doubt. The captain played a brilliant innings. Sidramin again, a dot delivery. It's increasing. The pressure is increasing on them. .41 done, 161 for 4, 18 required of 24 deliveries.
Yes, some familiar faces in the ground. Number 1 run getter of the tournament, and number 4 also. Natalia Pervez on the left in red jacket, alongside the former selector Marina Iqbal and now the commentator. Right, back to the game. 24 deliveries, 18 runs to get. Nasha Sandhu will bowl her last over. A dot delivery again. With every dot delivery increases the pressure. Well, this delivery was way outside the off stump and also a bit on the shorter side, and still no intention of scoring with all the fielders in the ring on the offside. And it's 23 balls that remain and 18 still to get. Just have a look at this. So the already made up her mind has Ramin that not to take a chance against Nasha Sandhu. And although they have wickets in hand, it's only 4 down, and if you have been there and faced 79 deliveries batting on 34, you should be able to score off these balls. But can it be the plan, just play out Nasha Sandhu? No, she sweeps one. This is a good opportunity. This is a good shot against Nasha. Just go on the other end. Yeah, maybe she feels comfortable with and confident playing the sweep shot or playing on the onside, because all the fielders were in the ring on the offside and the balls were delivered way outside the off stump. So she could have driven or cut or pushed one through the gap for a 4, but she opted to just sweep or either block. So it's fine. She knows her game and maybe she has a plan to follow. Fatma Sana, she's done well. Just hanging in there. Keep believing. Oh, it was in the air for a little while. 17 runs, 20 deliveries. As you just said, 4 wickets down. They've got Tuba Hassan, who's in good form. They've got Horena Sajad, they can bat. So maybe they can look to take chance. Yeah, maybe after this over is the time, but this taking things till the end is never a great option. So I hope everything goes smoothly for them, because the captain has batted brilliantly. So this one has been turned around very fine, and the 3 fielders in the hunt, and the hot pursuit is over. 2 runs to the total. A breather for Kainath and for the Stars. 15 required of 19. Still a match can be made out of it. Look at Misbah Haq and Niazi, both very focused. Both full of advices for their players. Yeah, it has been a good game of cricket. You must say this. Worthy final where both teams refuse to give up. That's the sort of cricket you want to see. Yeah, the plan seems to be just play out Nasha Sandhu. She's bowled out. She's bowled her 9 overs. She's given away 26 runs for 2 wickets. 42 gone, 164 for 4. Right, Sidra Amin, the captain, leading the way for the team. 77 of 84 deliveries. Very unfortunate way of getting out. Ramin Shamin 35 of 80. Great support. Kainath now on 9, 164 for 4. 15 required of 18 deliveries. Dua Majid into her 5th over. Ramin Shamin to face 80 deliveries she has faced so far for 35. Is this the moment? Yeah, they're going to do it in a calm way, I guess, with singles and doubles. Well, whichever way, it's about getting there. The captain, a concerned look on her face. She maintained a very decent strike rate. 77 of 84 deliveries is a good effort, and she was someone who was getting the odd boundary every now here and then, running well between the wickets. And had she been there, maybe the match would have been over by now. And Salman, since the time she got out, there has been no boundary. 27 deliveries. Oh, knocked her over. Oh, wow. What's happening out there? Kainath the fees. Shuffled across and they hit the leg stump. That's a big moment again. They've made a way to make a comeback in this game. Team Conquerors.
They keep believing. They keep fighting hard. Yeah, too much on the offside. She moved and all the three stumps were exposed and the ball just spun a bit and went on to hit the stumps. In the end, Kainat Hafiz has to leave. 9 she scored of 20 and it's 5 down now for 5 for 165. Right, Tuba Hassan, the leg spinner, scored 60 in the previous game. She can bat, but the situation, that's a pressure situation. Look, 61 her highest. These are this tournament's stats. 90 runs with a strike rate of 105. What an important time for her to come in for the team. Dot delivery, what is happening? Well, it's getting more interesting and she's bowling in the right areas. Just have a look at this, too much room for the ball to go through to the stumps. Absolutely no defense in front of the stumps. Oh, this is a big shot. This is a straight one and this will be a certain boundary. So a stroke that will take the pressure off and calm some nerves down as Tuba decides to take the game in her own hand and take the pressure back to the opposition. Good positive feet movement and good swing. Just have a look at this again. Swing with authority and clarity of mind. Mid off up in the circle, so targeting the right area as well. Very courageous. She's got the skill, she's got the talent. She's not scared to express herself in the middle. Now the mid-off being pushed back at long off. Again down the track, through the gap. Oh, what a fantastic shot. What little cameo she's playing, Tuba. Where has she been? Some wonderful stroke play that again, great use of the feet, getting to the pitch of the ball, driving and concerns for the big mentor over there. Not expecting this sort of a response under pressure by Tuba. And she has surprised quite a number of people. Just have a look at this. Move towards the ball. Wonderful swing of the bat and placing it with perfection. No chance for any fielder. Cover was the region this time. Result the same. 6 more required of 13. Would she go for the glory? Oh, she's flicked that one for 4. Oh, wow, what an inning. What have you done, Tuba? Brilliant. That is magnificent. 3 deliveries that she has faced. Probably the best of her life. 3 boundaries. And what timely boundaries they've been for the team. Fantastic scenes these. 3 consecutive 4s. This time full toss on the legs and she just timed it in the gap. Just have a look at this. Just timed it. Wonderfully played. Great awareness of where the fielders are. Good placement. Good use of the wrist. Scooping it and finding the gap. 3 boundaries. Almost sealing the game now. Just 2 more runs required. 12 deliveries. A late visit, but the most effective one. Yeah, a happy man. So he should be. Just 2 runs required of 12 deliveries. Yeah. The mentor, already cool, just got a bit more cooler after these 3 shots. I like the line you used. Cool, just got cooler. Right, Arup Shah will bowl the second last over. Just 2 runs required. 177. It will be Ramin Shamin to face. Oh no, she'll just have to wait for the celebrations. It was there to be hit. But what about Tuba? What a way to start off the innings, Salman. Yeah, showed big heart over there. Nerves of steel, dancing down the track, hitting it over
mid-off, and then this beautiful stroke through the covers, and then making use of this loose delivery and knowing her options, as this one has been swept once again, as the scores are now level. And perhaps this will be a fitting end, because Tuba has come in and taken the game all within her own hands, and she's smashed 3 boundaries, and it would be more fitting to see her finish the game now. Scores are level. 1 run required of 10 deliveries for Stars to be the champions of Women's One-Day Championship. They worked so hard and come so close to this last delivery. Nerves, definitely there is pressure. Tuba Hassan has delivered a masterclass just by facing 4 deliveries, and this is the delivery. No, finishes with the white ball. Anti-climax this. Nobody gets a chance. The bowler does it all by herself, and the umpire calls this a wide, and it has finished in a very calm fashion. Nothing to do with the bat over there. And wonderful scenes these, as Conquerors and Stars play a wonderful game in the final, and Stars in the end are the winners of the championship by 5 wickets. Yeah, the Stars have done it. They're living the dream of winning this women's championship. It was not easy, being played in 2 different conditions, first Karachi and then Islamabad. They've kept the cool. They've played good cricket throughout the tournament. Shoaib Malik, the mentor of Stars, will be a very, very satisfied man. The way his team has delivered on a big occasion against big opponents, and that little beauty, that inning off Tuba, scoring 12 important runs on just 4 deliveries to win the game for her team. Yeah, that's a sigh of relief from Mr. Malik. Most important and most awaited 12. It was 3 boundaries, wonderful towards the end, taking all the pressure off her team and putting it back on the opposition, as the mentor is walking in to the field, very proud of his side. And this is the first championship that mentors have been around, and here they are clapping off their team, who've done a fabulous job and won this tournament. Shoaib Malik, and behind him is Mansoor Amjad, Adnan Rasool, his sports staff, his head coach, and all the others who've put in great efforts. And on the other side, Misbah also, along with Niazi, they have done a wonderful job as well. They were here since morning, talking to their players, trying to G them up, and also giving all the possible advices. And in the end, a good game of cricket. Absolutely, an excellent game of cricket. A game worthy of final. It's good to see Misbah ul Haq also appreciating the team, because it's all about the development of women cricket. They've all contributed in this tournament. All 5 teams, they've done really well. And in the end, it was Stars who won by 5 wickets. They deserve all the celebrations. And it's that moment. Let the celebrations begin, guys. You've done well, and this is the moment. A wide to win the game. But it's more than that. It's more than that, definitely. Yeah, just look at that team running in jubilation. And Shoaib Malik is also, he's having his good time jumping along with the players. That is good to see. And we must say that Tuba was thinking as well. She judged the ball, the line and the length. She knew it was a wide. She didn't take a chance, didn't go for the glory all by herself. Very sensible. And she's done a great job towards the end. Took all the pressure off her team. And on the other side also, the batter who just continued to bat and bat, Ramim Shamim, 37 of 83 deliveries, putting up 2 different partnerships, both very important in the context of the game, and especially in a run chase, you need somebody to just keep batting through, and on the other end, people to play around that batter. And that exactly happened. The captain, Sidra Amin, putting up a great knock of 77 runs and running well between the wickets. Also captained well in the morning, took a few catches as well, the one running back, and led her team to this fabulous victory. In pursuit of 179 runs, this is how they did it. The captain leading from front,
Sidra Amin, 77 of 84 deliveries. Ramin Shamin was like a rock in the middle, 37 of 83. But most importantly, it was those 12 important runs, 3 boundaries by Tuba that helped them get to that 179 in 43.2 deliveries to become the champions of National One Day Tournament 24-25. To conquer this final, they needed to pick up wickets, but the bowlers only could pick up 5. Nashra, the pick of all of them, giving away 26 of a 9, picking up 2 wickets. Fatma, the captain, who the team was relying on, 9 overs, 30 for 1. Hamna, 2 overs, only 15, was expensive. Dua bowled 5 for 29. Aroop, 6.2, 31 runs she gave, and Hafsa, 3 overs, 21. In the end, they were not able to defend this 179 that they put up earlier. Right, that's how the chase began, with few boundaries early on. It was a good partnership. They were given some easy, friendly deliveries, some great timing also, the great partnership to begin. Sadaf Shams really looked good with that cover drive. She was really looking good until this happened. They lost the first wicket to Nasha Sandhu, and then the very next delivery, it was Bhatti, the wicketkeeper, gone on the very first delivery. Then this was a straightforward chance. Sadaf Shams lost a wicket. Then this partnership between Sidra Amin and Ramin Shamin. Yeah, and then both of these girls, they continued to press on with this partnership, scoring runs, rotating the strike, hitting the balls in the gap, getting the odd boundaries, and focusing on staying at the pitch and keep scoring runs. Meanwhile, Sidra was especially wonderful, sweeping lots of balls, cutting them into the gaps, getting the boundaries, and also hitting the big ball. This one was a straight 6 over mid-off, and then again she kept sweeping wherever she could, and then this happened. She must be disappointed after looking at this replay. Surely the ball was going down the leg side, an error of judgment, but lucky for her that things didn't go from bad to worse. Runs kept coming as Tuba came in, smashing 3 wonderful strokes, and this one also flicked in the gap, and in the end taking her team across the finish line. Yeah, the celebrations in the end meant a lot for the team and the mentor himself. It was excellent. Shoaib Malik congratulating the little dynamite Tuba Hassan, and yeah, congratulations to Star for this fantastic victory. Yeah, Conquerors won the toss, decided to bat first. They scored 178 in their 45 overs. Hafsa top scoring with 47, with Dua Majid scoring 40. Waida got 3, Ramin Shamin got 2 wickets, and Tuba also getting a couple of wickets. And in reply, Stars chased down that total in 43.2 overs for the loss of 5 wickets. Sidra Amin leading the way with 77. Ramin Shamin contributing with the bat also, 37 not out. Nasha Sandhu tried her best, got a couple of wickets for 26. Manur got a wicket, so does Dua Majid, got 1 wicket too. And in the end it was Stars who kept the cool and won the game by 5 wickets and became the champions of National One Day Tournament 24-25. We're going to take a short break here, and when we come back we'll have a post-match presentation for you.
Welcome to the post-match presentation of the final match of Women's National One-Day Tournament. It was between the Conquerors and the Stars, and with a thrilling ending, Conquerors were left behind and Stars winning the match with 5 wickets. Before moving towards the awards, firstly, let me introduce the presentation party. On my left, we have Mr. Nadeem Khan, who is Director, High Performance Center. Next to him is Mr. Asad Shafiq, National Selector. Next to him, we have Ma'am Sayyida Batul Fatma, Women's Selector. Starting the presentation with the professionals, without whom this tournament and the matches would have not been possible, I would request Mr. Nadeem Khan to please step forward and present souvenirs to our match officials, starting with the match referee, Mr. Ghulam Mustafa, followed by the on-field umpires, Ma'am Nazia Nazir, and Mr. Waqar Ahmed. The second on-field umpire, Mr. Waqar Ahmed. Last but not the least, our scorer, Mr. Shakil Ahmed. Thank you for the services. Now let's move on to the awards for the players. I would request Ma'am Batul Fatma to please step forward and present the player of the match to Sidra Amin, leading from the front, scoring 77, a brilliant innings to steer Stars to victory. Brilliant innings from the skipper herself. Throughout the tournament, we have witnessed some exceptional performances in each category, and we've picked the individual awards for them. I would request Ma'am Batul Fatma to once again step forward and present the Best Wicketkeeper Award. It goes to Muniba Ali from Invincible, but I would request Najiha to please come up and collect the award on her behalf. Muniba Ali with 12 dismissals in 4 matches. Now I would request Mr. Asad Shafiq to please step forward and present the Best Batter Award to Alia Riaz from Challengers, scoring in total 382 with some match-winning innings, has been brilliant throughout the tournament. I'll again request Mr. Asad Shafiq to please present the Best Bowler Award to Ramin Shamim from Stars. Bagging 20 wickets in the tournament has been an important role to play for the Stars team. I would request Mr. Asad Shafiq, please come forward and present the Player of the Tournament Award from Invincibles. It's Umayma Suhail. I would request Sadaf Shams to please come forward and collect the award on her behalf. Taking 13 wickets, Umayma Suhail scored 253 runs. Umayma is not present here, but had played an important role for her team. Now moving up to the ceremony itself, I would request the runner-up captain, Fatma Sana, to please come forward and collect a trophy from Mr. Nadeem Khan. Please come forward. Has been a good match overall. Some good fight being put up by Fatma Sana and the team. फातिमा बात करेंगे आपसे. हार्ड लक, अच्छा हुआ था आगाज. थोड़ा सा पहले बैटिंग पे बात करते हैं. लगता है कि शॉर्ट थे रन्स में. बिल्कुल हमारा टारगेट 200 प्लस था, बट ये कि हम लोग 20 और 30 रन शॉर्ट थे, तो बस आई थिंक वहीं से ही हमारा मैच चेंजिंग था. और बॉलिंग की बात करूं, ओवरऑल अच्छी एफर्ट नजर आई. थोड़ा सा अगर क्रिटिकल हुआ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मजीद अर्ली आ सकते थे जब पार्टनरशिप लगी हुई थी रामीन और सिद्रा की.
आ तो सकते थे, लेकिन यही चीज़ थी कि स्पिनर्स हमारे पास थे ऑप्शंस, तो हम उसको यूटिलाइज करना चाह रहे थे, लेकिन यही था कि वो थोड़ा लंबा चला गया था गेम, तो फिर विकेट तो लेट ही मिली है। तो चलें, थोड़ा सा बताएं कि जो यंगस्टर्स आपकी टीम में हैं, कौन सा आपको पोटेंशियल नज़र आया और किस तरह इस टूर्नामेंट ने आपको हेल्प किया ओवरऑल? बिल्कुल, जिस तरह हफ्सा ने खेला है, सायरा ने खेला है, आई थिंक वही हमारी टीम को यहाँ तक लेके आए, क्योंकि हमारी पूरी यंगस्टर्स की टीम थी और जिस तरह उन्होंने आके यहाँ पे सपोर्ट किया, आई थिंक मुझे और नशरा को उन्होंने ही सपोर्ट किया यहाँ तक लेके आने में। और मेंटर्स का पहली दफ़ा हमने देखा कि इनिशिएटिव लिया पीसीबी ने, जो कि एक्सीलेंट चीज़ है, उनका कितना अच्छा इनपुट रहा और क्या फ़र्क पड़ा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा उससे, तो क्योंकि मिसबा भाई ने जिस तरह सारे यंगस्टर्स को सपोर्ट किया और गाइड किया थ्रू आउट, क्योंकि अगर मैच में नहीं भी होता था तो वो बहुत हेल्प आउट करते थे नेट्स में, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। चले, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। Now I would like to invite the winning captain, Sidra Amin, 4 stars, to come up and collect the trophy from Mr. Nadeem Khan. Sidra Amin and co has done a wonderful job in this tournament. It was a close call, but winning in the end by 5 wickets. Congratulations to the team and Sidra Amin, the skipper. Sidra. बहुत मुबारक हो, पहले तो एक टीम एफर्ट थी, उसके बाद इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और एंड पे जीतना। एंड पे बीपी कितना हाई हुआ? बीपी तो ऑल द टाइम हाई था और प्रेशर गेम ही होती है, क्योंकि ऑल द टाइम प्लेयर्स कभी भी मुझे नहीं लगता रिलैक्स होता, क्योंकि हर टाइम उसका जो ब्लड लेवल होता है वो ऊपर नीचे जा रहा होता है। सो क्योंकि बड़ा गेम था, प्रेशर ज़्यादा था, तो जैसे मुझे था कि मैं सीनियर हूँ, सो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस मिली, लेकिन फाइनल की इनिंग्स, जो मैच विनिंग इनिंग्स होती है, उसका इफेक्ट डिफरेंट होता है, तो क्या माइंडसेट था और किस तरह टीम को लेके चले? बस यही है कि जैसे मेरी स्ट्रेंथ है रनिंग बिटवीन द विकेट, मैं उसको यूटिलाइज करूं, तो ये था जो बैट बॉल मिल रहा था मैं उसको बाउंड्री की तरफ लेके जा रही थी। बाकी रामीन की बहुत सपोर्ट थी, कई मुझे बबल्स आए हैं, मैंने 1-2 रैश शॉट्स भी खेली हैं, लेकिन उसने मुझे कहा कि सिद्रा बाजी हम दोनों करके जाएंगे, सो हम दोनों कमिटेड थे। इस टूर्नामेंट में यंगस्टर्स को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, कोई ऐसा यंगस्टर जो आपकी नज़र में स्टैंड आउट कर रहा हो? मुझे लग रहा है कि इट्स ऑल अबाउट कलेक्टिव एफर्ट, क्योंकि सब यंगस्टर साथ थे, सब सीनियर साथ थे, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि मेरी टीम ने लास्ट 3 मैचेस से जो मोमेंटम पकड़ा ना, वो बहुत आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि ये मेरे पे रिलाई कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि अपने पे भी रिलाई करो। सो जैसे तूबा ने 2 मैचेस में आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, उसके अलावा अनुषा, ईच वन ऑफ यू जिसका मैं नाम लूँ बहुत अच्छा है, रामीन का इतने अच्छे बाद उसने इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। सो मैं कहती हूँ जितने भी मेरे सारे प्लेयर्स हैं, मे भी मैं किसी का मिस कर रही हूँ, लेकिन सब ने अपना ना छुआ। नीलम स्पेशली जो न्यू बॉलर आई है, उसने बहुत अच्छा अपना शो किया है, तो इंशाल्लाह ताला बेस्ट था। और आपके पास शुएब मलिक एज मेंटोर थे और उनका इनपुट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्या रोल और किस तरह उसको चीज़ को देखा? मैं कहती हूँ मेंटोर्स की वजह से लड़कियाँ बड़ी क्लियर थी, और जैसे आपको पता है बैटिंग बड़ा प्रेशर गेम है, हम उसमें थोड़ी स्ट्रगल भी करते हैं, बस उन्होंने यही कहा कि क्लियर माइंड से खेलना है, रोकना तो क्लियर से, मारना तब भी क्लियर, तो ये अच्छी चीज़ थी। इन सब स्पोर्ट्स स्टाफ की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। चले, मैं ज़्यादा देर नहीं रोकूंगी क्योंकि वो सब पीछे ठंड से हिल रहे हैं। प्लीज इनवाइट योर टीम एंड प्लीज कलेक्ट द ट्रॉफी। थैंक यू। Well done, guys. That's all from now, and on behalf of PCB, I would like to thank the PCB management, curator department, admin department, umpiring department, logistics, security, media, and commercial departments, medical units and assigned physio, finance department as well, and event management. And lastly, I would like to thank all the players for coming up, putting up a great show, and making this tournament a success. Thank you, everyone. Well, what great scenes here at the Rawalpindi Cricket Stadium. The Stars under Sidra Amin, they lifted the trophy. They thoroughly deserve this joy and ecstasy is swinging on their faces. The entire unit is down there with the support staff, with the coaches. Great Shoaib Malik, Mansoor Amjad, Tahir Khan, Tuba Hassan, Sidra Amin. They truly deserve their moment of success. Absolutely joyous cheers and triumphant celebrations will begin. The best team of the tournament has come up with the trophy. Well,
This was a very close and tightly fought final. 178 for 9 from Conquerors, played 179 for 5 by Stars. Sidra Amin proving the difference. Her 77 were instrumental. Ramin stayed right till the end. 37 not out. She played an important hand as well. And Star running away victors by 5 wickets to clinch the trophy. What a great initiative from the PCB, having great mentors alongside all these 5 teams. A moment of reflection for Conquerors under Misbah ul Haq. And Sidra Nawaz, she can proudly pose with the trophy. This has been a wonderful, wonderful achievement by the entire team. Now every one of them, they can have their individual souvenirs and their pictures. Shoaib Malik also a champion. It's a very proud moment for him as well. And like I was mentioning, the concept of having these 5 mentors into the women game as well will bring a wealth of experience and knowledge into these very, very talented and very, very committed young girls. With these scenes of joy and ecstasy, the Stars celebrate. I hope you enjoyed our broadcast as well. It has been a wonderful day of cricket. We thoroughly enjoyed bringing it to you. More cricket coming your way tomorrow. It's the big qualifier of Barrier Town Champions T20 Cup. The winners will go through to the final. UMT Markhors will take on the informed Nurpur Lions. It's a 3:30 start and it will be live from Rawalpindi Cricket Stadium. That's all from Pindi Stadium for today. We look forward to your company tomorrow. Until then, it's goodbye and good night. Straight to the fielder, that's the first wicket. लेट कट किया और शानदार शॉट, बैकफुट पंच किया down the leg side and will be punished. हवा में खेली, फिर मौका है डीप फील्डर के पास और एक और अच्छा कैच. और ये स्टंप हो गए. Sidra Amin with her 50, what a time to do it. Yeah, the Stars have done it. Well, winning this women's championship was not easy. And Stars in the end are the winners of the championship by 5 wickets.